Any headphones इसमें देख लें या ये It's on the my all right. Quick audio check for those. Audio check online. I know Zoom is good. 250 tick. Ignore that chart for now. You don't want to worry about that right now. Screen. Display settings. I assume audio is good, so I'm just gonna go ahead and two things I have to do. What did I do with my phone? Okay. Oh, we're missing something here. Grab the speaker. Okay, I'm okay. Bring the speaker. Oh, ये भूल गया. Oh, कोई बात. Good exercise in the morning.
So I assume the audio is okay. Good. All right, Monday, August 17th, 9:17 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com. Thank you for coming in here at Win Lifetime office here in Mississauga, Ontario, Canada, as well as maybe a Trinity office, Vancouver office, Calgary office. I'm your host, Rafay, and I'll be with you for the next 3 to 4 hours to help you understand, navigate the market. Anything I say here is not financial advice, it's just for informational, educational, entertainment purposes only. The futures market carries inherent risks, so you should know your stop loss and other risk management techniques. So I'm just here doing market analysis. I don't move the market, I don't control it. So just like the charts you have in front of you, I'm just doing mirror analysis and I will help you understand and navigate the markets, and we'll find the best opportunities and we'll try to make profit as and protect our capital. We're not going to rush, we're not going to get excited, we're not going to go down in terms of anxiety if we see a little bit of red. Just do without any emotion attached. So let's get started. First thing is first, the ritual is Forex Factory. What could happen today? What time? So as of right now, 8:30 is past, 10 o'clock, we have yellow, 4 p.m. yellow. So there is nothing crazy that is scheduled to happen. Two different things. Nothing is scheduled to happen, but however, with Trump, with Iran war, with so many things happen, just be ready that hey, all of a sudden something could happen, right? So you have to be very careful these days with Mr. Trump being in the office as well as the global events that are occurring. Next thing is I always say is keep this website Seeking Alpha earnings calendar. So what happens is you get to know if there's a NASDAQ and ES, any big company that is about to open their mouth today before 8:30 or after 4 o'clock. So nothing is listed, especially like Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon. Those that have a T beside it, you want to be careful. So nothing is there. So hopefully it's a good, smooth day and we will try to go with the trend, maybe area, etc. So that's out of the way. Let's now do base and range for the day. So the things are right now, computer has calculated your base is up. So pressure is down, base is. Now we will start to extract some ranges. So what is it that, first of all, ES did from 6 p.m. till so far, 9:20. So the highest number is 78.25 and the lowest number is 78.01, which is happening right now. So the night session low is happening 70.01 or 2, however you like, down, round up or down. So that's my range for the night. I only the what you have been taught versus what's different. Daniel takes from 6 to 12 and then 12 to 9:30. I take from 6 to 9:30 one range. It can get extra overwhelming. What is my pivot point at the moment for today? My pivot is 78, 10, 11, round up, round down, however you like. My value area is at 25 and 78.01. So 78.25, 78.01. That's my NASDAQ high 339, 340 actually, 30,340. NASDAQ low
166, 30,160, let's say 5. So whole night, 175. Let me do MNQ. All of these values I'm extracting from 60 minutes. So the 60-minute chart is where I'm reading all these values. So 30,217 or 215. There's my pivot. 30,217. So let me post this. If you can, as you get experience, get yourself inside our Telegram group where I post some things, events, if there is anything happen. All right, that's done, out of the way. Now we just sit and wait. That's all we can do. And we just sit and wait and wait and wait till we figure out what do we want to do today in terms of trend. First retracement divergence trade took place already. Price right now it's happening as we speak. So for those that don't know, don't worry about it. It's you're just born in this thing. Don't worry, it's okay. All of these things will start to make sense maybe by week 2 or week 3, not earlier. Let me connect my Ninja. Let me see. And at this office, the earlier you come, you will log into Ninja without issues. We have one IP address, maybe 2, and with 2 internets, Bell and Rogers. Ninja says, what's happening? Why is 50 people trying to log in from one location? So you will have this CAPTCHA coming about. So if you have that problem, just bring your hotspot, Rogers or Bell or Telus or Fido, and that hotspot will help you understand. So on here, my chart is 30-20. If you took this trade of selling top of the bar, I don't know how many points are done. I just saw it. So this, 2 points, but this was your second retracement diversion. So first retracement diversion, gap trade has already happened. Just by looking at that, I can observe that in this leg, this is second time price is doing it. If I see anything further, so one happened at 826, and the second one is happening right now. And I'll tell you the setups after 11, what to watch for, how to do it, no problem. But if you did it at 8:30, you can do this anytime you open your computer, at home, on the beach, anywhere, but you just gotta look for the setups that are happening. So what is already done for us? R1 is already done for ES and NASDAQ is already done. So when he was posting the areas, price was inside the R1 for NASDAQ and price was inside R1. So if you are doing area trade and you have done already R1, you're kind of done for the day. So most people, as you will get experience, you will see the areas, and you don't need me, you don't need anybody. You know how to do an R, how to do an S. And so right now, the R1 trade is done. The value area top is done. ES is done. So we'll see what we can do. So for those that are following me on NASDAQ, we will wait until 9:45 to see what the range gets established and go from there. Okay, what else I have to announce? Yes. So today is day number 1. I know Daniel's brief is about to open. Maybe I'll explain after. But today I'm taking on the biggest or dumbest move of my career. I always say that. Or the most bravest or the smartest. So it's the riskiest move of my career. I joined like you guys, like a student. I sat in that chair, last one, and I became a mentor after 5 years. So within 2 years, I was teaching. So hey, you can become a teacher very soon. You can say, I know how to use the software. I saw a TikTok video for our student, Mr. Takir, and he was posting sitting in a mall how to trade and how to make a couple of $100. So we all took that route. So today is the day we started a service with a third party. Wherever I click, your accounts will get traded automatically.
All right. So they say saying is different. I write a number, I tell you to trade, you clicking is one thing, right? So okay, I took a trade, you took a trade separate, right? So we are now have launched a service with a third party. Wherever I will click, your accounts will get traded automatically. So if I mess up, you mess up. If I go south, you so the way right now, the way this institute works is we are a driving instruction school. You will tell you how to take G1, G2, drive a Ferrari, AZ, whatever. So every one of you is driving their own vehicle. Today is the first day I have learned to drive a bus, right? So you're all my passenger. If I screwed up, if I crash into a ditch, you're all going. So Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Game show. A microphone check. If you can hear me, guys, microphone check. Vikas, good morning. Jamal Bhai Amir, good morning. Shaji, good morning. Man, Gigi. Rizwan, good morning. Sayyid Ali ji, good morning. G, Manjeet ji, absolutely right, G. Manpreet ji, good morning. Hikesh, thank you. Thank you. Manjeet ji, Clifford ji, good morning. A quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. You're solely responsible for all your actions, and don't think you made money yesterday. You'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. Today, our S&P 500, especially if you look at the Dow, um, big drop to the downside. Dow is heading towards our S2 S&P 500. Morning base was up, pressure down. So now all markets base is down and pressure is down. Best is high to go low would be a good strategy. R1 is done. Actually, S1 is also done. Both side it already hit right now. And these 2 days, today and tomorrow, will be a smooth days. Then Wednesday we have FOMC minutes, means they will give us their future plan in October and November, what they want to do with their interest rate. So they are trying to increase the interest rate, and Fed and Trump don't want that, and Trump will play some game to stop them to increase the interest rate. So if they increase the interest rate, definitely we'll see a big plunge to the downside, maybe double the push we'll get what we were expecting. Today, our S&P 500 78.70 to 78.83 is high. Low is 77.63 to 77.50. NASDAQ, our high for the day is 30,650 to 30,740. Our NASDAQ low is 29,880 to 800. NASDAQ, so far we have 314 point swing from Friday low to high, and retracement 51%. S&P 500, if we compare the Friday low to high, we have 28. It did not give us a big push, and it's very tiny push, 83% down. That is 23 points, and it used to be like 23 to 30 points in one way in just less than maybe half an hour or 1 hour. But look at how it's getting slow and very, very slow and very tiny. Actually, I love slow market because you have less profit, but less it goes against. Excuse me. And our Dow is down. Dow is big push to the downside. Almost we have more than 500 points to the downside. Russell 2000, 18 points from this morning after 7 a.m. S2, both markets are very close to S2 area.
NASDAQ did not hit our S1. Actually, S&P 500 just kissed our S1 area and bounced back up right now, but below PP. Remember, we are below PP. It means our base is down, our pressure is down, and the best is high to go low would be a good strategy. Euro, our British pound and euro are crazy going up. They are very getting big strength. And why they are getting the big strength? Because Deutsche Bank in Europe, the one of the biggest bank, they are dumping the US dollar big time, and that's why euro and British pound are getting this strength to the upside. And go and check online; they are just big time. And US now threaten the Deutsche Bank. The CEO and their people, like if you dump the full your US dollars, actually they're not only dumping, they are dumping US dollar, and they're accepting all the wires and all the transactions in yuan, Chinese yuan. That's where the problem is. And look, they don't want this euro and British pound to go up because their exports will get trouble. But still, they're doing it because they see the future. The future is everybody knows. So that's why euro crazy went up. Euro very close to our expected high, $1.16 and 25. That's a big push to the upside. If you previously see, euro is not stopping; it just keep going up from almost it's been it started going up from July, if you remember, July 20 at 22. After 22, it just banana right now, and very big push to the upside. Same thing with the British pound. So British pound right now at R2 area, and R3, euro R3 is done for our euro. Big push to the upside on euro. And also, if you compare our Canadian dollar is also up. Canadian dollar at R3 area. Morning at Euro session, it went up, and still it's keep going up, and very, very strong push to the upside on our Canadian dollar. Crude oil is up. Pressure is down. Base is up. Sitting at R1 area, and $1.37 push to the upside. And actually, crude oil should go further up. The way that right now they're planning to have boots on Iran soil, so crude oil will go up, guys, definitely, if they're not backing up from this war. And look at the FDAX. Crude oil is up right now, but previously 4 to 5 hours, crude oil is not breaking our 83.15 area. So it's not breaking 83.15. So it just hold by that area. FDAX is down. Euro is up. British pound is up. This is called a very healthy market. So once currencies are up, FDAX is down. $192 push to the downside, and we are expecting expected low for our FDAX should supposed to be hit today. Gold is down. Gold is right now, if we see a morning, our base was up, pressure is down. But right now, base is down and pressure is down. Midband is green, but gold went to Friday. If you remember, Friday exactly hit our expected high for the day. Our expected high was somewhere 44.50, 455, I believe, and hit that area. Beautiful bounce back, $52, and then went up. Break and give us a diversion. So we are in a diversion on gold, but gold is right now just it's hovering around our PP area. This is what we were expecting, guys. Look how beautiful push to the downside. Open below S&P 500, NASDAQ, open below PP, open below our mid-range, push to the downside. Beautiful, done for the day. Very nicely, beautiful push to the downside on our. This is what we study and in our weekend classes, base for the day and range for the day. So today range was down, base was down, call for the day if you are done with S&P 500. Copper is tanking. Copper went down and reached our expected low for the day. Very beautiful push to the downside. Low is done for our copper, $6.60. Actually, it went to $6.58 right now. And from our expected low, it's bouncing back up.
Very nice bounce back from our expected low for the day for our copper. And actually, it fell up the value area as well. Silver is down, exactly the mirror copy in diversion. Silver Friday went up, retraced back down, and then Sunday opened and gave us a diversion to the downside. So right now, same thing, exactly mirror copy of gold, silver, mid-band green bouncing back up, but still below a PP. Natural gas bounced back up. Natural gas at our expected high, very close to our expected high. So keep eye on somewhere 730, 740 area, means 73 cents, $2.73 to 74 cents, and still pushing up below PP. S1 went to our R1 right now at R1. Bitcoin is up. Bitcoin actually giving us a very beautiful push to the upside. $1,275 push to the upside. Low. Sunday low of 62,565. Right now at 63,800 and almost $50. Beautiful push on our Bitcoin at R1 area. R1 is done for our Bitcoin, and that's where it's holding up. Ethereum is up. Ethereum open yesterday, pushed to the downside, and then bounced back up, and still it's pushing up 1915 area, and we might see our expected high for the day for our our MET Ethereum. Guys, again, today will be a smooth, beautiful day, normal day. News is done this whole week. I told you today our Empire State Manufacturing Index, and then housing data is coming. And if you see our Empire State Manufacturing Index is much, much, much better than forecast and the previous. And National Association of Home Builder at 10 o'clock. But overall, today, tomorrow, very smooth. Building permits are coming. Our hourly starts, housing starts are coming. Import prices coming tomorrow. Wednesday, Thursday, and Friday are important. Wednesday, especially FOMC minutes at 2 p.m. And then we have this Thursday CB leading index, Friday flash PMI and service PMI is coming. Overall, guys, best is high to go low. Stay on selling side would be a good strategy. NASDAQ at night session low. Dow already down. S&P at very close to our S2 area. So S2 is 90 to 86, and so far 94.5. So S3, remember our S3 is our S2, the intraday. S3 is S2, our areas. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here, G. You're welcome, G. You're welcome, Clifford, G. All right, the morning brief is done. The day you understand this is the day you don't need anybody. So maybe 1 day, 2 days, 15 days, 30. And again, he did 15 markets, by the way, for you. The first two were ES and NASDAQ. I don't look at gold, crude oil, natural gas, Bitcoin, euro. But of course, there's thousands of traders. So you pick so he does ES, then NASDAQ, then Dow, Russell, etc. So first, for me, first like a minute is important. What's the cue I got? Stay in selling. So high to go low. Every time price goes overbought, we will sell. So a retracement divergence that worked as well. So this was third retracement divergence in our leg. How many? Actually, it's kind of four. Let me double check how many trades happened. Number one happened at 8:30. Visually, I can see. Number two happened around 8:45, and number three, we are inside that right now and still green. And I'll tell you how to take those trades, how to do it, no problem. For those watching NASDAQ, wait for R1 and let it break R1 and go into the ninja pivot of, let's say, 385 or so. That's the risk. And because I am clicking, I may not be clicking as aggressively. So if I make $1, you make $1. If I lose $1, you lose $1. So for the 35
people who are part of this because it's a very, very tiny group. A lot of people who are risking this, they understand it. We held a meeting on Friday about this, and more and more, I'll explain you how this service works. But right now, we have to make sure you can drive the car and don't and not crash it. That's the. It's really meant for an audience who doesn't want to learn to trade at all. So that we have thousands of people who would like to get into this, where say, here's my money, here's my account. I don't have time for this. I don't have the knowledge for this. That's the one category. Second category is you joined, you tried, you're not making it. That's third. Fourth category is gamblers who understand it, but they just don't have the discipline. So these are the top T clients. Number one, you say, you know what, I want somebody else to manage it. Number two, you try it, but you're just not, you can't figure it out. And the last one is, you know everything, but you just can't stop trading. And it's just, you're over trading. So for this service, day number one. If you want to buy, wait something inside S3. So so always I'll be switching between areas and trend. So area person should wait for 77.49 until it gets there. Please don't enter to buy. But for those that are here for the first day, just open up your computer, watch the charts, and kind of see what's happening. Enjoy the view, right? So you go to the swimming pool, you don't know how to swim, you see people splashing, people going through the rides, kids jumping, and you're like, I'm gonna drown, right? So don't worry, there's always the swimmer class 1, 2, 3. So from shallow to deep to life jacket to ocean, that's what my goal is, right? So make sure that right now there's no yes, I don't. And if you do want to go into an ocean, make sure you have your life jacket on, right? So, because these can be rough waters. So, anyway, let's see. I'm waiting for a number. I'm waiting for somewhere around NASDAQ to go to 385. Right now, it's about 219. So, ES, please don't do mid band 3020. Is there a chair empty between? Oh, there's somebody there. तो आपको आज next door जाना पड़ेगा. Why not? Why? So I'll tell you the reason. Right now, I see a clear divergence on a 30-20. The strength did not go down. So if you look at that strength, what's easier? Very easy to see. 7801. That's a number. What's the current number? 7794. 94 is lower, right? If this is the strength for 7801, why is the strength is not lower than that? So there's a bit of a divergence here. It could fail this midband. So I'm skipping it. So if you have a divergence, just don't take that midband. So हाँ, वो तो तीसरी दफा है ना इस लेग में, क्योंकि मैं जब तक वो चलता नहीं है, मीनिंग के so retracement अभी ये ना कंप्लीट नहीं हुई, या आपको टीपी लगाएगी या फिर आपको स्टॉप लॉस. तो आप क्योंकि कई दफ़ा लोग ऊपर जाके फिर बार में बैठ जाते हैं, राइट? वो अगर आपने राइड्स लियो वंडरलैंड पे, एक राइड ली, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, so high to go low, but it's okay. Right now I'm trying to pick an entry on NASDAQ on a 1 minute candle, and it is completely chaotic because it goes up, comes down, goes up, comes down. So waiting for it. 15 minutes has boxes, 30 minute has boxes, 60 minute has boxes. So it should travel towards it. So let's see what my entry should be. I'm just waiting for another couple of minutes to see. 385. So when the price goes to 385 or so, I will plan to do a short sale. I will sell my contract.
and then hopefully buy it back cheaper. So that is called high to go low, meaning right now, let's say it's 183 at the moment. Do you buy or do you sell, right? You don't know. There's 50-50 chance. You buy the contract right now, it shoots down, great. You are making money. For NASDAQ, if you do buy and it goes in the opposite direction, so NASDAQ, you have to treat it with respect and care because it moves so many points and your $1,000 will disappear in 10 seconds or you will make $1,000 in 10 seconds, right? So when I'm doing NASDAQ, अब आपका retracement diversion पूरा खत्म हो गया because price has come down to the bottom of the bar. If you sold it at the top of the bar with the stop loss of 3.75, you are done your trade. अभी नहीं करूँगा क्योंकि अब देखिए ना ये इस लेग में 3 दफ़ा हो गया है तो अब इसको थोड़ा सा मे बी S2 पे जाए और बाउंस बैक अप हो जाए, राइट? क्योंकि हम S2 के करीब आ रहे हैं. I'm waiting for 78.13, but this will change. You know, this is a I have some numbers that will happen maybe in a day once, but there are some numbers that are happening quickly. So this number is changing instantly based on the price movement. And I'm watching it just from the graph, by the way. You can look at it where I picked up 78.13, just a blue line going through it, right? So that's an idea that if I have to take a risk, I will take it from there. NASDAQ hasn't been any volatility enough to make me enter a trade at the moment. So I know. So what is writing? It's not the financial burden, it's the reputation burden. I mess up, you're gonna say, well, he talks a lot. That's all. So, but if I make it, thousands of people are gonna say, well, so this is something what I call it's a prop firm hedge fund. That's how a hedge fund gets a job, by the way. You apply to it. So that's my career goal. Manage 150 million, 200 million, 5 million, but they want to see a track record. If you would put money into somebody's hand, only thing they would ask you, what is your performance? In order to be a hedge fund manager, you got to show them 2 years of consistent P&L. How accurate were you? Like, so if I want to take my career from trading futures to teaching futures to managing money, so this is my test environment, day one. Maybe I sit here for 2 years, 5 years, and then I can say, hey, look, 2 years of my record, I took somebody's $1,000 and I turned it into 3, right? So a lot is writing today. Let's see. So mid-band is about to go. Let it go. Don't worry. You can take the risk here. If you want to sell, it's fine, but don't. Let it ignore. है जी? फिर भी छोड़ दें, नो प्रॉब्लम. ऊपर आ लेने दें. स्विंग बहुत बड़ी है. 16 प्लस 23 कितनी बड़ी है? 23 प्लस 16 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट की स्विंग है. इसको 80% रिट्रेस हो लेने दें. 32. So what's the number? 7793 plus 32. Ideal number is 7824. वो जाके 7823-24 से सेल करेंगे R1 के बॉटम से ES को. बन गई बात तो अच्छी बात है. Let's see. So you just switched from 7813 to 7834. Exactly. So that's how fast it can move. So I'm just looking at the chart and I'm saying, all right, the price is starting to go back up. So I want to go from 13 and I will take a risk somewhere around 24, which is a retest of R1. Now in between, if when the trend turns green, you should, but don't buy it. Please don't buy it. Because right now, we are only going to buy if the price comes from higher high. There's no higher high. It will turn higher high, by the way, after 78.10. So why? Because you have that lower high sitting right there. The moment it crosses that, you will see green higher highs. So first, it should stop somewhere around 7809. Somewhere should. Let's see. Anybody who took the risk,
they got the profit for mid-band, for ES. Even though I told you not to do it, because I said there's a 50-50 chance the mid-band will work or not, it did work. If somebody sat on the mid-band, they got their trend trade. Either divergence or mid-band. So in this case, the mid-band worked. So divergence failed. Because I have to keep a close eye on NASDAQ. If NASDAQ goes up, ES goes up. NASDAQ has... आप लीजिएगा, अगर लेने भी है ना, जो सबसे 30,100 का वेट कर लीजिएगा, वो ग्रीन के बॉटम पे. ये फिब छोड़ दें. ये 1 मिनट का फिब अभी छोड़ दें, 10 के बाद देखेंगे. क्योंकि अभी कोई ना रेंज एस्टेब्लिश नहीं हो रही 9:30 से 10 के दरमियान. वो अगर आप देखें ना, वो पीछे 60 के, तो अभी 60, 15 और 30 तीनों पे हैं. तो ये जो फिब है ना, अगर आप सिर्फ पिछले 10 मिनट की कार्रवाई देख लें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ऊपर जाऊं या, तो वेट कर लें अभी. आज का एक्सपेक्टेड हाई है, बहुत दूर है वैसे, अराउंड 500 पे होना चाहिए. 500 पहले तो R2 आ रहा है ना 500 पे, और फिर 650 और 700 पे, तो it's a little bit far. Yeah, that's a fib box, Fibonacci sequence का box है. So that's more advanced topics. The beginners, red से sell, green से buy, red से sell, green से buy, ये हमने करना है. वेट करें, क्योंकि नैस्डैक में इवन 1 मिनट में आपकी स्विंग एस्टैब्लिश नहीं हो रही. वो 60 ऊपर, 100 नीचे, फिर 80 ऊपर. So, और ES का भी देख लें हाल. अगर 5 मिनट, 15 मिनट, it's a doji candle, meaning it has no body. Okay, let's see. ES is... हेलो जी, क्या हाल चाल है मिस्टर जतन? So, लिया कोई ट्रेड? नहीं, आज कुछ नहीं लिया. अभी हम लोग फिश नेट वो लगा के बैठे हुए हैं. लेट्स सी, होपफुली कोई फंस जाए मछली उसमें. So it's okay. So trading is 100% like fishing. You just sit, and either if you get a bigger fish, it will take पूरा string ही ले जाएगी आपका, and string is your capital. How much you can extend, that's your maximum account size. So your account fish net, let's say $1,000, you have 1,000 meters available. If you hook a MNQ and runs around, you're not going to run to 1,000 meter, khatam nahi hoga, usko thoda thoda kareeb laya. But if you hit an NQ, it has so much power, it will just take your whole string with you. 1,000 meter le jayegi, itni badi fish hai. Right? So just an analogy to kind of understand if you're not understanding the markets the way we look at it. So वो सेम ही देखिए, 15, 30, 60 एक ही प्राइस आ रही है. रीजन, सारों का स्विंग का साइज $314 है. MNQ में आप देखें, सारों का हायर हाई 314 पे बने. तो क्योंकि वो सारे 314 पे हैं, उसकी जो रिट्रेसमेंट है वो भी फिब सही वहीं गिर रहा है. तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 30,100 पे रुकनी चाहिए प्राइस. बाई का बनता है जी, बाई का बनता है. S1 के नीचे है. मैं कंफर्टेबल हूं अराउंड 385. हाईएस्ट कंफर्ट पॉइंट मेरा उधर, जिस स्पीड से वापस गई है. सॉरी, तो यहाँ से 100 पॉइंट और आ जाए ना, R1 के ऊपर जाए, नाइट सेशन हाई को टेस्ट करे. And sometimes it can be so quiet and boring, there's nothing to do or say. सर ऐसे ES यही है. देखिए, 3 आइए सेटअप्स लेट आते हैं ES के. ES को आप बैठे रहोगे, सेटअप ही नहीं आएगा. मीनिंग तो
अभी 830 पे आया, 848 पे आया, अब एक मिड बैंड आया. So, क्योंकि सेटअप आएगा तो आप लोग ये ना घबराओ कि वैसे एक अगला फियर आएगा कि व्हाट इफ दिस सेटअप फेल्स, राइट? सो दैट्स व्हाई आई स्विच ओवर टू NASDAQ क्विकली. एक दोनों स्क्रीनें चल रही हैं कि hey, what is my entry if happens to be? I have a lot of guys who switch to 4 markets और डाउ में भी चले जाएंगे. सेम कॉन्सेप्ट है. डाउ की 30-20 पकड़े, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन. डाउ ई रसल देख लें, R2K. तो आप ऑब्जर्व गोल्ड देख लें, 30-20 का रिट्रेसमेंट डाइवर्जन सेम चलता है. तो कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, वो हर मार्केट्स में चलेंगे. जी सर, की नंबर कट रहे हो. नैस्डैक गैप ना खुली कित्थों. देखो गैप मेरा ख्याल है फिल हो गया. 150 ਤੇ गैप फिल हो जाना. लेकिन नाइट गई है $110 ਦਾ गैप रह गया. ओके, ES नहीं खुली गैप से. फॉरन कवर हो गया. अब मैं जाके ऑर्डर कहाँ लगा रहा हूँ, ये देखें. पहला ऑर्डर लग सकता है समवेयर 24. अब प्रॉब्लम ये है, ये इतनी स्लो जाती है कि आप बैठ जाओगे. सो अगर sometimes it's easier that while you if once you learn the concept of support resistance, आप अपनी ज़िंदगी के और भी काम कर सकते हैं. सामने बैठ के खाली ऑर्डर को नहीं देखना कि अनलेस कि आप सिम पे कर रहे हो. आज देखें मार्केट में वॉल्यूम भी कम है, कोई न्यूज़ भी नहीं है. सो मे बी आउट ऑफ 20 days of trading, 5 days are like this. बिकॉज अगर आप पिछले वेंसडे को देखें, CPI में ऐसा तेज गया, PPI. सो कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना है ना. सो हाफ साइड का मोमेंटम. Yes. So if there is something that triggers the market to move upward, Yes. if something happens in the world, Correct. and that's what makes us happy, or not, I don't know. But what makes it not move? Why is it that Okay. all the markets are like No. this? What these markets or futures markets are traded by algorithms. Right? Okay, there are maybe 10% retail trader. Me and you are retail traders. We put in some capital. So a lot of banks, institutions, market makers, they go and trade these futures because sometimes they're hedging their options position. Sometimes they're hedging against, so there's a lot of technicalities. So whenever they feel, smart money feels that I would like to move, you move. Because who are you going to be trading against, right? Maybe fellow trader beside you or somebody sitting in England. You need traders who are willingly to buy and sell something. Right now the price is 77.94. You decide what should you do. First of all, let's not look at a chart. What would you do? Would you buy this contract or sell? Based on some analysis. Let's figure out an analysis. Forget about super areas, forget about watching a chart. If I do this and I give you a price of 2 items now, 7795, what do you want to do? You want to buy or sell the contract? You do know that every time the price goes up $1, I'll make $50. Or if I'm correct in the other direction, I'll make $50. But just by looking at this, no human being can tell you. So that's where then we come in, we add our analysis or some math beside it.
what is happening in the market at this moment. So we open, all right, there's a lot more selling going on at the moment. So the computer will say, sell. If you want to really take a trade, please sell. Then computer says some variations. Where should you sell from? You can't just sell now. If you wanted to sell, you will sell at the mid-band. At the mid-band, the earliest you can sell is this top of the bar. So, and then hope or say that there's nothing that can hit your stop. Not only we put a sell order, we also put you on a life jacket and say, oh, just in case selling turns into buying quickly, you can exit with the minimum stop loss. So that's where the futures trading happens. You pick something and then you work with it. So that, do I want to buy something? Do I want to sell something? What moves this market? Institutions, banks, market makers. Right now, all of a sudden, NVIDIA is trading, let's say, at, he bought SpaceX. I think you bought it 110? Okay. Right now, SpaceX is trading at 148. It is part of NASDAQ. So you buy 148 and all of a sudden Elon Musk says something and that thing shows up to 148, 150. That will move this price too. So stocks during the day, stocks are being moved with futures. But after the day, futures are moving on their own. Yes, exactly. So right now, one like NASDAQ has 100 companies. Their stocks are being traded daily by banks, or somebody's investing, somebody's exiting. So again, there's a divergence, and this one is a little bit bigger. So the more legs that keep going down, this is fourth leg it went down. Oh, okay, I'm a real rookie. Okay. Speak to us. Speak to me about divergence. No, this is not your topic. This is happens 2.5 weeks later. Okay. No. Today I'm just gonna tell you, open the chart, click where. So around 11 o'clock, I'll tell you, forget divergence, moving average, BBs, anything. Can you place an order? That's your chapter 1 with me. What my roles are, how do I teach? By 11 o'clock, I will start. I can do it now too. There's no market movement for me, for the price. सर S1 असीम भाई छोड़ दीजिएगा, S1 के नीचे 100 से पहले ना जाइएगा, क्योंकि S1 अगर ब्रेक हो गई, ग्रीन बॉक्स वहाँ पड़ा है, तो 30,100 से पहले हिट एंड रन करना है हमने. लेकिन अभी भी ग्रीन बॉक्स 1 मिनट का चला है, बट 1 मिनट के मिड बैंड के इर्द गिर्द ही घूम रही है प्राइस, राइट? सो let's see. Now we will have higher highs after 7802. So with previous swing. So the first couple of weeks will be, or days, for you to open the computer and just learn buy and sell. That's it, right? So there's, when I say divergence or mid-band, retracement divergence, gap trade, that's will be. Okay, since there's nothing happened, might as well teach. Okay. Another retracement divergence, previous leg, full top of the bar sell किया, पूरे का पूरा आपको मिल गया. Yes, TPT has changed it to 3 days now.
and 50% off. Wow, man. सारे बेचारे लड़ रहे हैं आपस में कि हमारे पास कस्टमर आ जाए. It's okay. So यार प्राइस आई तो बता दीजिएगा, अभी तो ठंडा ही पड़ा है माहौल. It's okay. All right. So my name is Rafay. This is a WhatsApp number. Take it down in case you have questions for me. This is a WhatsApp number read by 4 people, including doesn't take calls. You have any questions after hours? Of course, you will reach Daniel, you will reach me. You can reach any of us. It's a staff of 30. My job, Monday to Friday, I sit here from 9 a.m. till 2 p.m. approximately, Friday 12. And then I will just read the market, do the analysis, and we'll just try to find entries. So you don't have to eventually come here. We are coming to your home with your Zoom, live streaming, everything else, audio, video is. So sometime you can join us. Once I would say about a month later, you don't need to be here. Everything I will say will make sense to you, or you will give up trying to understand. So if you need attention, we can sit here. All 3 rooms are available, 3 mentors. So I have Mr. Jatan sitting here on my left hand, not my right hand, kind of analyzing the market and confirmation. So 1 set of eyes is better, worse than 2 set of eyes. So if I ask something, I'll just say, all right, is this a good number? So he assists me. Then, of course, Mr. Vikram, Mr. Majid, they're all here for your success to make sure you are able to do it. So Monday to Friday from 9 a.m. Yes. Okay. Should be. It should be Rafay, and their live stream is happening. Okay. Okay. No problem. Go down. Okay. I didn't press click. 1 second. But there's other mediums like Zoom. Give me a second. Just refresh. Just refresh because it is live. When I hit live, you probably were already logged in. So if you hit refresh, it should say, okay, let's see. Still not showing up? Yeah, I have quite a few logged in. So anyway, I will double check why it's not showing up for you. So my live stream is coming, my Zoom is coming, audio, video, Telegram. We put this camera right here that's going to thousands of traders. So Monday to Friday, I'm here. Saturday, so there's some key times that are important that I have to write. So let's aim for 9 a.m. to, let's say, 12 or 2, Monday to Friday. Each Wednesday, most Wednesdays, 8 p.m. to 10 p.m., I go on Zoom. I sit somewhere, either here or at home. I open up Zoom, and then I will try to give you some Q&As. You have questions, I have answers. Most Saturdays from 3 p.m. to 6 or 5 p.m., let's say, I do the same thing. I sit in it's not here because here there's a class happening. We have another office, 1575 Trinity Drive. I know you came yesterday. So this is what my schedule is most of the year. Most of the time I disappeared December 17th to January 7th. This is where I'm just not physically available. I'm online doing Zoom. This is the time when lifetime gives me away. There's an invisible chain tied to my feet, and Daniel has the other side. He can yank me and then, hey. So I can't do too many things except December 17th to January 7th. And I have an invisible chain I have tied to Mr. Jatan here. He cannot go too far from me, right? So
That's how this are. So what are you becoming, guys? You are becoming a day trader. So you have taken the course, 4 classes. So you should know exactly what is it that you are becoming. You're becoming a day trader. You're not doing options. You're not doing stocks. You are not. First, you have to understand what the courses that the course 4 weekends that you took. What is the essence of it? Now, starting, let's say tomorrow, you go sit at a birthday party, at a wedding, at a gathering, and you say you listen to trading. You should know 5 things at the worst. Number one, what type of trader you are? You're a day trader. Admin Lifetime, at Super Areas, we will make you a day trader. Once you know how to day trade, you can trade pretty much everything. What's the definition of day trader? You are open 23 hours a day, Monday to Friday. You can take a trade from 1 second to 23 hours. That's a trade, meaning that you take a buy or sell something. The smallest you can do, the duration is 1 second, and the longest you can stay inside a trade within a day is 23 hours. Very simple. What do you trade here? Admin Lifetime, at Super Areas. So you are trading futures. I'll go into detail what futures are. It's all in the manual, all in the thing, that the PDF that you have done. So you are learning to trade futures contract, and primarily we'll write 2 markets here. GC, if you do like gold. So at ES, you will hear a lot. When I'm saying ES or MES, NQ or MNQ, or MES, right? Very soon it will be NES coming soon, and MNQ and NNQ, which is nano. So mini, micro, nano. Last thing is MGC and maybe NGC. So these are the top 3 markets to trade globally. Of course, there's natural gas, crude oil, S&P, NASDAQ, Dow Jones. But here, I just can do analysis, not the 15 markets, but just 2. What is S&P? ES stands for S&P 500. NQ stands for NASDAQ. And GC stands for gold. S&P 500 is what? Now we're going to keep drilling inside. What is it that, okay, so you're a day trader, you paid 5,000, 6,000, 1,000, whatever you paid to be here, and you're now learning to trade futures with the software. You're trading ES. ES stands for S&P 500. It's an index fund. So there are 500 companies inside S&P 500. Your Microsoft, your Apple, and gold is God's currency. So there's nothing to talk about gold. So S&P 500, there's 500 companies, NASDAQ, 100 companies, and gold, God's currency. Now there are 75 companies that are listed on both indices. So what is S&P 500? Today you have $20,000 sitting with you in a bank account, and you would like to make some money with it. Good. How would you do? You would go to the bank and you would say, I can invest into dash, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Walmart, Pfizer, Audi, Mercedes, whatever. That's one stock at a time. Most people don't do that. So your bank advisor, financial, will say, well, don't put it into one in case you could lose money. How about I put you into an S&P 500 fund or in a NASDAQ fund? So that way your money grows. 100 companies, not all are doing good, not all are doing bad. You will make a decent amount of money. If you invested into S&P 500 5 years ago, it has doubled. If you took at NASDAQ 5 years ago, it has doubled. So that's the whole, like 12,000 was when I joined. Right now it's trading at 31,000. So
So we trade these two daily. The difference between you and a bank is bank has somebody who manages your money. And here you sit and drive your vehicle. Simple as that. And we will teach you this skill just like a driver. What is a car? What is a fuel? What's a road? What's GPS? What's a windshield washer? We're not teaching you what is an engine. What's an internal combustion product? No, nothing like that. We're just making you a technician. Technician, like, go get an x-ray done. Technician comes in, uses a sophisticated machine. They do an x-ray. You ask them, I'm like, I don't know. I'm just told just to put some, lotion or whatever, and I can do. But the doctor, leave that work to the doctor. Your job is how to operate the Ninja Trader. So together, we'll be trading S&P 500 contract or a NASDAQ. Third thing is your platform. Once you get into trading, you will need to use some sort of platform. There are two big platforms out there, Microsoft and Apple, for operating system. So just like trading, just like an operating system, there's thousands of platforms out there. TradingView is a platform. MetaTrader is a platform. CTrader is a platform. NinjaTrader is a platform. There's hundreds of platforms. Here at Win Lifetime or Super Areas, we use NinjaTrader. So this is what has been installed for you. This is the license, you got it, etc., etc. How do you make a decision? So the word is analysis. So you are using Super Areas algorithm to make a decision. Should you buy? Should you sell? Should you hold your trade? So your decision making is coming from Super Areas or Win Lifetime. And the final part of the puzzle is your capital. You can put in your own money or you can go to something called a funded route. Eventually, once you are ready to trade and you're ready, right now, each and every one of you at the beginning has something called a simulation account. What a simulation is, it's called paper trading. You're not trading real money, you're not making money, you're not losing money. However, you're learning to trade with paper. Simple. It has a fake capital, 50,000, 100,000, 150,000, doesn't matter. This is not how you will start. But of course, we have to get you some practice going. So you are doing right now something called a sim capital. No earlier than 3 months. Please don't get excited. You think you are ready, but give yourself 3 months minimum. Do not invest your own money before 3 months. If you can, yeah, it's fine. You understand it. But before that, will put you into not a fake money, completely fake, but something called prop account. It's called a simulation account, but it's at least it pays you something. Not 100%, but it pays you something. So there are many companies out there who say we would like to hire a trader. Would you like to be part of us? No problem. There's Lucid, Take Profit, Perdia Capital. There's lots of companies out there that will give you money to trade, and then you just have to follow their rules and you will pass the test. So only 5 things are changeable. Now you sit with somebody, they talk about NVIDIA. This is how the conversation goes. I am long NVIDIA stock. I use Interactive Broker. I have 200 shares. This is my capital, and I use Interactive Broker. That's it. It's just your whole universe keeps changing with these 5 things. Normally, a stock trader doesn't day trade. They trade every 3 months or every quarter, which is called an earnings quarter. They're not doing futures. They're doing stocks or options or EFTs or CFDs. They may be using TradingView, Interactive Broker, Wealthsimple, Thinkorswim. They have their own, like Scotia has their own, TD has their own,
RBC has their own different platforms, interactive river, Quest Simple, Quest Trade, hundreds of platforms. Then they could be doing their own analysis. They could be joining a so-called a group. The way trading works, whether you, no trader works alone, by the way. No, this is impossible. You will listen to somebody on YouTube. You will follow somebody on TikTok. You will do an Instagram follow. You will listen to what they're saying. So the whole universe of trading works in a concept called Hive, Hive. What does Hive mean? Like a queen of bee. You will join somebody. You just can't trade alone. Which you need somebody glad to be that you're part of this hive. Of course, like a fly, honey bee, you can go to a different hive and serve a different queen. So every trader, if tried to do alone, you're gonna be in trouble. You gotta join somebody. And finally, your capital is my own money or funded account. 1 to 2 months. Most people are ready to go funded within, I would say, 14 days. That's how fast it can be ready for you. If I keep telling you where to buy, where to sell, how to buy, how to sell, what to buy, you just follow along. And eventually, because every time I will give you a number, I will give you a reason behind it. Why did I pick 385? So let's say I wrote 30,385. Those that are experienced already in NASDAQ, that's for Ninja Pivot of R3. Simple. So there's a 60-minute, there's a line going through it, and the line I'm just reading out, and I wrote 30,385. If it goes there, I would like to short my trade. How many questions? I know I've been at this for, 15 minutes? Any question, doesn't matter, small. We'll come back to the selling part, buying part shortly. But any general question? Did you pick a good career? Of course. Yeah, but will you make it? I don't know. Why? Because the thing is, only 3% make it. It's a very, and those 3% that do make it, they do exceptionally well. I know I keep putting him on the spot. He's the 3%. I know. Works for Air Canada for lost luggage. Heard us on the radio, decided to come here. He doesn't get paid to be here. Full disclosure. Why? He's going to trade at home. I'm like, come and sit here. I used to trade at home. Daniel asked me to sit there. I sat there for a year. So this is Rafay in transition, right? So he went inside, and then somebody else will take the floor, and he can lead the floor. He'll tell you. When I was doing from home, he was sitting there telling people, buy here, sell here. So yeah, good money that he makes from his job. Maybe, let's say, $300 a day. The lost luggage, sometime Ajax, sometime Niagara Falls. He heard us on the radio. He's like, I'm interested in trading. He came here, bought it. Now, after about a year later, he's the 3%, making minimum $4,000 US per month. How much work? 9 a.m. to 2, 9 to 1, etc., etc. Who are the 3%? They are nothing to do with how well you do analysis. They have everything to do with patience, discipline. It's a human behavior. That's a different chapter. But you will learn to do what we do every day. 1 day, 2 days, 10 days. That's their week number 2. Day number 1, I don't have to explain what a retracement divergence is, what a midband is, what is MNQ. It's just 1 week of work. So I can see at least 5, 6 of you who have already learned that system. So next week, another batch will come, and then eventually your training wheels will come off, and then, all right, हाँ जी, गैप फिल हो गया जी. तो अब मैं दोबारा ऊपर जाता है तो देखते हैं. असल में ना वो 60 मिनट पे जो डब्बे पड़े हैं ना, वो आपको तंग कर रहे हैं. So any general question, you will make it if you don't go aggressive. Go slow as possible. I know a lot of people are here to make money. You will, trust me, you will. It's not that's difficult. So, but there are green days, there are red days. As long as there are more green days than a red day, is not that big of a deal. So,
I know right now, since 9 o'clock, I haven't taken a single trade. It's okay, no worries. Now, until I find an opportunity, I'm not entering a trade. It's okay because the moment you enter a trade, फिर आप फंस जाएंगे, आप कहेंगे यार अब मैं फंस ही गया हूँ, तो आप मैं ज़ीरो पे जाऊँगा, घर ज़ीरो ट्रेड पे, आप ट्रेड में फंस के नेगेटिव से दुआ करके ब्रेक इवन पे ज़ीरो पे जाएंगे. तो मैं बेटर रहा ना, मैं भी ज़ीरो पे हूँ, आप भी ज़ीरो पे हैं, बल्कि अगर आप गलत फंस गए तो नेगेटिव पे जाएंगे. तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना है एवरी सिंगल डे. देखना है कि ठीक है मेरे पास कैपिटल 1000 का है या 10,000 का है या लाख का है, कैपिटल तो है ना. और आज मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है, सो आई डोंट नो व्हाई समटाइम आई थिंक आई टुक ऑन दिस जॉब. It is brutal, you know. Like for example, if you have $1,000 of your own, you have a different temperament. When you have a right now, the capital we were counting, we're up to $500,000. That it's writing on the lines, meaning that let's say we have 35 people, and they each have put in how much? I think 35 times at least 2,000. Sorry, not a $500,000. $70,000 to $80,000 is available. So when I click, things could go wrong horribly. So I have to make sure I click properly. So this is my test, biggest, dumbest move or the best move. If I do well, thousands of people will come and join my hive. If I do well, good. If I do worse, hey. So right now, for 2 years, I sent you signal visually. You can watch it and you can trade. Rafay is entering at this number, and I write the number that I will enter from 30,385. You took the trades, you were successful. Or I taught you some scalping skills. This is retracement divergent, this is a fib, this is mid-band, this is 1 minute candle, etc. But today we are launching the new idea. All right, let's go to the next. What is exactly that let's trade ES on paper, on board first, and then we will trade ES on the chart. And starting today, it's not like my will be $500 and the Vara group is going to be $0. Like it can't happen. So if I don't make money, you don't make money. If I make money, you make money. If I lose money, you lose money. It's called a mirroring my trades. There are, so kind of some more responsibility will go to Jatin as well for giving me wrong trades if there is a problem. So don't mess it up, man. Anyway, just kidding. It's okay. Whatever will happen, don't worry. We made it this far. Time to improve our service and really prove results. Okay, let's put a number, 7792. ES. So this is S&P 500. There is a number. The way futures trading works, very simple rule for a day trader. Number one, you run out of money, up or down. Number two, you run out of time. So you put a trade in right now, whether buy, whether sell, doesn't matter. Exactly at 4:45, your time runs out. It's actually 4:40, 4:59, but Eastern. So this is how your time works. I don't care you have 23 hours, but your 23 hours started at 6 p.m. That's considered the start of a day. So right now we are at 10:30 p.m. a.m. Eastern. At 4:45 p.m. Eastern, every trade must be closed and done and dusted, whether you're in profit or your loss. So your race is against time. Next is your race is against your money is being managed. You have $1,000. Let's figure out a smallest account possible for $1,000. You take a trade on ES or MES. I'll do both. MES. The way ES moves, you make or lose money
for every dollar, $50. So this is how the price of ES will move. 77, 93, and then 94. I'll put $2 up and 91 and 90. So if it has to go up, it goes up by a dollar, but with a 1/4. 92.50, 90.75, and then full 93. So 25 first. So just like a dollar, everything has 4 quarters. In a $1, same thing. If it has to go to 91, 91.25, 91.50, 91.75, and then 92. That's how S&P 500 moves. Where they have done a fixed amount, and that's how it does work. So every time it goes from 92 to 93, you will make or lose $50 on ES and $5 on MES. MES just means micro, with one lot, by the way. If you do one lot, it's $50. If you do two lots, it's 100, 3 lots, 150, etc. But I'm just sticking with one lot. So you buy something at 77.92, you exit at 93, you took one ES, you made $50. Now, other example, you bought something at 92, price fell to 91, you lost $50. So that's how futures of trading moves. You just have to predict which way the market is going to go. Who cares? What is Apple doing? What is this? If price of a contract is moving up and you are long, good. If the price of the contract is moving down and you are short, good. It's just the opposite is bad. So if you're short, price cannot go up. If you're long, price cannot go short in the other direction. So what determines this price? What is smart money doing? What is a bank doing at this time, at this hour, at this minute, at this trader? Maybe somebody came in and bought 10,000 contracts or bought NVIDIA right now. So the price of the contract goes up. And maybe somebody doesn't believe in SpaceX like 2 weeks ago and they dumped it and the price went down so rapidly. So the moment you pick up a futures contract, you are kind of waiting to see if it's going to go up or down. You can pick any direction. You make money going down and you make money going up. But it's not like you have to buy something. So now let me give you, for those that are in real estate, a very simple example. You go to a builder that is selling a pre-construction home. I'm sure one form or another, you have seen this example. So how much is a home? $500,000. Okay. How much is a contract for S&P 500? 7,792. It's a true example. Your home of pre-construction is $500,000. It's not built yet. You went to the builder and you said, I am interested in it. They will say, this contract expiry is 3 years. So in 3 years, you need to pay me $500,000. How much you put up front? Maybe $50,000, for example. Here, how much you put up front? Maybe $200. I think ES contract is $250. Let's give an example. So you don't need $7,792 to buy and sell the contract. You just need to have this much money in your bank account. So same thing happens. You buy this property, you booked it, you came outside, they give you a piece of paper. Now you can go in the market and you can say, I have a pre-construction condominium and anybody would like to. Now the builder doesn't have any more homes and the market is good. You can resell this contract for somebody and you can say, all right, this value has gone up to $525,000, the new phase of the builder. You can sell that
You will make profit on this amount, by the way. Not that you put it 50,000. You will make the money on the full amount. So when the value of the contract goes up, it goes up by full, right? So same thing. When this goes up 7793, this you will make the profit on the whole amount. So this is why we love it, that it's just you don't need a lot of money to play futures contract. Just go in, get a tiny bit of the contract and just flip it at the full value. So if you bought a condo or anything before COVID, around COVID, it shot up in price because everybody made money. But now the closings are coming in 2027, everybody's panicking. Why? Because the value of that contract has fallen. 500,000 became 450, 450 became 350, and people are now saying, I will lose my deposit if somebody doesn't take my contract. Same thing. 5 o'clock, the contract price has fallen to 60. You're just begging somebody to buy it for some price. So same idea. It's a pure like a real estate deal happens in 3 years. Your deal is happening in 1 day. So you just pick a contract. A lot of people say this trading is haram. It's a Muslim idea. It's the same thing, man. Then don't buy a home. Next time, don't go to a butcher and say, I want to do Eid Qurbani because, the butcher is doing the same thing. They're just selling you a contract to deliver you the product after like 2 days. They said, I'll sell you a goat for 450. And then they will deliver a futures contract. So every single day, when you don't get a product right away, that means it's a futures contract. So if you So the size of the purchase yes, in the contract, yes, 250 is not a contract. no, you're just buying a contract and returning the contract later by 5 o'clock. That's not the purchase price. Otherwise, you will need 7,700. That's the value of the contract. That's just the brokers decides it. Right now, what the requirements are to buy the contract. Exactly, a down payment. But you get paid on the full size value of the contract. So you're like a down payment that I'm putting it, and by 5 o'clock, either I will keep the contract. So now I understand. Yes. When you say, did you buy a contract? Yes. Now I understand. Yeah. So you're buying exactly. So you're just putting small money down, and the margins change daily. Sometimes there's news. Margins will say they say no. You don't need 250. You need 450 before you can pick a contract in your bank account. So you need some money to be able to, like a down payment, like a picking the contract. And then what happened was you put down 250. Let's say today's margin. You bought it at 7792. You sold it at 7793. That move in $1 gave you $50. So it's not like you invested 7792 and you exited at 7793 to make $50. You only risked 250 bucks and you were able to buy and sell a contract. Very tiny amount, fraction of it, to go in and buy something. It's like options. Options somebody does. You don't need to buy the underlying assets. You just buy the premiums. Stocks, if you want to think about full stock, in order to buy NVIDIA today, NVIDIA is trading at 220. You need full $220 US to buy one share of NVIDIA. Now you buy 2, 440. You want to buy 10, that's 2,000. You want to buy 50. That's like $20,000 or $50,000 you need in your bank account. Now, for those that are doing stock trading, they don't buy instantly. It's capital gains. There's a tax problem there too. So you buy today, then you have to wait minimum 3 months before you can exercise option. Otherwise, they will put you in income tax bracket rather than if you are buying now, exit, that's income tax. This is income tax, by the way. You're not holding a trade more than 3 months, so falls into income tax. So because you're instantly going in and out, in and out, in and out. So you had 250, you did a good deal, your price went up, now your balance becomes 350. Let's say your account balance was $1,000. You took one contract,
It reserved $250. It put a hold on it. So that's it. So they will liquidate your contract if you fall below 250. Meaning if you went against 5 points, they will get rid of the contract for you because they don't want to take that much risk. It's your money. And the same thing, now you have $1,000, you made money, they will tag along this money of $50 to your balance. So you will open up an account for $1,000. You will start trading. Once you know how to trade, then you are buying and selling a contract, the gold contract, the crude oil contract, the S&P contract, the NASDAQ contract, the Dow. Doesn't matter the market. Every contract has a different value. Gold moves up $1, you make $100. Gold moves down $100, you still make $100 as long as you're saying it will go down. So each day, 23 hours a day, you look at the software. If it's telling you the contract is depreciating, you hit sell. If your computer is telling you the contract price is going up, you buy. So you buy and sell based on this suggestion. It's not 100%. I'm not 100%. Jatan is not. Daniel is not. Software is not. We are giving you the best guesstimate to say, hey, what is it happening? So, yes. Actually, bother what constitutes S&P. Doesn't. Whether it's Nvidia in there or not, I'm just making, whether it's Microsoft in there. No, you don't care. Because we are just doing the surface level buying and selling. You don't, okay, it's good to know that if Microsoft is opening their mouth, please don't buy and sell because Microsoft will move this. There's 10 companies that move everything. Right, the masters. Yeah, so Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Nvidia, Tesla, SpaceX. It's both. Nvidia is S&P. Only thing not in S&P is SpaceX yet. So there are 12 companies that have the letter T beside it. You see T, you run away. You're like, man, today they're going to talk, they're going to destroy the value of the contract or add the value of the contract. For example, Microsoft and Google are going to give earnings report today. So, आज आपको शायद उधर बैठना पड़े उस room. Sorry. So, you buy a contract and you are like retracement diversion, वहीं पर लगी है 3 दफा आपने sell किया आप निकल गए, sell किया निकल गए, sell किया निकल गए. So who cares about Microsoft? Only time you care about Microsoft and Nvidia is the day they're gonna announce, because this value of this contract is gonna go through the roof or like sink because they're gonna speak. Like right now, Nvidia, every AI semiconductor stock is up. And as analysts, we are scared. This is not a healthy gain. It's like a bubble that we saw after COVID in real estate market. What is everything happening right now? Everybody's suffering. In trading, like yesterday, it's somebody must win. Sorry, somebody must lose for you to feed your stomach. Very, very true. So you got to leave your ethics behind. You are here, survival of the fittest. Don't think that, okay, the moment you make $50, in the globe, somebody loses $50. That's just the way it is. There is not even playing field. It's rule of the jungle. Be eaten or, somebody will eat you alive. So whenever you come out and you say, today I made $50 or 100 or 500, just know somebody out there did lose. So very, very transparent. So if this makes you not sleep good at night, maybe you want to rethink your options, right? So, hey, if this is how. So I'll make it easier for you. At birth, 300 million of us were fighting with other products to be here. So it was a survival of the best wins in the world, always. The strongest wins. So at birth, we won. Now it's a fight amongst 8 billion of us. Whoever rises, right? The stronger will win. So today, if you do good calculation, you follow, you make money, you will win. Somebody will lose. Who cares?
It's up to you. Some choose not to, some do. But that trader has lost. If you have lost, by the way, and you're walking with some misery and anxiety, just know that at least किसी का फायदा हो गया, right? So अगर आपने ऐसे सोचना है ना कि yeah, exactly. So each day you can come and give away your thousands of dollars, and somebody will win. So if you that's just a different way of thinking, that if you want to give away, just put a opposite trade of what the computer is saying. So sell when the computer is telling you to sell, buy when the moment you will rush, you could be 50%. So every single trade in the world starts at 50%. You can flip a coin, heads or tail. You can go long right now. I can press long right now. The dumbest move ever. Everything is telling me to go sell, but I decided to buy. I'm at 50%. 50% things will go up, 50% things will go down. Yes, I'm winning, but the rate is 50%. So you can buy anywhere, you can sell anywhere. Where we come in is like, look, oh my God, I have made $37. I went against the trend. So I look at this way, you can buy and sell anywhere. What we are trying to do is make the probability higher. That if it's telling you, so when you buy here, the probability of winning is less. You want to make sure it's a little bit higher. So yeah, you can make money any direction. Computer can be telling you, I want to sell. You can say, no, I want to go against the computer. You buy. So you can use this software and just go against it. Nobody's stopping you. It's a completely fine. Computer is telling me everything is bearish. I want to buy. So you can use your mind, but then you don't need us. You just sit in front of a DOM, and I can just do this. I don't need anything at all. I can just open up the Super DOM, new Super DOM, and right now I'm in a trade of SIM. So I'm in. Then you don't need any chart. Depth of market. This is depth of market. I don't look at it. I don't know what a chart is saying. I just hit buy, and okay, I'm making money. So this is gambling 101. This is how you gamble. You go to a roulette, you put in your money. It's okay. I don't know. Maybe it goes green, maybe it goes. So right now, I've made $50, and then I say, all right, let's sell now. So this is 50%. I hit sell. So you will make or lose money depending on which button you press, buy or sell, buy or sell, buy or sell. It's 50%. I don't look at any chart, and then all the charts are helping you to make a decision. Should you be buying? Should you be selling? That's all. And they're not buy and sell offers. You can buy in green, you can buy in red, you can buy in any color, you can buy blindly. We're just trying to tell you, we have stats of these many traders. This is what they have done, and this is what they have reported, that every time it's red, they're selling. Every time it's green, they're buying. So there's no obligation for you to do it, but the probability is better if you go with the trend. That's all there is to it. The probability Is 85% correct if you follow the setup. So there's, if it's bearish, sell. If it's bullish, buy. You can test it yourself. Every time go opposite. I want to see how many people are saying. I've never seen a lot of people go opposite completely, but you can test it. You can say, all right, every time computer is selling bearish, I go in. Maybe you win because you will go against what the computer is saying, right? So it is a very, very simple job. There's no money in the world faster than this. And I said it yesterday, other money more is selling cocaine. That's it, simple. Go to south of the border, take a truck, bring $2 million worth of cocaine. 50%, either you will get busted or you will have a career in this. Like, so there is no money faster than trading futures. Even stocks are expensive, options are expensive. Futures, pick a direction, go in, $50 a minute, $100 a minute, $60 a minute.
So you will go blind just by looking at money. So the trade happens within the 23 hours. 23 hours. You're not doing the swings. No, that's analysis part. What I looking at a price, you tell me what should I do. So let's say you don't have this software installed in front of you. How would you pick buy or sell? Okay, your job is open the computer, look at the price, 7793. Should you buy, should you sell? How would you make that decision? You can't. You will go look at some like analysis out there. What is this app? So what does this computer do? Just makes it a little bit faster, this software. Right now, so these lines, these indicators are just doing some math for you. What is RSI? What is Bollinger? What is moving average? What is strength? What is trend? And then saying, all right, perfect opportunity to buy. Still can be wrong, by the way. It's not like a computer said retracement divergence. So today, that trade of retracement divergence passed 4 to 5 times. 5 times it passed. You sold, got money, sold, got money, sold, got money. And then what is your target at the end of the day? $100. I'm not asking you to make $1 million, because the day you consistently make $100 is the day we can consider you like the 3%. It's a test for 20 days. 20 days, micros, $100. I will call you a trader. Like with a setup, with a proper loss and not blowing an account. That's considered a trader. So what is a definition of a trader? I'll tell you. Very simple definition. We'll give you $1,000, 20 days of trading. Maximum allow I will do is $300 in one day and make 100 to 150 each day. That, and if you manage to still have an account after 20 days, you are a trader of futures. Because most people, exactly $300, and then they lose their account, and then they're like, my account is gone. So the idea is, this is your test. You're given $1,000, you're given 20 days of trading. If after 20 days you still have your account with micros, hey, you made it. That's it. There's no, you don't need to be a rocket scientist to do this. Just enter correctly. I'm waiting for a number. It's not coming. There is nobody putting a bullet to my head that, hey, you must take a trade just because, right? So it's a very sophisticated, intelligent form of gambling. It's not gambling. You know what gambling? I'll tell you. No, I'll give you a good answer that I've practiced for a long time. What is gambling is, wait, I don't have it. Lotto 649 is gambling. Why? The odds of winning and the probability is very, very, very low. Have you been to a casino? No. You should. That's pure form of gambling with entertainment, added alcohol. Best thing ever. If you want to, I'm not promoting it. So you take intoxication, you take alcohol. नहीं आपके लिए है ना, इनके लिए तो नहीं है. ये तो कहते हैं मजा करते हैं भाई, जाएंगे. देखें, don't. Here's the thing. You can't mix entertainment with income. Please, that's true. Those who go to casino or drink, if you drink for a form of entertainment, it's maybe okay for you. If you go to casino or you play a lottery that this is going to be my income replacement, need to redefine your thing. So I would, don't play anything, but you can go to a casino and stand at the table of roulette, just for the fun of it. What is roulette? It's a wheel. It has numbers. It has some colors. And you've seen it in the movies. They give you a ball. And they said how much you would like to bet. Let's put up $50. And you then pick from a circle, red or black, a number 27, and you say it's going to land here, and you are betting $50.
If it lands there, you will win a jackpot prize of $500, for example. So that is a pure form of gambling, because you have no idea the outcome of the bet. What is 649? You go to like a lottery station and you say, I would like to pick 6 numbers out of 49 in this sequence. Pure gambling. You don't know the outcome. Here, you are trading something. You're trading S&P 500. You're trading NASDAQ. People's stocks are there. People's savings are there. TFSA is there. Like Canada Pension Plan funds are there. This is trader versus a trader. Who's gambling? Who's not following? Okay, this is gambling. I keep telling you. I picked this. I shorted, by the way, and I'm up $75. I went with the trend. Everything was telling me. So it's not gambling. What is gambling? I don't know what I should do from this price. Should I buy or should I sell? And you close your eyes और फिर चले जाएं तस्वीर पकड़ लें. हर दफ़ा अपने हायर पावर को कहें यार मेरा ट्रेड ऊपर आ जाए. That's gambling. That's pure gambling of futures trading कि भाई सारा गलत काम खुद ब्लेम ऊपर वाले पे. सिंपल सी बात है ना. जब भी आप ब्लेम किसी काम खुद नहीं ठीक किया और ब्लेम ऊपर वाले को दे दिया, यार अल्लाह इस ट्रेड से निकाल ले, आइंदा नहीं करूँगी, फिर आप यही करते रहेंगे. और कि अब इसमें से निकले इधर फंस गए, इसमें से निकले इधर फंस गए, तो अब फंसना ज़रूर है. ये गैम्बलिंग बन जाती है जब आप इसको गैम्बलिंग बना लेते हैं. गैम्बलिंग क्या है? अब आप ट्रेड बड़ी हमें कहते हैं कि ट्रेड डायरिया का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ. पेट खराब हो, बार बार वॉशरूम, फॉरेन ट्रेड आ जाता है. ओ भाई रुक जाओ थोड़ा सा, कोई दवाई ले लो, डैनहेल का इंजेक्शन ले लो, जाके अभी ठीक कर देंगे, आपकी ट्रेडिंग का डायरिया रुक जाएगा. एक अंदर जाके कहेंगे वो आपका ऑडिट खोल लेंगे, 50 ट्रेड डले हुए, 60 ट्रेड डले हुए, 70 ट्रेड डले हुए. भाई आपको इस काम के लिए नहीं बिठाया. सो यू हैव टू प्लीज डोंट गैम्बल योर मनी. अगर प्रोबेबिलिटी कैरी है नीचे जाए तो आप जाओ, और आप क्योंकि रैंडम नहीं खेल रहे, ये प्राइस कोई मूव कर रहा है, बायर्स एंड सेलर्स. तो गैम्बलिंग बड़ी डिफाइन होती है. लॉ 649, it's the OLG, Ontario Lottery and Gambling. Casino, pure gambling, right? So this is, so चलें एक और आपको प्योर. आपने शादी करनी है, ह्यूमन बिहेवियर है. आप अगले ख़ानदान को कुछ नहीं टेस्ट करेंगे, कैसे लोग हैं, कैसा ख़ानदान है, करके देखें शादी. प्योर गैम्बल है. 50% चांस है कि सही ज़िंदगी निकल आए या नहीं. तो देखिए, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं गाड़ी खरीदते वक्त. आप गाड़ी खरीदनी है, आपने एक कपड़ा खरीदना है कॉस्टको से, तो कहेंगे यार जिपर चेक कर लें, जिपर सही चलता है कि नहीं. इतनी सी छोटी सी बात होती है. फिर सो एवरी टाइम यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, आप क्या करेंगे जी? रूलेट में ड्यू डिलिजेंस. लाइक आप खड़े हो या आपके ब्लैक जैक खेल रहे हो या कुछ, लॉटो 649 पे क्या ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे? यहाँ ड्यू डिलिजेंस है, बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं. जब भी आप ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं, रिजल्ट्स के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगे, अपना काम सीधा कर ले. देखिए, हराम की वजह से मुझे लगता है आप उस पार्ट ऑफ द सेक्ट हैं. तो उन्होंने क्या हमें इंस्ट्रक्शन दी है? अपने ऊँट का पाँव बांध दें. गैम्बलिंग क्या है कि आप दुआ में तो लग गए, लेकिन आपका जो हर्ड है उसने आपको उसको सिक्योर नहीं किया. तो वो क्या कहा गया है कि अगर आप कोई ड्यू डिलिजेंस कर दें, तो गुरदास मान का सॉन्ग का पहला ये है कि पहले उस सीढ़ी को परख लें जिसके ऊपर मैंने पाँव रखना है. ओ भाई, वो थोड़ी सी तो मैं प्रिपेयर हो जाऊं कि ये ना हो कि मैं गिर जाऊं. सो द आइडिया इज अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, फिर ऊपर वाले पे डाल दे, भाई मैंने सारे काम सही करनी है, मेरे इस ट्रेड को सही कर दे. हम दुआ बाद में मांगते हो, भाई फंस गए हैं यार, इसमें से निकाल दें रब्बा, आइंदा इस बंदे से ठीक रहूँगा, मंदिर जाऊँगा, चर्च जाऊँगा, मेरी जो वीकनेसेस हैं वो ठीक कर लूँगा. तो भाई वो फिर यही काम करता रहेगा. तो जस्ट सेल इफ इट्स रेड एंड ग्रीन व्हेन इट्स टू बाय, and you'll be fine most of the time. 80-85% is what we are aiming for, and that is about it.
the more like a robot you will become. So sell here, sell here, sell here, sell here. 4 sell आ चुके हैं, पूरे पूरे दिए हैं. ये if 30-20 सर, 30-20 में 4 रिजेक्शन विक नजर आ रही है मुझे. Top of the bar retracement divergence. Okay. है MES पे नहीं आया होगा, ES पे. मैं MES को भी इसको स्वैप कर लूँ, मे बी प्राइस टॉप ऑफ द बार नहीं आई. सो लेकिन आपकी एंट्री टॉप ऑफ द बार ही, क्योंकि एक आध टिक का फर्क पड़ता है. सो MES में शायद, लेकिन MES पे मिड बैंड आया था. Yes, sir. मिड में, हाँ जी, ठीक है जी. Question again. रिट्रेसमेंट आता है कि प्राइस मूव करते करते ऊपर आई, यहाँ पर आई ना, घूम फिर रही थी प्राइस. ये वाली अगर मिड बैंड 0 लाइन है और मिड बैंड ही 50% है, तो वर्ड यूज होता है रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस. सो 2 डिफरेंट. रिट्रेसमेंट मीन प्राइस पुल बैक हुई. डाइवर्जेंस मीन ना आपकी स्ट्रेंथ ऊपर आई, ना आपकी प्राइस मूविंग एवरेज. सो डाइवर्जेंस. So divergence means opposite. So price came up, none of my BBs came up. So Daniel Bhai calls it gap trade. Okay, price gap trade, gap trade, gap trade. Gap trade means retracement divergence. So you know what he says? We will never miss this type of trade. That's the word he uses, meaning I love gap trades. We will always take care of that. So how many times gap trade here? Gap trade here, 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 here. Now, right now, a gap trade is forming right now. So I'm looking at the strength before I'm looking at the chart. Yeah, most of the time, strength will, when the price has gone up, strength will move automatically after near mid band. So by the time it's top of the bar, it won't move. So retracement divergence. Gigi. राइट नाउ इस कैंडल का गैप ट्रेड बन रहा है. प्राइस ऊपर आ गई है ना, ट्रैवल करते 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 ऊपर आ गई. ये कुछ नहीं आया, ये भी कुछ नहीं आया, तो रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस फिर बन गई. यस, हर ट्रेड का मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूं कि अगर एक ट्रेड है, मैं थोड़ी लाइफ इजी कर देता हूं. अगर आप 15-10 में करेंगे ना, एक आपके चार्ट्स पहले आपको बता दूं. आप जब कंप्यूटर खोलो, आपको 3 चार्ट्स दिए हुए हैं उन्होंने. ऊपर टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है 15-10, टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है 30-20. Yeah, 30-20 is what the word we call it, and 15-10 is the next word we call it. So let's explain you a bit of Ninja. So you log in and you connect, you type in your username, you type into a password. What are you doing? You're connecting to a broker. So you're a trader, your platform is Ninja Trader, your capital is paper money. And who are you connecting with is Ninja Trader. They're giving you a paper money account of $50,000 or $100,000. So you have connected and you are given 3 charts, 3020, 30-minute, and 1510. It's hard to explain everything what you see on the screen. However, if you log into superareas.com, there's a 2-hour video that I made. You can pause it, watch it, pause it. It's called How to Use Ninja Trader. I spent 90 minutes making it. So it's available on superareas.com under Trading Academy. If you go at the bottom, it says how to operate. Because you need to know how to use this thing. Where is the stop loss? Where is the ATM? What is connection? All of those things is available. Full 2 hours, step by step, everything. So let's log in and show you. So if you go to the browser, log into Super Areas. At the bottom, so Daniel's 4 lectures are there too. Some people don't know. Every time you don't have to come on a Saturday, sit here 9 o'clock or use to listen to his Zoom. Every single thing Daniel has said, we have recorded it.
So all 4 lectures are recorded. You can go back and reference every single thing of his lectures. So if I go in and log in, so just to quickly show you, so this is your portal where you are able to reference material in the future. Uh, so how are you going to go? You will go under something called Trading Academy, right here. You click on that, and it says access software and study materials. On the left-hand side, the PDFs that are given to you, you have English session 1, session 2, session 3, session 4, Saturday class 1, Sunday class 2, Saturday class 3, Sunday class 4. Every single thing has been recorded and done in English and Hindi twice. So if you want English, you click on it. This is your Saturday lecture 1. So every time he does a class, not every class is the same. So you have 4 classes right there. Class 1, class 2, class 3, class 4. Here's my problem with a lot of people who join us from overseas. They join us, they install Ninja, or they're like, oh, you have not taught us anything. I'm like, whoa, have you not followed the instructions that came in the email? Please watch the 4 lectures first before you operate the software. You don't understand English, no problem. There is a Hindi session, full lectures, all 4 of them, step by step. So we tried to do, अब divergence को हिंदी में explain करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, but he did a good job. So you have these 4 lectures. Now, then I come in and you go under YouTube tutorials, right here. It says Beginner's Guide for Ninja Trader 8.1. So if you just watch this, so please, I always give people some homework that tomorrow, when you ask questions, you should know what questions to ask. You have no idea what to even ask for. Yeah. I can't just, spoon feed you. You got to put it. So please, this one video will make your job much easier. So this video will go in full depth how to use the control center, how to use the chart trader, what lines mean what. So please, this is a good exercise for you to practice, and please watch this as many times, and then the topics start going into very specific, how to do a mid-band, how to do automation, etc., etc. But that one video of beginner's guide is very critical for you to make the decisions on how to buy, how to sell, etc. So coming back to our thing, once you have bought it, you're given 15-10, you're giving 30-20, you're given 30-minute chart. ठीक है? अब मैं आपके आगे आ रहा हूँ. For now, beginners ignore and only focus on 30-20. There are 2 types. One type of trade I will give you on day 1. It's called a trend trade. Trend. You can do on 15-10 as well. Trend trade. Or a mid-band. You can do them on both charts. If you like, 15, 20, 30 will happen maybe once 1 hour, once every long time ago. But 15-10 will happen much faster. Your number 1, make like every morning you get up and you do like brush your teeth, wash your face. Every time you open your computer, check the news. We don't ask much. Check the base
and range. We do that for you. You can just listen, tag along. Base means above pivot, below pivot. Range means night high, night low. We'll tell you slowly. Third is trend trade. If it's bullish, buy. If it's bearish, sell. And from where? Midband. 15-10 midband or 30-20, doesn't matter. You can take, this will come much lower from midband. Today is day one of some of you. Today is day one for one batch that started a week ago. Don't worry, it's okay. Everybody catches up. There's no, I have a book I carry around. I have notes from Daniel 2021, 22, 23. Anything you don't understand, just write it down. Maybe you woke up at 10 p.m. and you had a question, you will forget. You just write it down, ask me in the morning that, hey, I don't understand this. How can I do this? So keep writing questions. I used to be at their office and I would travel here. After 12, I would sit down with Daniel. I'm like, I don't understand this. I don't. So after, and it hasn't changed. After what will happen, 3 months maximum. That because you will learn FOMC, you will learn CPI, PPI, moving average, moving Bollinger Bands. So day one, you're like, what is this guy talking about? Like day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, and then we'll turn you how to, like I said, every day, think of it like driving a vehicle. G1, it was difficult, and a lot of people do AZ right now. But imagine the yield sign was difficult, the parallel parking was difficult. Most of us in G2 decided, let's go to a town and skip it and where there's no traffic. That's what we did. We're like, यार G का टेस्ट आ रहा है, ऑरेंजविल चले जाते हैं, वहाँ ट्रैफिक नहीं होती, टेस्ट आसान है. लाइक टेस्ट में हम सारे घबराते हैं ना. टेस्ट वेदर आई टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, या आपका G1 टेस्ट हो, या ट्रेडिंग हो, बंदा साइकोलॉजिकली घबरा जाता है. टेस्ट इज जस्ट एन एबिलिटी टू सी इफ यू हैव लर्न द मटेरियल. टेस्टिंग यही है ना, आपका पूरा साल मैथ पढ़ाया है, बता दो यार कि a square plus b square is equal what. अगर नहीं समझ आई, doesn't make you any less intelligent, you just don't understand the concepts here. Same idea. Eventually, so please don't trade for money until you got your concepts like covered. Keep saying retracement divergence, keep saying area, keep saying midband, you will see me circle between 5 trades. Oh, I'm going to take a fib trade, I'm going to take a midband trade, I'm going to take a retracement divergent trade, or I'm going to take an area trade. And then that's it. We go back, and then you eventually आपके दिमाग में बात आ जाएगी. नहीं आई तो हम बैठे हैं ना, it's okay, no problem. सर क्रॉस नहीं कर रही R1, क्या करना है? 0 trade for me, 0 for Vara, 0 profit, 0 loss. Please don't say, because you will, today, पहले होता था pressure. यार वाडा वाले कहते हैं हमारा ट्रेड नहीं आया, राफे साहब ने तो 500 बना लिए. ओ भाई राफे ने आज नहीं कुछ बनाया, ऐसा नहीं है. So that's how. Under the trade, Buy for bullish, bearish for selling, and from midband. So your entry point has to be midband. Yeah. अब आप practice करना. So what's your homework? जी जी. मैं MNQ कर रहा हूँ. मैं MNQ का एक नंबर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ 35 times 3 कितने अकाउंट लगे हुए हैं. So 35 times 3 is 105. So my favorite type of trade during the day is area trade. Area trade मुझे time bound नहीं होता. मैं retracement diversion में पता क्या, मैं यहाँ से उठ के इधर आया, लो जी भागा गया, ओ माय गॉड स्टॉप लॉस लग गया. ठीक है, मुझे उसको सामने बैठना है ना स्कैल्पिंग के लिए. जब तो मैं शाम को क्वाइटली बैठूंगा, कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड कर लूंगा, कोई मिड बैंड कर लूंगा, कोई एरिया कर लूंगा. So you have to understand, I have the luxury to trade 23 hours a day.
मीनिंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग नंबर पे ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए ना मैं मिड बैंड देख रहा हूँ, ना मैं ओवरबॉट देख रहा हूँ, ना कुछ। आई जस्ट नीड दिस नंबर टू बी 30,380, 9 o'clock, 10 o'clock, सर 60 मिनट पे R3 पड़ा है, तो वो आपको साथ बता भी देता हूँ कि मैं क्यों वेट कर रहा हूँ। सो राइट नाउ 1 मिनट के ऊपर पहुंच रही है, पहली दफा 272 तोड़ रही है। तो अरे जी आज आपने कोई ट्रेड लिए? आपने ठीक किया? ठीक है, मीनिंग कि आप 1 मिनट को एक देख रही है ना। so she is scalping, meaning going in a trade, out of a trade. In that's a little bit more focused work. So when I will enter at 30,385, then I will pay attention to my trade. कि अच्छा ये मेरा नंबर आ गया, अब मैंने क्या करना है। So kind of give you a quick अगले टॉपिक भी आज ही कवर करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका मिडल का चार्ट एरियाज कहलाता है, 30 मिनट का है, उसके अंदर कुछ कैंडल्स बनी हुई हैं। एरिया, लेवल, रिवर्सल, ट्रेंड बेंडिंग, thousands of names for one thing, and it stands for support and resistance. So there is a box, it's a floor, then let me put 2. Price is here, it's going up, this is my roof, resistance, the bottom is floor, this is resistance for this, support for this. That's how you've been taught, no problem, very easy. Right now, I am waiting for NASDAQ to get to resistance level 3, R3. If it goes there, I have a prediction, or the software has a prediction that it will go there. Right now, the price is 272. 385 is the number of interest, area of interest, the zone of interest. I will wait until here, and I will sell from there. That's it. So when you are doing area, you're not looking for trend. The word is called swing trading. So I will look for the highest point and I will sit inside the trade. Now, so a lot of people ask me question, Rafay, price is 272. You know you're going to enter at 385. Why don't you buy towards it? Yes, I can. I don't want to. You can. Yeah, you're saying I'm waiting for the price to reach to the peak. So, have you taken a ride, Wonderland, Giri? 385 पे स्ट्रेटजी लगाएंगे? नहीं, मैं खुला छोड़ता हूँ। एरिया पे मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई एटीएम नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। माइक्रो से जाऊँगा 1 या 2। अपना अकाउंट है जो मेरा 1.5 लाख का अकाउंट है, जिसके अंदर मेरा पास बफर है 4500 का। यहाँ मैं 2 या 3 MNQ से शुरू करूँगा अपना ट्रेड। जो लोग वाडा वाले मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके पास $1000 का थ्रेशोल्ड है, मैं 1 MNQ से शुरू करूँगा। ठीक है, मेरे 2 सिस्टम लगे हैं, मैं 5 से भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुरू सेम टाइम पे करूँगा। ये कसम खा लिए भाई, ये नहीं करूँगा कि मैं ट्रेड ले लूँ एग्रेसिव और आपका ट्रेड ना आए। अगर मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, आप लोग भी कुछ नहीं लेके जाओगे, जो लोग मेरी ट्रेड की मिरर कर रहे हैं। तो बेसिकली राइड चल रही है, आपने राइड से नीचे आना है, हम स्टेप्स चढ़ रहे हैं। इधर आई विल गो टूवर्ड्स 385 एंड सेल डाउन। और दूसरा मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस चले गई 30,100 पे, चले कितना गई है 160, तो यहाँ से मैं बाय करूँगा। तो 156, तो 100 पे आ गई तो मैं बाय करूँगा, 385 पे आ गई तो मैं सेल करूँगा। अब इस ट्रेड की मुसीबत पता क्या है? पता नहीं कब, टाइम नहीं। राइट नाउ करंट प्राइस nothing, I'm outside, I'm just observing it. मुझे नहीं मालूम यहीं से गिर जाए। देखिए, मैं अभी कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि क्या होना है। जी जी, इट्स एक्चुअली फिब का बॉक्स बना हुआ है, ग्रीन वाला।
30 मिनट में एक डब्बा बना हुआ है, उसके नीचे वाला पोर्शन मैं देखूंगा कि सपोर्ट क्या है। But you have to buy it for yourself. हाँ, नो लेकिन You मैं have to own it before you. नहीं, यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन ये है, very good question. So let me explain how short works. If I buy at 100, I bought something. I took this piece of paper. So you have to understand how futures contract, who is involved, who's the party. There's 3 parties involved in any given transaction. So you have your buyer, 1, you have your seller, and you have your broker. There are 3 parties involved in every transaction. So today, I will buy something at 30,100. I'm a buyer. What does a broker do? It gives the contracts to you. Broker is holding the contracts in the market, and it's keeping a ledger. So broker has $1,000 of yours sitting, and it's 30,100. So broker will put a little bit of a lock onto my, because remember, the value of the contract is $30,000 for one. You know how much money I'm putting up for deposit? Maybe $500. Okay, so broker has locked $500 here and has issued me a contract. Okay, now the price of the contract is rising, and I exit 30,120. The price has gone up of the contract, and then I will find a seller who wants to buy this contract at this price. So I made money. Somebody took that contract, and my trade is closed. How much money I made? $20 a contract times 20, I made $400. And I sold it in the market. So broker, what they did was they released my hold, and they added $400 to my balance. Now I have $1,400. I didn't need $30,000. So this is a very simple example of buying something, waiting for it. What if the trade went opposite? This is a good scenario. Things went in positive. I bought it at 30,100, 90, 80. Now I am negative $400 at the moment. Broker at minus $500 will close my trade because they don't want to take your risk. They will have it because your account balance now is going, you only have $600 left. And broker said, okay, for this trade, I'm giving you it's your money, but only I'm giving you an allocation of $500. So they will close my trade the moment it reaches negative $500. They will get rid of this contract to save me. So far, so good? No problem. Now let's do an opposite trade. This is where it becomes, because you get a concept. I haven't bought something. What am I selling? So at 385, I'm hoping or predicting or confident the price can go down from here, approximately here. So I ask my broker, I need a contract right now. I have a seller right now. So your broker does the same thing, gives you a contract in advance. I know it's tricky to understand. You already have a seller. So you're still a buyer, but instead of buying it from the market, you bought it from your broker. So your broker gave you a contract, you sold it. So you sold it for 385. Now your seller is out. You and your broker are fighting. Your broker is saying it's 449. I need my contract back. You borrowed it. You're borrowing a contract. I need it back. I don't care what price you give me back. I need my contract back. So now you sit in the market. It's 10:30, 11:30, 11:40, 5 o'clock. Before 4:45, you have to give that one contract back to your broker.
because you have borrowed it. So you still took it, but you took it from the broker rather than here you buy it from the broker, but here you still buy it from a broker, but with a promise to return at 5 o'clock. So now you sold it to somebody at 385. Price is rising. You're going in loss. So your broker is going to say, buddy, 5 o'clock is up. Then you go in the market, you buy back and give it back to your broker. But your hope is that you can buy back this contract for $30,360. So your broker sold it to you for 385. You sold it back to your broker for 360. You made your money. So whether you buy first or sell later, that's between you and a buyer and a seller. Broker is not really taking care of too much except your ledger. But when you're doing a short trade, your broker is involved. They're giving you kind of a contract. You sold it in the market, and then you have until 4 o'clock or 4:45 or money. If you run out of time or you run out of money. So you will eventually it will come to you in couple of, so at 385, I will short this contract and hope that it doesn't go to 389, 400, 450. Then my broker is saying, hey, I need my contract back, and you're hoping you can recover that contract faster at a cheaper rate. Still the value of the contract. So just like I said earlier, whole day the value of a contract is going up or down, up. Either you're saying the value of contract should go up, but it changes. Because it changes so many times, you are deciding, should I buy first, sell later, or should I sell first, buy later? That's all your decision is. So the trade is called buy to open, sell to close. You have executed a trade. Buy to open, sell to close. In this side, it is sell to open, buy to close. So you buy back the contract from the market. Maybe somebody offered you for 360. You were great. I bought it from the broker 385. I'm giving back the contract, and I bought it from the market. So that's all the broker, you, buyer, seller, buyer, broker. It's a triangle that keeps changing depending on who you are. On this trade. So maybe 85%. So I am hoping 85%, I am sure that by the time price reaches 385, it's a good time to short. You know, Michael Burry and everybody, when you say they're short on something, they're hoping price will go down. So let's say you can buy NVIDIA right now. That's a buy to open, sell to close. But some people say, no. NVIDIA is too overpriced. How can they make money? So they buy options and they say, let's bet the price of NVIDIA to go down. Because you make money both ways, right? So mostly, so stocks में तो नहीं, options में shorts हो जाती है ना. So you would do something called a put options. Put that, hey, I want to see. So each day, 23 hours a day, contract की price को ऊपर जाना है तो क्या होगा, नीचे आना है तो क्या होगा. सिम में लगाते जाना ऑर्डर, लगाएं, देखें क्या होता है. अगर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जा रही है और आपने बाय किया हुआ है, आपको पैसे बनेंगे. अगर नीचे जाना शुरू हो गए और आपने बाय किया हुआ है, आपको लॉस आएगा. So this is very simple math. It's not that complicated. Or I know my answers are run on sentences. They just never stop until somebody interrupts. Yes, सुपर एरियस में मैंने लिख दिया जाके, मैंने लिख दिया है, आपके कंप्यूटर ने लिख दिया है. आपको कुछ नहीं डिसीजन करना, सिर्फ पिक करना है मैंने कौन सा ट्रेड खेलना है. कंप्यूटर खोला, मुझे ट्रेंड ट्रेड पसंद है, मिड बैंड पे बाइंग या सेलिंग, मुझे एरिया ट्रेड पसंद है, मुझे फिब ट्रेड पसंद है. अब मेरा, जतन का, टिलप का, माजिद भाई, हम लोग सुबह से शाम तक एरिया ट्रेड पे बैठे. But here's the thing,
You cannot learn area trade until you go through mid band. आप सीख ही नहीं सकते. आपको मिड बैंड में बाइंग सेलिंग पता होगी तो आगे समझ आएगी ना, क्योंकि हम आपको बाइंग सेलिंग कहीं सिखानी है ना. तो वहां पर चार्ट खोल लेते हैं, जाएं जी ऑर्डर लगाएं. अब मैं आप सारों को एक चीज कहता हूं, जाके ऑर्डर लगाएं सेल लिमिट का 78.24 पे. इसको मैं कहूँगा ये एरिया ट्रेड है. 78.24 पे जाके लगा दें और बैठ जाएं. टिकटॉक खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, कोई बुक पढ़ लें, कोई गाने सुन लें. जब आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी. 1 घंटा लगे, 2 लगे, 5 लगे, यू हैव टू वेट फॉर योर प्राइस. अब आप फीलिंग्स पे जाएंगे, यहाँ से प्राइस नीचे जानी चाहिए. 50% है फीलिंग. तो आपने कहा सेल, वो चला गया बाय. आपने कहा बाय, वो चला गया. Once again, giving you the indication. देखें सर, हमारा एरिया क्या है, R1 का एरिया क्या है. R1 जो सुपर एरियाज के वो शेड्स आ रहे हैं, उसके अंदर का नंबर पढ़ रहा हूँ. So every time I will give you a number, I will give you an explanation of where am I doing. मेरे पास कोई ऐसा मैजिक या कोई चीज़ नहीं है कि मेरे पास सिर्फ वही चीज़ पड़ी हुई है जो आप लोगों के पास है. मेरे पास कोई ऐसे इंडिकेटर नहीं है जो आपके पास हो, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपके पास हो. So, मैं सिर्फ सीख गया हूँ कि कहाँ से पढ़ना है. That's it. So what's telling you that for the M&Q that you should wait for R3? Yeah. What's telling you that it's already breaking R1? Yeah, तो R1 हो चुका है ना. Sorry, chart are actually different. 60 मिनट के चार्ट पे जाएं, वहां पर एक लाइन जा रही है. I'm on 30 minutes. 30 में भी बैठा है, एक लाइन जा रही है, उसके ऊपर R3 लिखा हुआ है. R3 लिखा हुआ एक लाइन का नंबर जा रहा है, वहां से पढ़ रहा हूं मैं. तो आप मुझसे कहेंगे यार राफे ये नंबर पढ़ कहाँ से रहे हो. मैं कहूँगा इस चार्ट पे जाओ, ये लाइन से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से एंटर करूँगा. और ये चार आप भी 1-2 महीने में पढ़ लेंगे. जब मैं जहाँ से नंबर बोलूँगा आपको कहोगे अच्छा इसने यहाँ से पढ़ा है. I was at the wrong chart. नो प्रॉब्लम. सो अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ जी. Anything, phone or chart, but this happens where you don't care about trend. आपको 15-10 नहीं देखना, 30-20 नहीं है. अब आपके पास ये लग्जरी तो नहीं है ना कि आप 23 घंटे इसको बैठोगे. तो आप कहते हो मैं कौन सा ट्रेड करता हूँ. 9 से 11 ये ट्रेंड ट्रेड कर लिया. 9 o'clock ग्रीन है तो बाय करते चले जाएं, रेड है तो सेल करते जाएं. ES की बात कर रहा हूँ. NASDAQ में कभी ये ना कीजिएगा. NASDAQ के चार्ट्स डिफरेंट हैं. NASDAQ बहुत पावरफुल सिस्टम है. अगर गलत कहीं स्लिप हो गए तो अकाउंट भी जाएगा और क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है. सो प्लीज ट्रीट NASDAQ विद क्वाइट अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट. विद ES मिड बैंड. हाँ जी, गो अहेड. नहीं देखें, जो नंबर है उसके लिए आपको चार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए, डॉम चाहिए. वहाँ लगा लें सेल लिमिट, बाय लिमिट. बहुत सारे लोग जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ जाता है वो सिर्फ आके डैनियल भाई के नंबर देखना चाहते हैं. अगर हमारे पास 12,000 ट्रेडर 2008 से चला है ना, मेजॉरिटी एक्सपीरियंस के बाद चले जाते हैं अपनी लाइफ में वापस और वो नंबर देखते रहते हैं कि विन लाइफ टाइम के हाइव के ग्रुप ने क्या नंबर निकाले. देखें, हम खाली तो नहीं है, पूरी दुनिया बैठी है जो देख रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. वो सिर्फ देखते हैं कि विन लाइफ टाइम वालों ने क्या निकाला है. तो फिर उसके अंदर फिर उसको मैं जूम इन करवा के मैं तो कहता अच्छा यार यहाँ से मैं ट्रेड लेने लगा हूँ, वो मेरे साथ आना चाहता है तो नो प्रॉब्लम. तो आज तक सुबह से कोई ट्रेड नहीं आया ही नहीं, खाली बैठे हैं. तो मेरा पर्सनल जो MNQ वाले बैठे हैं एरिया ट्रेड में, कोई ट्रेड नहीं आया. कई दफ़ा ये काम 8:30 बजे डन होगा, कई दफ़ा शाम के 4 बजे. सो यू पिक योर पॉइजन योरसेल्फ. लाइक अगर आपने ट्रेंड ट्रेड किया है, वो 4 ट्रेड्स आ चुकी हैं. 30-20 में 4 दफ़ा प्राइस टॉप ऑफ द बार गई, फिर नीचे आई गई. ये एक और मिड बैंड आपका 30-20 का पास हो गया.
इतनी स्लो मूवमेंट है, अगर आप देखें स्विंग ही खत्म हो गई है, देयर इज नो वॉल्यूम एट द मोमेंट। सिर्फ 38,000 कॉन्ट्रैक्ट बिका है इसके अंदर, सो विच इज ओके। ट्रेडिंग जी जी करेक्ट, नाइट टाइम हाई R1 रेजिस्टेंस के तौर पे चलना चाहिए, अगर वहां से गिर जाए, सॉरी yes, it's actually with it's R1, 7824 is R1। अच्छा, आप दो कंफ्यूजन्स हैं, जहां तो लाइन लगी हुई है ना R1 R2 की, वो डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं, हम उनको कहते हैं निंजा के पिवट्स। जब वर्ड यूज होगा मेरे से, जतन से, हम इनको कहते हैं निंजा के पिवट पॉइंट। कुछ हमने अपने R1 R2 बनाए हुए हैं। अब अगर आपके पास सुपर एरियाज की वो शेड्स जा रहे हैं आपके चार्ट के ऊपर इस तरह के, तो वो R1 डिफरेंट है। ये मैं एक शेड निकालता हूँ, वेयर इज दैट चार्ट, लेट मी सी। नहीं, ये 30-20 पे नहीं आते, ये शेड्स आते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, मिडल चार्ट पे शेड्स आएंगे। अगर आपके शेड्स इनेबल नहीं है, अंदर से जाके इनेबल कर दें, यार हमें वो शेड्स दे दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम आपको उस तरफ ले जाते नहीं हैं। आपके पहले दिन तो किसी के शेड्स नहीं है, क्योंकि हम आपको एरिया करवाते ही नहीं। रीज़न ये है, आपने 4 क्लासेस ली हैं ट्रेंड के साथ वाली, मंडे मॉर्निंग को राफे आ जाए कि एरिया वाले, तो कहेंगे यार सिखाया कुछ है, पढ़ाया कुछ है और करवा कुछ रहा है। इसलिए 1-2 हफ्ते हम आपसे यही कहता हूँ, ट्रेंड ट्रेड करी जाओ। ग्रीन है तो बाय करो, रेड है तो सेल करो। ये जो कॉन्सेप्ट है एरिया वाला, ये सेकंड वीक में आता है। फर्स्ट वीक में हम लोग, तो कहाँ से सेल करना था, ये मिड बैंड्स राइट अराउंड हियर। आपने सेल किया 78.98 से, प्राइस आ गई 78.92, आपको 6 पॉइंट मिले इस कॉन्ट्रैक्ट्स में। अगर एक माइक्रो है तो $30, और अगर एक मिनी है तो $300। तो आपका ट्रेड सुबह सर यहाँ तक है। सो मैं कितने बजे हम आया हूँ जी, 9:30। एक ट्रेड, दूसरा मिड बैंड का ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड, छठा ट्रेड, और अगर डाइवर्जन को इग्नोर कर दिया तो 7 ट्रेड बनते हैं। तो 7 ट्रेड्स हो चुके हैं और एटलीस्ट 20 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो जी जी भाई, हाँ जी, नहीं वो ठीक है, फिर 30-20 में ना, यस, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। देखिए, जो आपका मिड बैंड ट्रेड है ना, उसका एक रूल है 5 पॉइंट का। जब तक 5 पॉइंट ना हो, मुझे आई डोंट केयर। देखिए, मैंने एक चीज ली हुई है कि हर ट्रेड में मुझे मालूम है कि है, अगर 5 हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको पता होना चाहिए यहाँ डाइवर्जेंस से ये मिड बैंड लेना ही नहीं, राइट? तो वैसे ही छोड़ दें तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। सो हर ट्रेड के साथ मैं बता देता हूँ कि इस ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या है। नहीं, वो देखिए 30-20 पे डाइवर्जेंस, एमईएस, नहीं एमईएस पे बननी चाहिए यार। नहीं, मैं बताता हूँ इधर, नहीं वो ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ डिफरेंट चल रहा है, एक आध टिक का फर्क है, लेकिन सिर्फ 2 टिक की वजह से वो लाइन नहीं बन रही, नो वरीज। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा देखिए गया टॉप ऑफ द बार, एक 1038 पे और 1054 पे। हर ट्रेड का एक रिस्क है। आप 5 पॉइंट लगाएं मिड बैंड पे, 3.75 लगाएं रिट्रेसमेंट डाइवर्जन में घुस जाएं, तो आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। आज तो MNQ भी नहीं चल रही यार, कुछ भी नहीं चल रहा।
dead. खाली है। हाँ, ये एक लेग कंटिन्यू होती जा रही है, राइट? अगर लेना है तो टॉप ऑफ द बार, टॉप ऑफ द बार, टॉप ऑफ द बार सेल करते जाएं। और इधर अभी नैस्डैक में तो 1 मिनट का मिड बैंड से ऊपर नीचे नहीं मूव हो रही, R1 और S1 के दरमियान ही फंसी हुई है। Every day 9 o'clock. No, देखिए 9 to 11 मेरी कोशिश होती है एनालिसिस हो जाए, 11 के बाद आपके Q&A आ जाते हैं कि आज जिस तरह मेरे पास कोई ट्रेड था ही नहीं तो मैं जल्दी स्टार्ट कर दिया। नो न्यू ईयर की रेंज सिर्फ $100 की है, 165 से 250, 265 माइनस 156, $109 की रेंज है। मीनिंग कि अगर नैस्डैक स्लो है, ES ने ब्रूटली स्लो हो जाना है। ES का कोई अपना किरदार नहीं होता इस मार्केट में, जो नैस्डैक ने करना है। ये अगर नैस्डैक ऊपर जा रही है, ES ने ऊपर जाना है, अगर नैस्डैक नीचे आ रही है, ES ने नीचे आना है। Yeah, because 75 companies both हैं, so if you're doing area trade, 30 minutes is okay. 30 to 60 is fine. But if you're doing trend trade, you can do them in 15-10 or 30-20, your choice. Meaning, right now I got 30-20, so 30-20 will have its own mid-band with its own top of the bar. But beginners, very day one, 15-10. Time chart we don't touch. We only touch the time chart when it's an area chart. Meaning that right now I'm not looking at time chart for ES. Because you are ES day one, just focus on 15-10 mid band. 30-20, either or. The time chart, the middle one, we just observe it for the area. Correct. Day one, I don't want you to focus on anything. Pick a chart, either 15-10, 30-20, and start placing trades at the mid-band. Because I want your hand to get enough practice with your mind. Okay, I look at 30-20 right now. Where is my mid-band? My mid-band is sitting right here, sell limit. Done. Keep placing a trade over and over. If it's magenta, sell. If it's green, buy. You don't want to focus. Yes.
between the bars, above the bars. No, at the mid-band, one tick below. The bars are right. No, that's at the mid-band price. Doesn't matter what amount. Yes. Beta 2. Super areas, support and resistance. मैं आपसे कहूँ कि 74.24 पे. Right now I'm at the mid-band. I enter, I sell. If the color change, get out of the trade. So that's 30.20. If I'm in mid 15.10, that may be telling me I'm a bullish at the moment. So you buy at the mid-band. So whichever chart you pick that method inside that chart. So if you're doing 15.10 and 15 telling you green, you keep buying. If you're taking a trade at 30.20, 30.20 is telling you to sell, you sell. Because day 1, day 2, day 3, all I care about is for you to know how to buy, how to sell. Forget about what am I going to watch before I buy or sell. Your practice is not to look at anything. I want you to practice buying and selling. Because the more you will wait, you don't know how to buy, sell yet, right? Do you? Can you place a trade and let's see which way it goes? Because I want you to get like familiar with right click, sell limit, right click, buy limit. So this is your practice. What level? Mid-band. So if I'm going 15.10, 15.10 is green, buy. No problem. No problem. Different trades. See, after 6 o'clock, ES will lose all its power. PM, you switch over to NASDAQ because there is no volume in the evening time for ES. So you go into NASDAQ market or gold market. But during the morning time, the trend trades are faster from 9 to 11, from 2 to 5. These time that we look at, there's volume there, you can trade. So 9 to 11, 2 to 5. These are the two morning trades. Zero trades, zero trade. ESK, 9 a.m. to 11 a.m. 2 p.m. to 4 p.m. or 5 p.m. जी जी हाँ जी No, nothing. सिर्फ मिड बैंड पे अगर मिड बैंड का ट्रेड करना है तो मिड की प्राइस पे जाएं, सेल लिमिट लगाएं, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, बस दैट्स इट. अब ये देखें पीछे वाला मिड बैंड चला, उससे अगला मिड बैंड, अब ये तीसरी दफा प्राइस मिड बैंड पे आ गई. Minimum amount $1,000 is reasonable. Yeah, but you're not gonna put your own money into this. Sorry? Yeah, simulation gives you 50,000. That's, it's already default by 50. So that's just fake paper money. The moment you know how to buy, how to sell, will put you in a funded program. Approximately costs $60, and they will give you $1,000. So first our goal is to overcome that target. Once you move, then you will go live maybe 3 to 6 months. Because live, you do a bad thing, every dollar is your own gone or coming. Funded, you fail 1 funded, 2, 3, 4, you're only losing $60. Because the capital cost of the capital is around $60 for every $1,000. सेम ये रखे सेम. मैं 30-20 में गया, मैं देखता हूँ गोल्ड तेज है कि नहीं. ये क्या फ्यूचर्स, ये माइक्रो GC दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, MGC माइक्रो. अब ये है जी, गोल्ड की मार्केट चल रही है, मुझे अभी नज़र आ रही है ग्रीन जा रहा है, बॉटम ऑफ द बार बाई करी जाए. क्योंकि गोल्ड में क्या ग्रीन हो, डाउ में कुछ होगा, रसल में कुछ होगा. अब मैंने बाय करना है, कहाँ से बाय करता हूँ? राइट क्लिक, बाय लिमिट. ये बॉटम ऑफ द बार है ना, प्राइस हायर हाई से आ रही है. और इसमें भी 15 टिक्स का स्टॉप लॉस लगाएं
और ये ऑलरेडी पहली दफ़ा होगी रिट्रेसमेंट। लेट्स सी, ये गोल्ड का ट्रेड है। गोल्ड में मैं गया हूँ 30-20 में गया हूँ, सेम मेरा रूल है, या मैं गोल्ड में एरिया में चला जाऊंगा, या गोल्ड के फिब में चला जाऊंगा, या गोल्ड के रिट्रेसमेंट एवरेजमेंट में चला जाऊंगा, या मिड पे। तो अभी प्राइस है गोल्ड की चल रही 448150। गोल्ड में $1000 हो बहुत होता है, ना। अब ये गोल्ड का ट्रेड है, सेम थिंग है, रिट्रेसमेंट एवर्जन का ट्रेड लिया 30-20 पे, सेम स्ट्रैटेजी, सेम मीन 15 टिक्स के बाद गोल्ड का 30-20 का अपोजिट हो जाएगा। अब नीचे और ऊपर चला गया, आई विल पिक माई ट्रेड, आई विल मूव इट टू द बॉटम। So market doesn't matter whether it's gold or S&P or everything else. ये पहली है, देखिए इस अटेम्प्ट में मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा ऊपर जाते हुए, तो मैं चलें जी बॉटम ऑफ द बार ट्रेड लगाता हूँ। ये लगाया, साथ एक ATM बनाता हूँ 15 और लेट्स डू एन एडिट, प्रॉफिट 20, प्रॉफिट शुड बी 20, स्टॉप लॉस 15, ये लगा दिया और इसके साथ ये लगा दिया। अब मैंने लाइफ जैकेट भी पहन ली कि इनके स्विम करते ड्राउन ना हो जाऊँ ना, पूरा अकाउंट ना खाली हो जाए, राइट। सो 15 टिक्स का स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो लेट्स से अगर ऊपर चढ़ता जा रहा है, हाँ वो डबल फायदा हो जाता है। जो पहली रिट्रेसमेंट डाइवर्जन है, पहला मिड बैंड है, पहला पुल बैक है, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। तो इस लेग में ये पहला होगा। अब मुझे हाँ कि अभी देखें ये गोल्ड की मार्केट चल रही है, गोल्ड का 30-20 का ट्रेड है, गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट $1 मूव हो मुझे $100 मिलता है, और $1, और क्योंकि उसमें 10 टिक्स हैं, उसके टिक्स डिफरेंट हैं। सो मैंने अगर देखना है गोल्ड का ट्रेड, तो मैं चार्ट खोला है, बॉटम ऑफ द बार गोल्ड में ट्रेड में लगा दिया। तो लेट्स सी, अब वो प्राइस डाउ खोलनी है, डाउ खोलना है, रसल खोलनी है, क्रूड ऑयल खोलना है, वो नैस्डैक तेज है, फिर S&P, फिर गोल्ड, फिर क्रूड ऑयल, करेंसी तो इतने स्लो हो जाते हैं कि आपको वेरी क्लोज। मिड बैंड से पहले का रिस्क है, देखिए पहले आता है रिट्रेसमेंट एवर्जन, उसके बाद आएगा मिड बैंड, उसके बाद आएगा मेरा ग्रीन जा रहे हैं ना, बॉटम ऑफ द बार ग्रीन से समझे, इस वक्त ग्रीन है। मेरे पास क्या ऑप्शन बनते हैं? पहला ट्रेड बॉटम ऑफ द बार, दूसरा ट्रेड मिड बैंड, मीनिंग दूसरा रिस्क, तीसरा रिस्क ग्रीन बॉक्स, और फाइनली चौथा रिस्क मेरा आपकी इक्वल लॉस। तो अब यहां पर मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? ये पहला रिस्क है बॉटम ऑफ द बार। अगर मैंने एंटर करना ही है, ट्रेड बहुत जल्दी आ गया मुझे और रुका नहीं जा रहा, तो मैं अपना रिस्क इससे पहले नहीं ले रहा। इस पे क्लिक करके ये मेरा बॉटम ऑफ द बार ट्रेड आ गया, ठीक है। अगर यार मैं डरता हूँ बॉटम ऑफ द बार से, चलो मैं मिड पे बैठ जाता हूँ। सो दूसरा रिस्क 1, 2, ये सेकंड रिस्क है। यहाँ भी डर लगता है क्योंकि ठीक है, अब फिर ग्रीन डब्बा आएगा, उसके बॉटम पे बाय कीजिए, तो ग्रीन बॉक्स अराउंड हेयर आएगा, और फिर फाइनली ये होता है कि लोअर लो से पहले ये होता है इक्वल लो, यहाँ पर जाके बैठ जाऊंगा। तो आप जितनी दूर बैठेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन सेफ हो जाएगी। जितनी करीब बैठेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्कियस्ट ट्रेड हो जाएगा। तो यू कीप चूजिंग। अब मैं जिस तरह 385 से पहले नहीं जा रहा, मैं कहा भाई देखा जाएगा। अब अपनों के साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारी भी। अब मैं बस ड्राइवर हूँ, मैं खाई में गया, सारों को ले जाऊँगा। पहले AI चला रहा था 3 हफ्ते, सिम में बहुत अच्छा चलता है, बेटा में बहुत अच्छा चलता है, जैसे ही लाइव आए 2 दफ़ा बस क्रैश कर दी। मैं कहा, अब उन्होंने कहा भाई कोई ड्राइवर साथ बैठे तो साथ बैठे। तो अब मेरा बॉटम ऑफ द बार मिड पे चला गया क्योंकि प्राइस रुक नहीं गई। मेरी कॉमन सेंस क्या कह रही है, ओ भाई तू ओवर बॉट हो रहा है, बहुत बड़ी स्विंग खुल गई है, बॉटम पे ना जा, मिड पे आ जा। तो मैं अपना ट्रेड का रिस्क मिड पे ले जाता हूँ।
So trading futures, day trading is like a game of chess. You observe, you see, you put your move in, then you hope for the best, right? So अब इतनी high हो गई है gold के 10 डॉलर की स्विंग आई है गोल्ड के अंदर, तो मैं बॉटम ऑफ द बार से उठ के मिड पे आ गया, ठीक है। सेकंड रिस्कीएस्ट ट्रेड है, लेकिन रिस्क तो 100% तो चलो नहीं है, लेकिन मे बी 10% रिस्क है इसमें, एक ट्रेड यहां लग सकता है। तो आपने जब चार्ट खोला, 9 बजे खोलें, 8 बजे खोलें, शाम के 10 बजे खोलें, 11 बजे खोलें, सुबह के 3 बजे खोलें, कोई सी मार्केट खोलें, चेक कर लें कोई न्यूज़ तो नहीं है, नहीं है। फिर देख लिया मैं 30-20 में करना है ये काम था, 15-10 में करना है, और उस चार्ट के हिसाब से अपना अपना ट्रेड रिस्क के बॉटम ऑफ द बार, मिड, फिब या इक्वल लो, 4 ट्रेड है। Goes up. That's what I'm predicting that I should happen. Of course, यहां पर भी कर सकता हूं एंटर, यहां पर लिमिट ऑर्डर लगाया ना, मैं मार्केट ऑर्डर नहीं लगा रहा, लिमिट लगा के बैठ गया हूं। यस, सो दो चीजें होंगी, यहां से टच करके वापस जाएगा। अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक है यहां एंटर किया, यहां से ऊपर आ गए या यहां से नीचे आ गई। दूसरा ट्रेड है यहां से ऊपर चला गया या यहां से नीचे चला गया। तीसरा फिब में से यहां से नीचे चला गया, यहां से, और फाइनली इक्वल लो से हाइज एंड लोस। या सो राइट नाउ 4 मेरे पास रिस्क के चॉइसेस हैं, यू पिक कौन सा रिस्क लेना है। विद एक्सपीरियंस यू विल फिगर आउट कौन सा रिस्क बेटर होता है। पहली रिट्रेसमेंट डाइवर्जन अच्छी, पहला मिड बैंड अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अब इस लेग को मैंने पीछे जाके देख लिया ना, कोई मिड बैंड नहीं आया ट्रेंड चेंज होने के बाद, कोई रिट्रेसमेंट डाइवर्जन नहीं आई, कोई फिब नहीं, फिब अभी तक तो नहीं आया क्योंकि ब्लैक कैंडल ही नहीं बनी, और इक्वल लो ये खड़ा है 74। अब इस ट्रेड में ना हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि मैं चारों ट्रेड लेता हूं आपके लिए, कौन सा, कोई तो फेल होगा, सारे तो फेल नहीं हो सकते ना। पहला रिस्क है बॉटम ऑफ द बार, ये है मेरा बॉटम ऑफ द बार रिस्क। प्राइस आ जाए, रिट्रेस कर जाए, मुझे सिर्फ ग्रीन पता कितना चाहिए, गोल्ड है थोड़ा सा, मीनिंग के 1 पॉइंट होता है पूरा डॉलर 20 टिक्स, तो ये है बॉटम ऑफ द बार। लेट्स सी फेल करता है कि नहीं। अभी प्राइस वहां आएगी, तो ये है रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस। जब प्राइस इधर आएगी ये भी मूव नहीं करेंगे, ये भी मूव नहीं करेंगे, लेकिन जब ब्लैक कैंडल बन जाएगी तो वो दोनों भी नीचे टिल्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी, अब आउट ऑफ 4, 1 रिट्रेसमेंट डाइवर्जन, 2 मिड बैंड, 3rd फिब, 4th इक्वल लो। अब जब ऑपोजिट होता है, इक्वल हाई होता है और रेड होता है, सेम जो जब रेड में होगा ये स्टिल फिब ग्रीन है, यहाँ पर फिब रेड होगा, और आखिरी चीज़ है इसको हम कहेंगे इक्वल हाई। 4 ट्रेड्स एनी गिवन टाइम। अभी गोल्ड में बॉटम ऑफ द बार है, ES इतना धक्का स्टार्ट है कि उसके अंदर फ्यूल नहीं है, फटाफट मार्केट स्विच करके मैं गोल्ड में चला गया, शायद गोल्ड से कुछ मिल जाए, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, अभी गोल्ड में से भी किसी ने पल्स निकाल लिया, 0 ट्रेड है आज मेरा, मैंने है ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा। देखें ये पिक हो गया, $10 बने, ये बॉटम, कोई नीचे आई प्राइस नहीं आई, $30 बन गए, 3 टिक्स मुझे मिल गया, $50 बन गए, $120 बन गए, $90 बन गए, फुल गोल्ड खेल रहा हूँ, 9 बनेंगे बाय द वे, $60। इस ट्रेड को मैं कामयाब कहता हूँ, ठीक है। ये पहला ट्रेड था इस रिस्क का, बॉटम ऑफ द बार, ये पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा किसी ने अब रिस्क लेना है ना, वो मिड पे आ जाएगा। ए देखिए आपको 10 टिक्स मिल गए हैं, दैट्स मोर देन एनफ, ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए ट्रेड लगाया था कि मेरा पहला, ये पूरी आपको कैंडल मिली है सर, पूरी कैंडल मिली है, तो मैं आपको जो ट्रेड लगवाऊंगा कंप्यूटर पे लगा के दिखा के कि ये रिट्रेसमेंट डाइवर्जन है। ये देखिए प्राइस नीचे आई, बीबीज नीचे नहीं आई, स्ट्रेंथ नीचे नहीं आई, हेंस रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस। 30-20 का सबसे अच्छा होता है, 30-20 का सबसे पहला था, सक्सेसफुल ट्रेड है, 1 out of 1।
$9 बनाए या 90 बनाए, MGC में भी प्लीज एक ही रखिएगा, उधड़ जाता है आपको, एक ही उधड़ जाएगा। सिर्फ MES में आपको 2 अलाउड है या 3 अलाउड है। MGC देखें, या ये अभी वो रिट्रेसमेंट डाइवर्जन वाला पूरा ट्रेड उसने मुझे पूरे 10 टिक्स दिखाए थे। 20 टिक्स का मतलब है $20 मिलेगा, तो ये पूरी कैंडल $20 की थी। लेट्स सी, आपने अब खोला कंप्यूटर, इस वक्त आपकी आई ने कहा भाई रिट्रेसमेंट डाइवर्जन डन हो चुकी है, मैं अगला रिस्क ले सकता हूं। तो सिर्फ न्यूज देखें, चार्ट को स्कैन कर लें आंखों से, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जहां आपको विक नजर आ गई वो आपकी रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंसी, आपको पता था कि हो चुका है। हाँ, द मोर यू विल वेट द बेटर, राइट। आपको अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी पता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता इसने और ऊपर कितना जाना है। ये पता होता मैं गुर्दे बेच के बैठता ट्रेड के अंदर कि भाई लगा दो, सब लगा दो, ऑल इन। मैं कहा भाई यहाँ तक नहीं, यहाँ पता है, देखें ये ऊपर गई, ये आपके पूरा देखे गई। अब मैंने कंप्यूटर इस वक्त खोला और मैंने देखा कौन सा ट्रेड बन सकता है। राफे ऑलरेडी इस स्विंग में तेरा एक रिट्रेसमेंट डाइवर्जन हो चुका है। अभी कहते यार ओके, अब मैं मिड पे लेता हूँ, क्योंकि एक लेग में आ चुका कई दफा। अब ये दूसरा मिड का ट्रेड आया, मैं एक टिक नीचे लगाया, यहां से ये लगा दी, क्योंकि यहां चांसेस हैं कि रिट्रेसमेंट डाइवर्जन फेल कर दे, स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, तो मैं मिड पे आ गया हूं। बाय द वे ये सेकंड रिट्रेसमेंट डाइवर्जन चल रही है, कोई बीबीज नीचे नहीं आई, कोई ट्रेंथ नहीं आई, राइट। ये सेकंड है, लेट्स सी इफ इट passes और नॉट, आई एम स्टिल वेटिंग। 3.75 का स्टॉप लॉस होता है, ए अभी पिक करेगा, ये अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगा इस ट्रेड के अंदर। लाइव मार्केट है, लाइव रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस चल रही है। इससे पहले भी बनी थी, मेरे चार्ट पे बनी नहीं। GC या MGC होगा। अच्छा एक सेकेंड, दिसंबर, ओके मैं फिर पिक हो गया और डन हो गया मेरा ट्रेड। फिर $9 इस ट्रेड में से बन गए, क्योंकि मैंने रिस्क रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस से मिड बैंड पे ले आया था। ग्रीन जा रहा हूं अभी भी, स्टॉप लॉस लगा हुआ है इन केस मिड बैंड फेल हो जाए। ये मेरा अब नहीं, अब अगर अब आपने खोला है तो देखिए, आप ट्रेड के अंदर तो अगला ट्रेड नहीं ना लेंगे, पहले या रिट्रेसमेंट डाइवर्जन को फेल होने दें या मिड को। अब मैंने यहाँ पर $90 या एक टिक देख लिया था, लेट्स सी, राइट। आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ द ट्रेड। अब आपने कंप्यूटर खोला है, अब आपको सिर्फ 2 ट्रेड नजर आ रहे हैं। मैं बॉटम ऑफ द फिब जाके बैठ जाऊं या इक्वल लो पे जाके बैठ जाऊं। अभी तक ये मिड बैंड है, पहला मिड बैंड है 30-20 का, तो इसको जाना चाहिए, लेट्स सी, नो प्रॉब्लम। अभी भी मैं ग्रीन में हूं, 2 टिक्स ग्रीन में है। स्टॉप लॉस इसका 5 पॉइंट का होता है, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस उठा के नीचे ला रहा हूं, क्योंकि डिफॉल्ट 3.75 का लगा हुआ था। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहां पर बंद हो जाएगा। अभी तक जब तक स्टॉप लॉस नहीं है आप ट्रेड में मैक्सिमम रह सकते हैं। यस, हाँ हाँ, मे बी, या तो जब तक मुझे पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं उसको मैन्युअली भी क्लोज करती हूँ। 100%। देखिए मैं आपको बताऊं, हर ब्लैक कैंडल के बाद फिब आता है। ये फिब तो हर दफा आना है, रिगार्डलेस वो नीचे जाए ना जाए, राइट। इस ट्रेड में अगर आपने जल्दी बंद कर दिया तो बाद में फोमो हो सकता है, ओ माय गॉड मैंने तो सिर्फ 2 टिक लिए थे, बंद कर दिया, 120 बन गए, मैंने 30 लिया। आपके माइंड ने आपके साथ ये करना है, स्टॉप लॉस लगा के ना तो उठ जाए, उसको देखना छोड़ दें, आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे। मेरा माइंड कह रहा है कि यार ऊपर जाना चाहिए, आपने सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट देखा। तो होता ये है, आपने 1 पॉइंट लिया ES में मिड से और अगले ही ट्रेड में 5 वापस कर दिए। आपने इकट्ठा ही सिर्फ 1 किया था, तो आप नेट डेफिसिट में हो। मेरी कोशिश होती है कि जितने ज्यादा पॉइंट, मुझे ऑलरेडी माइंड को पता है कि 5 पॉइंट का लॉस लेना है, ये मेरा मैक्सिमम है। मैं ओशन में ड्राउन नहीं होऊंगा, गौते 2-3 आ जाएंगे, बट लेकिन अगर ये मेरे फेवर में चला गया तो मेरे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप देखो, ठीक है, आपको
अगर पैनिक है कि लार्ज ट्रिगर्स ट्विस्ट हो रहे हैं, आप ले सकते हो। आप थोड़ा सा ये असेसमेंट पे होता है कि थोड़ी सी स्विंग बढ़ी है, इसमें 40 ही बहुत है। तो आइडिया इसके उसमें मुझे पूरा मिला, आपने 120 भी देखे, आपने 30, आप कहते हो नहीं जी मैं बंद कर देता हूँ, मैं चलो इसमें स्टॉप लॉस नहीं लेता, इतने ही बंद है, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया बंद। जैसे ही आपने बंद किया, आपको नहीं, वो भाग गई जी प्राइस, और आप कहते हैं यार ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने छोटा सा टिपी लिया था वो प्राइस भाग गई ऊपर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपने इस कंडीशन में प्राइस, लेकिन कई दफ़ा आपने इतना ही लिया तो आपके फेवर में, आपने कहा गुड जॉब, मैंने एटलीस्ट इतने तो पकड़ लिए, राइट। अब मेरा ट्रेड सिर्फ रह गया फिब का और इक्वल लोस का। अभी ये वाला मिड का ट्रेड खत्म नहीं हुआ, पता क्या, मैंने तो बंद कर दिया लेकिन फिब नहीं खत्म, मिड नहीं खत्म हुआ, क्योंकि जब तक या इसके अंदर आ जाए और कलर हो जाए या ऊपर वापस जाए, तो मेरा अभी मिड का ट्रेड खत्म नहीं हुआ। कहाँ खत्म होगा अब देखिए, लेट्स सी, या मैं अर्ली निकल गया या मैं लकी था, राइट। क्राई करेंगे लेकिन गुड क्राई होगा कि भाई मैं जल्दी निकल गया, इस मैंने 120 देखे, अभी भी ऊपर ही जा रही है, तो लेट्स सी। 5 पॉइंट्स 20 मिनिमम, ताकि आप गेन में 5 तो पकड़ें मिनिमम, और अगर आपने स्टॉप लॉस लेना है तो 5 से ज्यादा नहीं। अब अगली स्ट्रैटेजी है यहां बॉटम पे। अब आपने कंप्यूटर इस वक्त खोला, आपके माइंड ने कहा रिट्रेसमेंट डाइवर्जन हो गई, ओके मुझे नजर नहीं आ रही, ओ चलो एक नजर आ गई, मिड बैंड आया, एक ये भी हो गया, अब मेरे पास क्या रह गया, फिब रह गया, इक्वल लो रह गया। अभी मैं मिड बैंड के ट्रेड में अगर हूं तो हूं, नहीं हूं तो आई एम स्टिल वेयरिंग। नहीं, वो जाती है फिर वापस आ जाती है, जाती है फिर वापस, नहीं किस चार्ट पे, 4 दफा आए हैं, मैंने कि इतनी दफा टॉप ऑफ द बार चला है, सो मीनिंग के इट मींस जस्ट देयर इज नो वॉल्यूम, प्राइस जाती है फिर गिर गया फिर, तो लेट्स सी। अभी तक मैं मिड बैंड के ट्रेड में बैठा हूं, तो लेट्स सी, ठीक है, पहला मिड बैंड, पहला रिट्रेस डाइवर्जेंस इज द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट एक्यूरेट। आपने 30 लिए, वो इस वक्त 140 पे घूम रही है प्राइस, लेट्स सी। और जैसे ही अगर ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड बन गई, वो कई दफ़ा भाग जाती है और आपने कहा ओ माय गॉड, तो आप गई जी ट्रेड ही, तो मिड बैंड ट्रेड हो गया ना। तो आप ये कहते हो यार मैंने यहाँ लिए थे 2 पॉइंट, अगले में मैंने 6 वापस कर दिए, यार आप कोशिश करके पहले में मैक्सिमम पकड़ो ना, और कई दफ़ा पहला ही ट्रेड सारा निकल जाता है, तो ट्रेलिंग वो देखिए जाती जा रही है, जाती, आपका मिड बैंड ट्रेड कितना पावरफुल हो गया। उस वक्त आप पैनिक कर रहे थे, माइंड आपके साथ ये गेम खेलेगा कि 30 आ गए थे राफे, 120 वापस ना देने पड़ जाए, 30 तो पकड़ लेना, आपने 30 पकड़े, वो 140 150 160 पे चली गई। आपका माइंड ये कहना चाहिए मैक्सिमम तो उन्हें 3.5 पॉइंट देने हैं या 5 देने हैं, बाकी देखा जाएगा। जिस दिन आपने इसको फिक्स कर दिया कि मेरे स्टॉप लॉसेस फिक्स्ड हैं, मेरा टीपीस खुला हुआ है, आपको ट्रेलिंग में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपको कहोगे यार मुझे राइड करने का, वेव लेने का मज़ा आ रहा है। तो वो क्या बेस्ट पॉइंट है, सर ट्रेल करते रहो, आपको पीछे खोलो बड़ा टीपी, मैं 20 40 पॉइंट का खोल लेता हूँ, नीचे से अपना स्टॉप लॉस मूव करते रहो। सर देखें आपके फिब खत्म हो गए, अब आपके पास फिर एक ऑप्शन है, मैं आगे क्या करता हूं। अब आपने देख चुके हैं ये एक ही लेग लॉन्ग की कंटिन्यू हो रही है, मिड भी हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो भी चुकी है, लेकिन अब मेरा माइंड ये कह रहा है राफे नीचे ट्रू डाइवर्जेंस बन रही है, स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही, वो देखे नीचे स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही, मैं मिड भी छोड़ दूंगा, मैं इस ट्रेड में मिड भी छोड़ दूंगा, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन भी जितनी आती हैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये 3rd 4th 5th अटेम्प्ट है ना उसकी नीचे उतरने की, और ये ना हो कि वो उतर जाए और मुझे साथ ही ले जाए। चलें जी, इस ट्रेड में अगर मुझे लेना पड़े
और बहुत ही ट्रेड लेना पड़े तो वेट करें, जाने दें स्ट्रेंथ को। वो देखें वही मिड बैंड आपका एक ही अच्छा मिड बैंड चल गया, एक ही अच्छा रिट्रेसमेंट डाइवर्जन चल गई, तो यू आर मेकिंग यू नो lots of it. No worries. Let's see. I would prefer something, an interesting trade here. This is for experienced traders. This is called a breakout trade. Day 1 में मैं नहीं सिखाता, मैं ये सिखाता हूँ कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना वो क्या करेगा, इस नंबर का वेट करके तो साथ चला जाएगा, सेल करेगा। मैंने क्या कहा अपने माइंड को, राफे तूने एक डाइवर्जन भी देख लिया है, एक मिड भी देख लिया है, नीचे डाइवर्जन भी बन रही है, क्या ट्रेड खेलना है? तो मैं ये कह रहा हूं इस प्राइस को तोड़ देना तो मुझे साथ ले जाए। इस ट्रेड को हम कहते हैं सेल स्टॉप बाय स्टॉप। तो मैंने जाके लगाया इसके नीचे कि जैसे ही ये क्रॉस करे सेलिंग में मैं चला जाऊं, क्योंकि डाइवर्जन रिट्रेस में भी हो चुकी है, डाइवर्जन भी लग रही है और मिड बैंड भी हो चुका है। मैं अब यहाँ कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक दफ़ा इस प्राइस को तोड़ गया ना, जो मेरी पिछली मिड बैंड की प्राइस थी, तो मैं साथ जाना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस हाई ज़रा 6-8 महीने साल वाला ट्रेड होता है ये, आप ज़रा जब आप ब्रेकआउट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ नीचे, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक, तो आप सिम में जाएं, ये ट्रेड लगाएं सेल स्टॉप का। सेल स्टॉप क्या है? सेलिंग ही होगी, लेकिन इस प्राइस के बाद अभी सेलिंग कहां से हो सकती है? ऊपर से या करंट प्राइस पे। मैं सेलिंग में जाना चाहता हूं, लेकिन जब तक 4481 नहीं टूटता मैं नहीं जाना चाहता। नो, लेकिन मैं इस प्राइस से पहले आना नहीं चाहता ना, इस प्राइस से पहले ट्रेड के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं अब वेट कर रहा हूं। करंट प्राइस क्या चल रही है? ये वाइट लाइन। मैं बाय भी नहीं करना चाहता, मिड बैंड नहीं लेना चाहता, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन नहीं लेना चाहता, फिब नहीं लेना चाहता, लेकिन जाना मैं सेलिंग में। लेकिन सेलिंग में कब करूं? जब तक इस लाइन को तोड़ेगी नहीं। मैं ये चाह रहा हूं, मेरे एक देखें ऑब्जेक्टिव है, गेम प्लान है, मैंने क्या करना है। बाय करना है, बॉटम ऑफ द बार बाय करें, बाय करना है मिड बैंड पे बाय करें। मैं बाइंग करना ही नहीं चाहता। क्यों? मैंने ऑलरेडी मिड भी देख लिया, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन भी है, चांसेस आर ये फेल हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो मैं इस वक्त चाहता हूं, चांसेस आर अभी तक नहीं लगा, ये एक और रिट्रेसमेंट डाइवर्जन यहाँ आ गई है, प्राइस नीचे नहीं आई, इस बार में भी रिट्रेसमेंट डाइवर्जन आई है, लेकिन लेट्स सी। So based on my analysis, based on my experience, based on my eye, I'm like, I want to sell, but until it breaks this line. This is called equal low. ये equal high है, ये equal low है, कि जब तक पिछला लो ना टूटे इस स्विंग का, मैं नीचे नहीं उतरना चाहता। एक टिक पीछे, एक टिक नीचे लगा लें कि उसको, लेकिन सेल स्टॉप लगाएंगे। ये गोल्ड का ट्रेड हो रहा है 30-20 पे, सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए। गोल्ड जरा ES से तेज चल रही है, तो मैं गोल्ड में आ गया हूँ, सिखाने भी है ना कॉन्सेप्ट। तो आपकी आई बतानी चाहिए कि कौन सा ट्रेड लेना है। आपकी आई कह रही है रिट्रेसमेंट डाइवर्जन। देखें मैंने अभी कंप्यूटर खोला है और मैं देखता हूं कि मैंने क्या करना है। अब आप अब एडवांस ट्रेडर हो गए ना, अब देखते हो यार ऑलरेडी रिट्रेसमेंट डाइवर्जन हो चुकी है, ऑलरेडी एक मिड बैंड हो चुका है, ऑलरेडी मैं डाइवर्जन में बैठा हूं, तो मैं सेल में जाना चाहता हूं। लेकिन मैं उस वक्त तक सेल में नहीं जाऊंगा ना जब तक मेरा बैकग्राउंड नीचे नहीं होगा। तो मैं क्यों ना अपने सेल को ज़रा सेफ रखूं और इस नंबर के बाद सेलिंग शुरू करूंगा। तो ये आपको साथ साथ एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है कि किस पॉइंट पे सेल लिमिट लगाना है, किस पे सेल स्टॉप नहीं हुआ। ये दूसरा मिड बैंड टेस्ट हो रहा है, ये इस लेग में पहला मिड बैंड और ये दूसरा मिड बैंड टेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने रिट्रेसमेंट डाइवर्जन भी छोड़ दी क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो सकता था।
मैंने मिड बैंड भी छोड़ दिया। पॉसिबल है कि वो मिड से मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट दिए हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिए। मैं जाऊंगा सेलिंग में ब्रेकआउट के बाद। ये ब्रेक कर जाए इसको, इस प्राइस को ना गई तो मेरा ऑर्डर ही लगा हुआ है ना, क्या हो जाएगा? नहीं, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। तो मुझे शोर शॉर्ट ट्रेड चाहिए होते हैं, अदरवाइज आप घबराते रहोगे, क्योंकि गेम प्लान चेंज करना होता है चेस मूव की तरह। अपोनेंट ने ये मूव की, आपने ये मूव की, अपोनेंट ने ये किया, आपने ये किया, अपोनेंट ने ये किया, अपोनेंट ने ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट डाइवर्जन कर चुका है, अपोनेंट मिड बैंड कर चुका है, अपोनेंट सेकंड मिड बैंड को पास कर रहा है। तो मैंने कहा भाई अब मेरी सिर्फ बेस्ट मूव ये है कि आई विल गो इनटू सेलिंग। बाय द वे सेकंड मिड बैंड गिव यू सम पॉइंट्स फ्रॉम द मिड बैंड, इट्स ओके। ये फिर ऊपर जा सकती है प्राइस, तो वहां रिस्क उतना ही है। मिड बैंड का रिस्क 5 पॉइंट है, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन का पॉइंट 3 है। आप हर लेते रहोगे, पास भी है फेल भी है, लेकिन लेट्स सी। ये आपको बताया डाइवर्जन की लाइन लग गई थी, क्यों? इन एडवांस देख लिया था, स्ट्रेंथ ऊपर नहीं गई तो डाइवर्जन लगी हुई है। देखिए ये चीजें आप ना बार 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 देख के ना 1000 दफा देखेंगे ना, आपकी आई पिक कर लेगी कि यहाँ मिड बैंड जरा रिस्की है, क्योंकि मैंने कहा स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही, बीबीज ऊपर नहीं गई, भाई यहाँ डाइवर्जन है, ये ना हो मेरा 30-20 का चार्ट नीचे तोड़ता चला है, राइट? तो लेट्स सी, बट आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि अगर इसने 81 तोड़ गया ना, तो फिर मुझे ये बड़ी स्विंग दे जाएगी। दैट्स आई एम होपिंग, लेट्स सी। We just sit and wait for the move to market has to put a move, then I will put a move. I will go attach a life jacket. I put, which is my stop loss, just in case I go here, it touches, goes back up. यहाँ मैं क्या होप कर रहा हूँ कि प्राइस इसको तोड़े और नीचे ही चलती जाए, राइट? सो ट्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त तक जब तक मेरा ट्रेंड इस्टेब्लिश ना हो जाए। सेल स्टॉप, देखिए है डिफरेंस है, सेल लिमिट ऊपर लगती है, सेल लिमिट ऊपर लगती है और यहाँ लगेगी सेल लिमिट, लेकिन प्राइस से नीचे लगती है सेल स्टॉप। करंट प्राइस से नीचे लगता है सेल स्टॉप। होगा सर मुझे, क्योंकि उसकी अगली से अगली मूव का भी पॉसिबल है, तो वी आई विल सेट इन द ट्रेड। डाइवर्जेंस है, इसको एटलीस्ट मीनिंग 78 तक तो आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये देखें सर, देखें प्राइस अगर ये 85 है, ये 85 की स्ट्रेंथ है, ये है 86 तो बड़ा है, मेरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं ऊपर गई? तो डाइवर्जन नीचे की तरफ है, और अगर 30-20 पे डाइवर्जन है तो मैं साथ जा रहा हूं और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। तो ये डाइवर्जन का ट्रेड लिया है मैंने, पहले मिड लेता हूं फिर डाइवर्जन। अब देखें, लेट्स सी, इट नीड्स टू ब्रेक दिस। नहीं स्टॉप नहीं है इसका मतलब, इसका नाम है सेल स्टॉप, कि मुझे सेलिंग यहां से शुरू करो, ये वर्ड का नाम है सेल स्टॉप, स्टॉप लॉस नहीं है ये। देखिए मार्केट तो मैं अभी दबा दूंगा ना, तो जो भी करंट प्राइस है मिल जाएगी, तो मार्केट सेल तो फॉरेन सेलिंग शुरू कर देगा, लेकिन मैं ग्रीन ट्रेंड में हूं, मैं नहीं जाना चाहता सेलिंग में। तो मैं जाना चाहता हूं जरूर सेलिंग में, जब तक इस लाइन को ना तोड़े, इक्वल लो को। तो नो, आ जाए, एक दफा आ गई और कई दफा और सेलिंग तेज होती है, तो लेट्स सी, यहां लोअर लो शुरू हो जाएंगे, बुलिश से बेरिश हो जाएगा और मुझे साथ ले जाएगा और डाइवर्जन कामयाब हो जाएगी, लेट्स सी। लेकिन मैं 81 से पहले नहीं सेल करना चाहता, मैं बैठा हूं, ना आए यहां से वापस चले, फिर से वापस चली जाए, नो। ये ना एक डैश चल रही होती है हर चार्ट में, नहीं खुद लग जाती है। 30-20 में एक लाइन चल रही है इक्वल हाई और लोस की, तो अब देखें ये इक्वल लो को तोड़ता है कि नहीं।
आ रही है, हाँ उसी पॉइंट पे आ रही है कि इस लाइन से नीचे गिरे तो मेरा ट्रेंड तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैं अगली चीज भी कंफर्म करना चाहता हूं कि लोअर लो लगेगा तो मैं जाऊंगा, उससे पहले नहीं। थोड़ा सा एक टिक ऊपर ले आता हूं, कोई बात नहीं, इतना मसला ये चल, लेकिन यहां नहीं हिट होगी, मेरा ट्रेड नहीं पिक होगा, तो ब्रेकआउट ट्रेड में कहलाता है कि इस प्राइस से ऊपर खरीदूंगा, इस प्राइस से नीचे सेल करूंगा। Every time question yourself, what type of trade do I want to take? We give you 12, 15, 30 different types, ऐसे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस का कर्व चला जाता है। स्टार्ट करेंगे मिड बैंड से ट्रेंड के साथ, फिर फिप पे आ गए, फिर बॉटम ऑफ द बार आ गए, फिर एरिया पे आ गए। ये आज आपको ब्रेकआउट एक्सपीरियंस करा दिए, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मेरा ट्रेंड तो चेंज हुआ था, लेकिन एनफ नहीं हुआ था कि यहाँ लोअर लो लिखा आ जाए, लेकिन अभी तक हायर लो लिखा है। तो मेरा अभी जब ट्रेंड जब तक नहीं होता जब तक मैं लोअर लो में ना जाऊं, राइट? सो वेट, लेट्स सी। पेशेंस इज वर्च्यू इन दिस थिंग। जी इक्वल लो बाइंग में, यस। अगर इक्वल लो से निचला शुरू हो जाता है सेलिंग, या एक टिक का ही फर्क पड़ता है, तो आप उस वक्त तक बैठ सकते हैं इधर। लेकिन अगर ये पहली अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो हाँ इक्वल, उस वो स्टॉप लॉस इक्वल लो का इतना छोटा होता है, एक पॉइंट का होता है, क्योंकि एक पॉइंट बाद उसने सेल स्टॉप हो जाए, बाई लोअर लो लगा देता है, राइट? तो वो इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन पहला मिड बैंड, सॉरी पहली रिट्रेस डाइवर्जन, पहला मिड बैंड, पहला फिब और पहला इक्वल लो, फर्स्ट टाइम। अब क्या हो रहा है, अगर मैं बाइंग करता तो इक्वल लो से ऊपर करता, राइट? और मुझे उसने पिक कर लेना था और पॉइंट दे देने थे। क्योंकि ये लेग चल रही है, एक ही तरफ है, इसने अभी तक ट्रेंड स्वैप नहीं हुआ, तो मैं बाइंग कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई इस साइड पे आ जाओ, अब ट्रेंड डाइवर्जन लगी हुई है, मैं बाइंग पे जाता नहीं हूं, मैं सेलिंग पे जाता हूं। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मुझे लोअर लो चाहिए, जब तक लोअर लो नहीं है मैं सेलिंग नहीं कर रहा। आपको डैनियल भाई ने भी यही समझाया है, हर लोअर लो पे सेल करते जाओ, हर हायर हाई से बाय करते जाओ। तो मैंने लोअर लो नहीं है, ट्रेड में बैठा हूं जब तक 15-10 पे आप नहीं उठा सकेंगे। रात को भी जाएंगे ना तो गोल्ड की इतनी शदीद पावर है कि नैस्डैक के बाद गोल्ड है, ईएस फिर स्लो आता है, उसके बाद डाउ आ जाता है, इसके बाद रसल आ जाती है, फिर नेचुरल गैस है। करेंसी में तो आप लोग बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो चलती ही नहीं है, एक एक टिक चलती रहती है। बॉटम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, और उधर रेड का टॉप। लेट्स सी। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर आपका मैं लॉग रखूं, लेट्स से मुझे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आपका ये वीक 2 है, डे 1 है, 6th डे ट्रूली मेरे साथ कुछ नॉलेज बढ़ गया, 7th डे, 8th डे, 9th डे, 30th डे आपको मैं पूछूंगा कि मुझे बताएं यहां कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, तो आप होगा। मैं रीज़न इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्योंकि जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं ना वो वीडियो देखते हैं ना वो कुछ पढ़ के आते हैं, सीधा निंजा में जाके अकाउंट खरीद के कहते हैं पाजी आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ओ भाई आपने कुछ किया ही नहीं, जीव आपने लिया, आप अमीर ज़्यादा थे, आपने लिए लाइसेंस और आपने खरीद ली फरारी, और पहले ही दिन एक्सीडेंट के बाद कहा यार गाड़ी का कसूर है, राइट? सो ये नहीं पता आपको चलानी नहीं आती आपको, इसलिए हम बहुत अब स्लो चल रहे हैं। आ जा भाई नीचे आ जा, मुझे यहाँ के नीचे, अभी ये इक्वल लो वाला ट्रेड है, लेट्स सी
ये भी 100% नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैंने अपना स्मार्टेस्ट रिस्क लिया है इस प्राइस पे। लेट्स सी, लोअर लो का वर्ड शुरू होगा, मैं साथ बैठ जाऊंगा। कम ऑन, आई नीड टू ब्रेक दिस। डाइवर्जन कामयाब हो गई, ट्रेंड चेंज हो गया। हेलो जी, अभी तक इक्वल लो पे बैठी है वो, गोल्ड के 30-20 पे, उसने इक्वल लो को तोड़ा नहीं है। जी जी जी, आपका डे 1 है। यस, सॉरी, नहीं, देखिए, जो है, मेरी बात सुने, जो 6th डे में बैठे हैं ना, वो पहली दफ़ा नहीं ये सुन रहे, वो पिछले हफ्ते सुन चुके हैं, तो आप डे 1 सुन रही हैं। मैं ग्रीन में क्यों जा रहा हूँ? ट्रेड स्मार्टली है, जा रहा हूँ ना, कि गलत ट्रेड तो लिया नहीं है, तो took a good trade, understood what the trade is, एंड मेरे 2-4-5 पॉइंट बन गए, लोअर लो से बन गए, मैंने अपना ग्रीन देखा था, आई कुड हैव क्लोज्ड इट, आई मेड लिटिल बिट ऑफ मनी अराउंड हियर, बट इट्स ओके। अब किसी ने क्या, अब आपने कंप्यूटर खोला, टॉप ऑफ द बार जाके बैठ जाए, सेल करते रहे, लोअर लो से आ रहा है, मेरे चांसेस ज्यादा है, सेल, अब मिड बैंड नीचे की तरफ हो गया, ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आप सेलिंग में आ गए, अपने टॉप ऑफ द बार लगाएं, सेल करें। तो मैंने जो ट्रेड लेने होते हैं, मैं पहले हर का सिर्फ एनालाइज कर लेता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पासिंग, मैं मिड लूँ, मैं फिब लूँ, मैं इक्वल लो लूँ, या मैं ब्रेकआउट लूँ, ये एरिया तो अभी है नहीं है, तो फिर तो इसीलिए 70-80-85% ट्रेड ग्रीन में जाते हैं, क्योंकि मैं रश नहीं करता। सो हम जस्ट, अगर अभी किसी ने गोल्ड में 30-20 में लेना है, टॉप ऑफ द बार जाके बैठ जाए, जाएगा जी, इसको जाना चाहिए। मैं आपको इसका ये भी बता सकता हूं कि इसको कितनी देर तक गिरना चाहिए। अराउंड 78 तक, जब वहां पिछला ट्रेंड बदला था। ये देखें कहां पर मेरा ट्रेंड तकरीबन चेंज हुआ था, अराउंड 78 पे जाके, तो अभी मैं सेल हूं ना। सो किस पे? MNQ गोल्ड पे, या ठीक है, लेकिन अभी ग्रीन है, मैंने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, ग्रीन में गया हूँ, कुछ पॉइंट्स पकड़ लिए, या ये इधर आपने पेस ट्रेड खेला, सेल करें यहाँ से मिड में, और टॉप ऑफ द बार ये खड़ा है, डजंट मैटर, अगर वो ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। रूल क्या है? बेरिश हो, रूल क्या है? लोअर लो से आ रही हो, ये 2 रूल हैं बस, अच्छा। टॉप ऑफ द बार या मिड, टॉप, देखिए यहाँ पहले मिड, एक जगह है ना जहां उन्होंने क्रॉस कर दें, नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये पहला मिड बैंड था, ये दूसरा, अभी सेलिंग में पहला मिड बैंड आया ही नहीं, सेलिंग मीनिंग के सेल में प्राइस ने मिड बैंड को टच नहीं किया, तो सेलिंग में तो मिड आया नहीं है। हमारा ट्रेंड ग्रीन से मजेंटा हुआ ना, तो प्राइस अभी मिड तक नहीं गई, ना ही रिट्रेसमेंट डाइवर्जन हुई है अभी यहाँ, अभी तो ये ब्रेकआउट ट्रेड ही चल रहा है। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इस ट्रेड को करते हैं बंद, आप कौन सा ट्रेड लेंगे? आपने इस वक्त करना क्या है? बाइंग करनी है, सेलिंग? सेलिंग। कहां से सेल करेंगे? मुझे प्राइस दें, यहां जाके सेल लिमिट लगाएंगे ना, लगाएं, अभी लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप कौन से 4 रिस्क ले सकते हैं? टॉप ऑफ द बार या मिड, यही है ना। तो आप कहते हैं यार मैं मिड पे लगाता हूँ, ये मिड की प्राइस है, राइट क्लिक किया, सेल लिमिट लगाया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, बात खत्म। तो दैट्स इट। तो अगर आपने ग्रीन है, अब ये पहला मिड बैंड होगा जब प्राइस रिट्रेस करेगी मिड की तरफ, या पहला टॉप ऑफ द बार होगा। ग्रीन है तो फर्स्ट, जी मीनिंग देखें, ये ऊपर जा रही थी ना, ये पहली दफा प्राइस मिड की तरफ आई, फिर दूसरी दफा प्राइस मिड की तरफ आई, अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ हो गया है। ये पहली दफा प्राइस मिड बैंड पे मेरा ऑर्डर ऑलमोस्ट पिक हो गया था, इट डिड नॉट पिक, पर उसने मिड को टच किया है। तो ये काइंड ऑफ गैप ट्रेड भी बना, बिकॉज देखें रिट्रेसमेंट डाइवर्जन भी साथ ही खड़ी है और मिड भी साथ ही खड़ा है। सो लेट्स सी,
क्या होगा? दो चीजें हैं, ये मेरा मिड बैंड का ऑर्डर लगाओ, मीनिंग के प्राइस टॉप पे तो बाहर गई ना, यहां गई ऊपर, यहां भी नहीं गई, तो रिट्रेसमेंट डाइवर्जन। मिड और रिट्रेसमेंट डाइवर्जन में फर्क यही है कि एक बार के टॉप पे है और एक मिड पे। मिड पे आपको सारी चीज मूव करती नजर आएगी, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन पे ये देखें, अगर रिट्रेसमेंट डाइवर्जन ट्रेड होता मैं डन हो गया हूं ना, मेरा मिड ये ऊपर गया ना ये ऊपर गया। सो आर टी मिड फिब इक्वल लो या ब्रेकआउट, आर टी इक्वल लो, आप साथ साथ टेस्ट करते रहते हैं। मैं अभी आपको बताऊं एडवांस ट्रेडर क्या करता है, कहता है यार ठीक है अभी मैं बाइंग ही करना चाहता हूं, मैं नहीं सेलिंग करना चाहता। आपका ब्रेकआउट ट्रेड ये कहलाएगा, बाय द वे पहले मिड हो जाए, लेट्स सी 1 मिनट। अगर आपने बाइंग करनी है ना, वेट कर लें इसके ऊपर जाने से, यहां पर हायर हाई शूज हो जाएंगे। तो सेलिंग रहती है हायर हाई के नीचे से और बाइंग रहती है लोअर लो के ऊपर से। तो पिक करते हैं, दैट्स इट, आई वुड लाइक टू पिक अप मिडमैन। अब ब्रेकआउट में उसने दिए थे $2 मुझे, और $2 बनते हैं $200 GC में और $20 MGC में, और अगर 2 MGC लगा दिए तो $40 बन गए आपके इसमें, इस ट्रेड में। लेट्स सी, अभी तो मैं मिड बैंड पे बैठा हूं क्योंकि मेरी थ्योरी बता रही है सेलिंग में जाएं भाई, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हर ट्रेड में प्लीज एक ना एक आप वो फिक्स रखें, मैंने कौन सा मेथड पकड़ना है और उसका स्टॉप लॉस क्या है। कुछ ATMs बनी हुई हैं, पिक दैट। सबसे ईजीएस्ट हम आपको मिड कराते हैं, एक ही 20 टिक्स, और इधर कितने का नुकसान होगा? $5 का। अगर गोल्ड में 20 टिक्स आपके अगेंस्ट चली गई है तो आपका स्टॉप लॉस $20 है, तो गोल्ड में $20 है। ये देखें रिट्रेसमेंट डाइवर्जन आपने पकड़ी, मिड मेरा पकड़ा नहीं गया, एक टिक से रह गया, आपका पूरा का पूरा ट्रेड खत्म हो चुका है ग्रीन में। हर चीज आपके पूरी कैंडल में लिया यार। रैंडम ना एंटर हो, फॉर गॉड सेक रैंडमली एंटर ना हो। रैंडमली एंटर होंगे 50% है और दुआएं हैं। और ये बात मैं कहता हूँ, हो जाओ मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, एंड बल्कि वहीं बैठ के ट्रेड किया करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह करीब है ना आपसे, तो वहीं चले जाओ, खाना भी मिल जाएगा, लंगर भी मिल जाएगा, खर्चा भी कम होगा, वाईफाई भी अच्छा होगा और अल्लाह भी करीब है। जिसने जो बहुत मक्का मदीना जाके ट्रेड करो, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। अगर अल्लाह को लाना ही है दरमियान में तो वहाँ चले जाओ, आपके आर्ट्स बढ़ जाएंगे, अल्लाह करीब है ना वहाँ पर। भाई ट्रेड अच्छा डालो, फिर दुआ करो यार मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मैं ट्रेड डालता हूँ, इट्स ओके, नो वरीज। ये रिट्रेसमेंट डाइवर्जन ये मैंने छोड़ दी थी बिकॉज ये डाइवर्जेंस के बाद आ रही थी। ये वाली पहली रिट्रेसमेंट डाइवर्जन हो गई है आपकी ट्रेंड डाउन में। अब अगला ट्रेड क्या बनता है? अगर बनता भी है तो मेरा मिड बनेगा, ये बन गया मिड, ये मिड की लाइन जा रही है, यहाँ जाके मैंने अपना लक दिया और अब मैं देखूंगा कि क्या होगा। तो सेलिंग टॉप ऑफ द बार, सेलिंग मिड बैंड, सेलिंग फिब, सेलिंग इक्वल हाई। एक हो चुका, ये दूसरा होगा ना अगर, लेकिन अभी तक जब तक इधर जाता नहीं है वो कंसिडर नहीं होगा। तो अभी तक क्योंकि वो बॉटम पे खड़ा है ना, आई मीन ये वाइट लाइन जब तक ये अभी टॉप ऑफ द बार पे खड़ी है, तो लेट्स सी 78 तक आया ऑलमोस्ट, वेयर आई हैड ए प्रेडिक्शन कि उसको वहां तक जाना चाहिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना इसको, ऑनेस्टली वो अनटेंगल होता जाएगा आपका चार्ट्स कि यार ये कैसे क्यों हो रहा है। जी जी, मैंने सिर्फ देखा था कि प्राइस पीछे जाके कहाँ तक, किस प्राइस पे स्विच हुई थी, सिर्फ पीछे वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट नो नीड कि एक आप होता है ना कि कितने पॉइंट इसमें से आ सकते हैं, एक रफ। हेलो जी, क्या चले? अभी जो गुस्सा चढ़ रहा है MNQ पे, S1 की तरफ भी नहीं जा रही, R1 की तरफ भी नहीं जा रही, तो चुप करके बैठे हैं। तो कसम है जी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया अपने अकाउंट पे और ना ही आपके अकाउंट पे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हेलो जी, और ये इसकी हालत देखिए वहीं पर फंसी हुई है।
क्या जी 150 बेटर चलेगा, लेकिन मैं अभी रेकमेंड नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि पहला बैच उसने 50,000 दिया, एआई ने 2 दफ़ा तबाह किया, उसका थ्रेशोल्ड बहुत छोटा है, ठीक है। मैंने उनसे ये कहा यार मुझे अभी 150 पे हाथ सीधा करने दो, क्योंकि हर चीज़ अप्रूव्ड है इस वक्त, बाय 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 सब अप्रूव्ड है, और सेल अप्रूव्ड है। पीछे पीछे तक ये हो रहा था कि अब इधर जाओ, इस कंप्यूटर पे जाओ, ये देखें 2 कंप्यूटर बने हुए हैं, ये वाडा का बना हुआ है, ये मेरा बना हुआ है। अब मैंने अपने, ये मेरा चार्ट है, इसको मैं इधर दिखाता हूँ, इधर गया, इधर ये मेरा पर्सनल सेटअप है। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, 1 मिनट MNQ, 15 मिनट MNQ, 30 मिनट MNQ, 60, ये MNQ है। अब पहले ये होता है कि यहाँ मेरे लूसिड लगे हुए हैं, यहाँ 5 क्वांटिटी लगी हुई है, तो यहाँ ट्रेड डालो, फिर दूसरी स्क्रीन पे जाओ, ये आ गई दूसरी वाडा की स्क्रीन, ये उनका सिस्टम है। मैंने पहले कहा मेरे तो सारे चार्ट कॉपी करो उधर, वही किया दोबारा, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। अब यहाँ पर मेरा जी मिड बैंड का ऑर्डर फिल हो गया, वेट करें, लेट्स सी गोल्ड में डज इट गिव मी एनीथिंग, विल फाइंड आउट। स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है। सो अब ये है कि बहुत सारों ने 50,000 वाले लिए हुए हैं, जिसके अंदर आपका वो है थ्रेश होल्ड सिर्फ 1000 है। मैं ज़रा हाथ सीधा कर लूँ, फिर मैं 5 लॉट से जाऊँगा, और जाऊँगा वही वाले ट्रेड जब तक मैं वो होता नहीं है। इस मिड बैंड में मेरा भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, तो मैं ऑलमोस्ट 2 टिक्स बिलो हूँ, 20 टिक्स या $200 पे है। मैंने लगाया नहीं, ATM नहीं खोली थी, तो मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड ये है, बाय स्टॉप, ये मेरा बाय स्टॉप। यहाँ तक $200 या $20 हो जाएंगे। आपने अर्ली बंद करना हो आप अर्ली कर लो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो अगर आपके अब गोल्ड सेल करना है तो या फिब से सेल करें या इक्वल हाई से सेल करें। तो अगर ये वाला ट्रेड कंटिन्यू रखना है रखें, ये यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा जाके, तो फिब का ट्रेड ये होगा, इक्वल हाई का ट्रेड ये होगा, सेम जो बॉटम वाली चीज थी या टॉप वाली। तो या आपने टॉप ऑफ द बार सेट करना है यहाँ, या मिड या फिब या इक्वल हाई। इक्वल हाई सेल 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 सेल, क्योंकि वो जब तक इक्वल हाई पे नहीं जाएगा आपका स्टॉप हायर हाई नहीं शुरू होगा। अब वो फिब वाला हो चुका है, फिब के अंदर से गया था, एक टेक से मिस हो गया। अगर आपने अभी भी सेलिंग करनी है, ये एज इक्वल हाई और लो में ये फायदा होता है कि वो सबसे कम स्टॉप लॉस है, मीनिंग कि वो पिछले हाई से एक टिक नीचे और आपका स्टॉप लॉस है वेरी लो। तो अभी मिड बैंड वाला ट्रेड ऑफिशियली फेल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेंड चेंज हो सकता है। यू कैन एग्जिट एज लेस पॉसिबल, कि मेरा ग्रीन से वो हो चुका है, मेजेंटा से ग्रीन हो चुका है। यस, तो आज बिल्कुल ये नैस्डैक में स्कैल्पिंग भी नहीं हो पा रही, इतनी डिले मार्केट है। इससे वो 1 मिनट के मिड के ऊपर ही खेली जा रही है पूरा दिन, और हाई एंड लोज क्या चल, हाँ 60-40 पे। they went, sorry, positive negative, तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड किया ना, लेकिन 60-40 में, या तो 5 पॉइंट लिए निकल गए नीचे से, वो स्कैल्प, लेकिन उसके बाद वो भी वॉल्यूम खत्म हो गया।
हाँ नहीं नहीं वो देता है, लेकिन हमने आपको एक फिक्स दी हुई है ना, आप ऑब्जर्व करते रहें कि जहां आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने ओवरबॉट देखा इतनी दफा एंड इतनी दफा मुझे 10 पॉइंट मिल गए और इतनी पता 5 पॉइंट मिल गए। 5 तो मिल रहे हैं ना, हमने आपका 5 का हाथ सीधा कराना है। 5 के बाद 10, फिर 12, फिर आप कहते हो यार मैं स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता, एटीएम भी नहीं लगाता, विजुअली देख लेता हूँ कितने और क्लोज दबा दूंगा। तो मार्केट सेल क्लोज, मार्केट बाय क्लोज, बहुत स्लिप हो गई तो क्लोज कर दिया। आप देखिए मैं, आप कहते हो यार 130 हो गया है, आई कैंट हैंडल दिस एनी मोर, इवन दो इट्स माई स्टॉप लॉस के करीब है, आई विल क्लोज दिस, आई विल ट्राई टू रिकवर इट डिफरेंटली। वो तो वीडियो गेम की तरह चल रही है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, राइट? सो 60-40 में So 30 points है, टीपी स्टॉप लॉस 30 है, टीपी 5 है एमएनक्यू पे। यस एमएनक्यू। नहीं नहीं, मार्केट डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट। एमएनक्यू में 30 का स्टॉप लॉस है, 5 का टीपी है, यहां पर सब कुछ 5 है। आपने किया मिड बैंड का ट्रेड, नहीं फेल हुआ। अभी मैं मिड बैंड पे ब्रेक इवन पे हूँ, अगर मैं मिड बैंड पे अभी भी बैठा होता मैं ब्रेक इवन पे निकल रहा हूँ। अभी तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, मैं जीरो पे खड़ा हूँ। यहाँ पर था ना मिड बैंड, यहाँ से एंटर था, तो मैं जीरो। इट डिड नॉट हिट माय स्टॉप लॉस बट इट स्टिल इट गोइंग इन माय फेवर। सो मिड बैंड का 5, एमएनक्यू का 30 से ऊपर ना जाने दें। अगर आप ओवरबॉट कर गए हो और वो स्ट्रेच ही होती जाती है, वो कई दफ़ा 100 पे ऐसे चलती जाएगी, राइट? देन यू आर लाइक 100 हो गया, 70, 100, या आप एक एवरेज कर लो। आपने 1 से स्टार्ट किया, ओवरबॉट कर ली और हो गई, आपने एक और सेल करके निकल आए बुरे ट्रेड से। वो डॉलर कॉस्ट एवरेज वाला ट्रेड है। तो भाई किसी S1 160 से भी नीचे नहीं आई, तो 265 से 156। कोई बात नहीं, सब्र दे जाएगा, कुछ ना कुछ दे जाएगा। कुछ ज्यादा ही स्मूथ डे है आज। सुबह था ना स्मूथ डे होगा, अब जान ही नहीं है किसी भी प्राइस के अंदर। जी जी, जूम सुपर एरियस में जाएंगे, जूम पे क्लिक करेंगे और शुरू हो जाएगा। और सैटरडे इन पर्सन है, सैटरडे इन पर्सन। इधर नहीं, दूसरे ऑफिस में, 1575 ट्रिनिटी ड्राइव, 7 minutes from here with traffic 15। केड़ी वाली? हाँ सर, जूम ते जा रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। क्लिक करो, हुणे जाओ सुपर एरिया, लॉग इन करो, नो प्रॉब्लम। सब रिकॉर्ड हो रहा है, जूम पे आ रहे हैं। सुपर एरियाज में लॉग इन करें, जूम पे क्लिक करें। सर और की करना की है, शौक है ना तो
It's okay. No, it's just honestly I cannot perform anything. इसके बाद आसान जॉब पता क्या मेरे लिए ये आसान है ना, मैं पिज़्ज़ा ही डिलीवर कर सकता हूँ। मैंने नहीं मेरी सुने ना, वहाँ से उठाना है किसी को दे आना है, तो थिंकिंग नहीं है ना। उसके दरमियान में मैंने जॉब्स बड़ी की हैं, मैनेज किए हैं। प्रॉपर्टी बिल्डिंग में हमारी एक बिल्डिंग है, उधर 21 अपार्टमेंट हैं, 7 हैं, खाली पड़ी है। वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, ईरान ने एक धमाका किया, बिल्डिंग खाली हो गई। फिर कोई इंडोर स्पोर्ट्स फ्लेक्स खोला, वो स्ट्रेसफुल मुझे लगते हैं। इसमें यार भाई बैठ जाओ और बात कमेंट्री कर रहा हूँ ना मैं, लेकिन कर रहा हूँ तो नहीं, अभी पता लग जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। मिड बैंड ट्रेड फेल नहीं हुआ, वो चलता गया नीचे, स्टॉप लॉस नहीं लगा इस मिड बैंड ट्रेड पे। सर ऐसी बात है, कोई इतना है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। अभी वो देखें मिड बैंड का ट्रेड था, लोअर हाई लगा, लोअर लो लग गया। फेवरेट मार्केट तो नैस्डैक ही है, बट देयर इज नो नथिंग इज आएगी कोई बना दो। न्यूयॉर्क सेशन नहीं तो आफ्टरनून नहीं तो इवनिंग नहीं तो कहीं ना कहीं से पैसे ले आएंगे हम इन तेज आना चाहिए। हाँ नहीं, अभी डाइवर्जन बन रही है, तो आप से अगला मिड बैंड ना लीजिएगा। यहाँ से है, यहाँ से ऑफ कोर्स अगर आपने रीसेल करना है तो इस ब्रेकआउट से लंच कर सकते हैं सेल स्टॉप। लेकिन जो मोर रिस्क टू रिवार्ड का ट्रेड है ना, वो टॉप ऑफ द बार है, क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस छोटा है। आप ब्रेकआउट ट्रेड में घुस तो गए, लेकिन वहां से स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, लेकिन उसने वहां जाके आपको बिठाना है ट्रेड में। तो लेट्स सी, ये ब्रेकआउट ट्रेड लगा तो देते हैं। राइट क्लिक किया और आपने कहा अगर अगले लोअर लो के करीब राइट क्लिक किया, सेल स्टॉप लगा दिया कि ब्रेकआउट हो तो मुझे साथ ले जाए। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड 60-40 में अच्छे चलते हैं नैस्डैक में। हर स्वाप जल्दी हो रहा है ना, ग्रीन रेड हो रहा है। सो अभी लोअर लो लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। आपके इस लेग में एक डाइवर्जन भी हो चुकी है और एक मिड भी हो चुका है, तो अभी आपका लोअर लो न गएगा। 1 सेकंड में जैसे ही उसने पिछला लो तोड़ा, लोअर लो शुरू हो जाएंगे। तो सेलिंग में मुझे इसलिए ब्रेकआउट अच्छे लगते हैं कि एक दफा वॉल्यूम आ गया ना सेलिंग का, तो वो लोग इस वक्त देख रहे हैं ना, सारी दुनिया देख रही है सेल हो रहा है, प्राइस नीचे गिर रही है। अगर एक झटका आ गया सेल का तो मुझे साथ जल्दी ले जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड सेलिंग वाले अच्छे होते हैं। जो नैस्डैक वाले बैठे हैं, आप बता दें यार, मैं आपका ट्रेड कर लेता हूँ, मुझे ऐसा था। ठीक है, मैं अभी तो वही चीज देख रहा हूँ ना जो आप देख रहे हो। तो सर मैं लॉन्ग वास्ते ज़्यादा नहीं है, 385 ते सेल करांगे। 385 आए ना निंजा का पिवट। हाँ नीचे अगर वो फिब बॉक्स वहीं खड़े हैं, 100 पे खड़े हैं, 100 पे 100 पे हिट एंड रन करेंगे। और अब मेरा क्योंकि माइंड प्रोग्राम हुआ है एक हफ्ता नहीं, पिछले हज़ारों हफ्तों से 100 का भी नंबर ना मेरा डाउट, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले 100 चढ़ते हुए रेजिस्टेंस थी, 50, 145, 180, 250, अब उतर रही है, तो अब उसने एक्ट होना है सपोर्ट के तौर पे। तो 158 पिवट तो है, लेकिन सर नीचे ही आए, फिब लें 105 से 110 तक, ठीक है जी। 60 मिनट का 105 से 30 तक, 110 तक सही है सपोर्ट। सुपर एरिया ने चैट करो, वो ऐड कर देंगे। हाँ उन्होंने लोअर करा दिया ना, उन्होंने कहा कि मेरा सर हाई भी चल रहा है, मेरा जो हाई तक जो मैंने पता कितने बैठा है 8.1.6,
मेरे को 1.7 है। हाँ वो अगर जो चल रहा है उसको यूज करें। डैनियल भाई जाएंगे लाइव जूम प्लॉटिंग वो ऑन कर देंगे। सबसे स्मूथ चल रहा है 8.1.6 रेप्लिकेंटों के साथ भी और तंग नहीं करता। वन 56 भी तोड़ा नहीं उसने अभी तक। इक्वल लो गिरा, वो बाइंग थी ना, फिर बाइंग नहीं बाइंग नहीं बनती मेरी, वो इक्वल लो को तोड़ा ही नहीं उसने अभी, क्योंकि ये सेलिंग वाला ट्रेड था या मिड या फिब या एमएमजीसी में मैं देख रहा हूँ ना कि अभी अभी तो सेकंड टाइम मिड बैंड पे गई है इस लेग में, सेकंड टाइम टॉप ऑफ द बार, सेकंड टाइम मिड बैंड। अच्छा अच्छा, जीसे ने नहीं बनाया, एमजीसी का डबल बॉटम पूरा, तो डबल टॉप भी अच्छा चलती है, तो इक्वल टॉप इक्वल हाइज इक्वल बॉटम, तो मैं एक टिक नीचे लगाता हूं। स्टॉप लॉस की कॉन्फ़िगर अंदर से पक्का पूछ के आऊं, सर्टन थिंग्स कि आपको देना कितना है, सारों का पता है ना, लेकिन मैं इक्वल हाइज का स्टॉप लॉस पूछ के आया। छोटा जो क्वेश्चन चलो, इक्वल हाई आ रहा है 30-20 का स्टॉप लॉस कितना लाओ, अगर इक्वल हाई मीन के नहीं यस थे या गोल्ड गोल्ड 3 पॉइंट बहुत है, क्योंकि अगर इक्वल हाई तोड़ गया तो हायर हाई बनेगा, तो अगर इक्वल लो तोड़ गया तो स्टॉप लॉस 3 पॉइंट ते एक टिक उत्ते या एक टिक थले, ठीक है। हाँ जी बैठो बैठो, मैं हुणी करवा देना है ना, बनवा देने हैं, नो प्रॉब्लम, हर चीज, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, अभी बनाए, अभी 30 सेकंड लगते हैं चार्ट बनाने में। बेसिकली आप एक ईएस को मिक्स ना कीजिएगा, सारे एमएनक्यू न्यू वर्क स्पेस बना दें। उनसे पूछ के आया, वो कह रहे हैं जो भी इक्वल हाई और लो लेना 3 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस ना रखें, एक टिक पहले एंटर करना है, मीनिंग ये इक्वल हाई है ना, मैंने यहां से सेल करना है, अगर क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ है, यहां से मैं सेल करूंगा ना, तो मेरा टीपी स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट, क्योंकि इक्वल हाई से वो डबल टॉप बनाएगा और डबल टॉप के ऊपर चला गया तो आप निकल गए हो, और अगर इक्वल लो लेना है तो आपने स्टॉप लॉस लेना है सेम 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इक्वल हाइज। तो अब हम दोबारा जाते हैं रिट्रेसमेंट डाइवर्जन के, अगर हम सारे स्टॉप लॉसेस लिख दें हर ट्रेड के, ईएस की बात है, सो एटीएम बना सकते हैं। सो अगर आपने इस तरह लिखना है चार्ट मार्केट स्टॉप लॉस टीपी एंड टाइप, ये आपके रियली आपका वो लेजर बन जाएगा कि मार्केट अगर आती है ईएस एंड एमईएस सेम ही चलेगा जी। चार्ट अगर मैं 30-20 पे पहले फोकस कर लेता हूं, फिर 15-10 पे आ जाते हैं। 30-20 का चार्ट है, आपने करना है रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस कि टॉप ऑफ द बार सेलिंग और बॉटम ऑफ द बार बाइंग। तो टाइप ऑफ मेथड या टाइप
मेरा चार्ट, मेरी मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस है 3.75 15, एटलीस्ट 520 रखें। जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स गैदर करें ना मार्केट में। RTD, retracement divergent 30-20, ES+MES 3.75 और 15 टिक्स, और TP 5 पॉइंट्स या 20 टिक्स। मिड बैंड 30-20, ES+MES 520 520, रीजनेबल ट्रेड। रीजन ये 15-10 में मैं बाद में लिखूंगा सारे। अच्छा, एक्चुअली दोनों के सेम ही है, उसमें फ़र्क नहीं। मिड बैंड 30-20, ES 5 TP 20 टिक्स का, 5 TP 20 टिक्स का। अब आप आगे इसी में अगर आप बाइंग है या सेलिंग है, तीसरा सेटअप बनेगा आपका फिब 30-20, मार्केट ES+MES, स्टॉप लॉस 3 या 12, एंड आपका आ रहा है जी 1 से 2 कर सकते हैं। आई विल पुट 1 मिल जाता है, एक पॉइंट जनरली आपको आ जाता है इस नारे। और आखिरी है इक्वल हाई इक्वल लो, वो जो डैश लाइनें जा रही हैं हायर हाई का और हायर लो का। 30-20, मार्केट ES+MES, स्टॉप लॉस 3 12, और TP आप जैसे 8 का लगा लो, 2.8 का, 3 15, उस तरह लगा लो। तो ये हैं आपके टिपिकल TPs, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। लुकिंग एट द चार्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट पहली दफ़ा, फिर आपका फिब आ जाएगा, वो तो हर दफ़ा ही आ जाता है हर ब्लैक कैंडल के पास, और इक्वल हाई इक्वल लोज। ये 4 टाइप ऑफ ट्रेड्स आ रहे हैं आपके उसके बाद 30-20 में। अगर इसको 15-10 करना है तो मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन 15-10, मार्केट दिस। तो आप लेते हो 1.75 का, क्योंकि 1.75 के बाद आपकी कैंडल रिवर्स हो जाती है दूसरी साइड पे। 1.75 टाइम्स 4, 7 टिक्स। शुड आई डू, एक सेकेंड, 10 टिक्स की पूरी कैंडल है, बॉटम ऑफ द कैंडल आ गई, एक सेकेंड, 8.75, 4.75 टाइम्स 2, 8.75 minus times 4 minus 10, 25 divided by 4. Okay, मैं 1.75 is reason, मैं आपको कम से कम दे रहा हूँ जस्ट इन केस मैं कंफर्म कर लूँ मैथ का इसके अंदर कि 15-10 की बॉटम ऑफ द बार कैंडल इज 10 plus 19, it's a 19 divided by 4.7, 19 टिक्स पे बन रही है, तो 9 divided by 4, 2.25, देखिए 19 टिक्स पे बन रही है ना, तो 19 टिक्स 9 divided by 4, so 2.25, sorry, not 1.75, it is at 2.25 which is 9, और TP आप लगा लें पूरा 2 पॉइंट्स का 8 टिक्स का। तो ये अब हमने बेसिकली चार्ट को भी श्रिंक किया और उसका स्टॉप लॉस। अगर आपने बॉटम ऑफ द बार बैठना है 15-10 में, कैसे बैठेंगे आई डोंट नो, बहुत तेज़ होता है। सो सेम थिंग, मिड बैंड 15-10, ES+MES ये 520 ही चलेगा और आप इसको 520 ही खेलें। फिब में अगर आपने फिब लेना है 15-10 में, इस मार्केट ES है तो आप लो 1 पॉइंट ले लो यार, 2 का स्टॉप लॉस और 1 का TP, बहुत है।
equal high, equal low, 1510, same market, 2 का stop loss and 1 का TP. The more you will practice these type of trades, you can figure out कि अच्छा यार मुझे 5 मिल रहे हैं, मुझे 8 मिल रहे हैं, मैंने बार बार ट्राई किया है. आपको सिखाया क्या जाता है जिनकी क्लास नंबर 1 है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रेड, मिड बैंड, ये वाला ट्रेड आपको सिर्फ सिखाया जाता है जो बिगिनर्स के लिए है. चार्ट खोलें, 1510 का ग्रीन है, बाय करते जाएं. ये है आपका ओरिजिनल ट्रेड. उसके बाद दैट्स इट. अब मैं MNQ पे आ जाता हूँ. अगर लिखना शुरू कर देता हूँ, आप उसकी कॉपी ले लें, भेज दें. एक क्वेश्चन आया, एरिया का क्या है. एरिया में आप खुद देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, फिर SLTP खुद लेते हैं. एरिया के अंदर आपको ज़रा प्यार से जाना है कि ओके मैंने इस नंबर से लेना है. तो जो है NQ, टाइप आपका आ गया 60-40 चार्ट भी नहीं, टाइप आ गया ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, RSI. आपने देख लिया 60-40. आपने मार्केट की MNQ, इसमें तो NQ में बोलता ही नहीं हूँ. स्टॉप लॉस 30, 120 और TP रख लें 5 पॉइंट का. ज़्यादा दे गुड फॉर यू, बट 30 और 5 के दरमियान रखें. ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, आपकी स्ट्रेंथ चली गई है या 99.5 या 0.05 ओवरसोल्ड. ब्लू लाइन नीचे चली गई, रेड ऊपर चली गई. ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड. उसमें और फिब तो है नहीं है, मैं नहीं फिब करवा रहा, यही है. वन मिनट मिड बैंड ट्रेड, 1 minute chart, MNQ, same. Fib, 1 minute chart, MNQ, same. No, NASDAQ में 30 पॉइंट आपके खिलाफ जा चुकी है ना, pray that it comes back. That's it. Meaning कि या एवरेज करेंगे या 30 का मतलब है $60 आप उड़ा चुके हो लाइव ट्रेड में. इक्वल हाई, equal low, same. 1 minute, MNQ, same. So these are the typical like trades for you that you can take. ज़्यादा बड़ा है. देखिए फिब की कॉन्सेप्ट क्या है. अगर आप 1510 देखें या 3020, फिब अपीयर डिसअपीयर होंगे हर ब्लैक कैंडल के बाद. अब 1 मिनट की कैंडल 4 मिनट के बाद फिब दे सकती है, उससे पहले नहीं. अगर उसने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया है, ब्लैक कैंडल आई है, तो फिब नजर आएगा. 30 मिनट का मतलब है कि आपको 2 घंटे बैठ के देखना है कि हर 30 उतर रही है कि नहीं. अब मॉर्निंग से मैं बैठा हूं, 30 और 60 में ग्रीन फिब हट ही नहीं रहे, राइट? क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ी है. अब आपको 60 मिनट को फिब को हटने के लिए ना 3 घंटे चाहिए. जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होंगे फिब नहीं उठेगा, या इधर रहेगा या उधर रहेगा. है अगर भी हाँ एक ही डायरेक्शन में जाए, अगर वो फंसा रहे तो 3 के क्या 6 घंटे लेता है. हो सकता है. अभी चले ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा 30 मिनट का जो फिब है सुबह से 30,100 पे रहा है.
9:30, 10:30, 11:30, 12:10 हो रहे हैं, प्राइस कहीं डायरेक्शन पिक नहीं कर पा रही, तो फिब सही है, मीन प्राइस गिर ही रही है। लेकिन अगर इसने वापस 30 मिनट ऊपर ले लिया, फिर अगला 30 मिनट और अगला, तो 90 मिनट के बाद फिब की एक प्रोबेबिलिटी है कि फिब स्वैप हो जाए। तो अनटिल आपकी अभी स्विंग नीचे ही, अगर आप वो जो एक लाइन जा रही है ना, वो देखें, वो 180 पॉइंट नीचे आई है, और 30 मिनट में भी 180 और 60 में भी 180। तो जब तक वो जो स्विंग है वो बढ़े वापस नहीं जाएगी, आपके फिब दूसरी साइड पे नहीं आएंगे। तो इस फिब में आपको बैठ, अब क्योंकि 15-10 फॉरन चेंज हो रहा है, तो आपके फिब ग्रीन, फिब ब्लू, ग्रीन रेड आ रहे हैं। तो फिब की पर्टिकुलर, अब 30-20 का फिब उतनी जल्दी आ जाता है। एमएन की बात है, अगर आप 30-20 का सिर्फ फिब देखना शुरू करें ना, वो 1 मिनट में 10 दफा आएगा, सर दुख जाएगा। So this is pretty typical range of what type of trade you will do. Experienced traders जब ये एग्जॉस्ट कर देते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने कहा, मैंने पहला रिट्रेसमेंट डाइवर्जन लिया आपके सामने गोल्ड में, पहला मिड ले लिया, अब मैं फिब के में नहीं चाहिए, और मैं चला, और मैं इक्वल हो लो भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि नीचे गिरे, तो वहां पर मैं ले लूंगा ब्रेकआउट ट्रेड। प्रॉब्लम ब्रेकआउट ट्रेड में लिख इसलिए नहीं रहा, उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। रीजन देखें, क्योंकि आपको अब जब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा ना, आपको ट्रेड के अंदर रहना बैठ सकता है, तो दिस इज ए रिस्कियर ट्रेड, आई एम नॉट पुटिंग इन। आपने लिया ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट लेते ही वापस उड़ गया, तो अब आपका स्टॉप लॉस सबसे हाईएस्ट है ब्रेकआउट में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट भी बन सकता है, और वहां तक तो जाते जाते आपका सारे का सारा। तो ब्रेकआउट ट्रेड में भी आपको ऑब्जर्व करना होता है, वेयर डू आई क्लोज माई ट्रेड। अब 1 मिनट के एमएनक्यू में आपको ब्रेकआउट हम लोगों ने ऐसे पकड़ा है, ये 1 मिनट का बॉक्स है, ये उसका मिड बैंड चल रहा है, प्राइस हाई से मिड पे गई, वापस चली गई, ठीक है। इसने बनाया हायर हाई, यहां गिरी, आपको उसने 5 पॉइंट दे दी, फिर उसने बनाया हायर हाई, वो चांसेस आर के थर्ड के बाद ना वो तोड़ देता है। तो हम अगर ब्रेकआउट लेते हैं, वो थर्ड के बाद लेते हैं, कि अगर पहला हायर हाई आया, छोड़ दिया, मिड लिया, तो ब्रेकआउट्स का मतलब है कि अब इसने पूरी स्पीड से आना है और ब्रेक करके जाना है। सो अगर आप देखें इक्वल हाइज और लोस के, तो हम थर्ड ब्रेकआउट्स लेते हैं, नॉट द फर्स्ट। अब आपका जो, क्योंकि ब्रेकआउट्स भी इतने छोटे हो गए हैं 1 मिनट में, क्योंकि उसमें स्विंग नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन करना ही ज़रा मुश्किल है। सर 1 मिनट का ब्रेकआउट, इक्वल हाइज एंड लोज देखें, वो डैशेस छोटी से छोटी होती जा रही हैं। प्लीज़ डोंट टेक 1 मिनट एमएनक्यू, बहुत जब इतना टाइट है ना, तो वो ब्रेकआउट ट्रेड्स ना लीजिएगा। आ रही है प्राइस, फाइनली 155 आ गई है, सुबह के बाद 12 बजे में फाइनली प्राइस उस रेंज में आ रही है जिसमें हमें चाहिए था। मजेंटा इस वक्त नहीं, टाइम बेस्ड 1 मिनट टाइम बेस्ड। वन 155 से भागी है, तो 1 मिनट का चार्ट ऐसे खोलेंगे, न्यू चार्ट 1 मिनट, हो गया डन। हाँ, कहाँ से लगाएं? 50, 150 पे बाइंग, 100 पे करें, ये तोड़ दी जाएगी फिब को रिस्पेक्ट करने के लिए। देखें यहाँ पर रिस्क अगर ज्यादा है ना, है ये 150 3 दिन पहले का R2 था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 150 ब्रेक ना कर जाए,
तो इसलिए 60 मिनट का फिब है और 30 मिनट का फिब पड़ा है, तो आप अगर लेना ही है रिस्क तो 110 से चले जाओ यार, मीनिंग कि बहुत अर्ली रिस्क है ना, तो 150। अब होगा ये, या आपका रिस्क काम आएगा और मेरा फेल हो जाएगा कि मैं बाहर बैठा रह गया, तो आप जरा एग्रेसिव जा रहे हो, मैं कंजर्वेटिव जा रहा हूँ। अब चलो वो हो गया, बहुत ही अर्ली है ना, तो 135 38, क्योंकि वहां निंजा का फिब पड़ा है और निंजा का वो S2 पड़ा हुआ है। लेकिन ये अब 9:30 के बाद ये पहली दफा प्राइस 155 के को तोड़ी है उसने। फाइनली वी हैव ए लो, और आपको पता है मैं शॉर्ट वाला बंदा हूं, तो मैं रेदर यहां से वापस जाके ना 1 मिनट के मिड बैंड पे सेल कर दूंगा। मैं अगर देखिए यहां से स्लिप हुई छोड़ दूंगा, मैंने लेना अगर लिया तो 100 पे सर। ये मैं अगेन आपको ना मैं शेर से बकरी बना दूंगा, याद रखें। ठीक है, जितने शेर आप बन के आएंगे उतने में आपको डराता रहूंगा भाई, क्योंकि आप कहोगे यार ये तो हमेशा ही डराता रहता है, मेरा काम ही यही है यहाँ बैठ के कि आपको कहना ये नहीं करना, राइट, और साथ साथ बताते रहना कि यहाँ से ये किया तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो अर्लीस्ट किसी ने रिस्क लेना है तो 135 130 140 से, लेट किसी ने रिस्क लेना है तो 100 से, और अगर बिल्कुल रिस्क है जी। देखें बात यह है वो फिप पे रुके ही ना, वो कोई गारंटी नहीं है किसी ट्रेड की, लेकिन आप देखें वो फिप के अंदर कई दफा जाती है और तबाह करती जाती है, राइट। तो आपने फिप पे कौन सा नंबर, कौन सा चार्ट है, 60 का फिप 100 पे बन रहा है, 110 पे आप कर लो एंटर बाइंग के लिए। नहीं ठीक है जी। अब जो रेंज है, अब हम ऑफिशियली S1 के अंदर आ गए, क्योंकि वायलेंट है मार्केट नैस्डैक की, सो यू ऑलवेज फूंक फूंक के पांव रखना है। और ये नहीं है कि आज आपका एक ट्रेड अच्छा चला जाएगा तो कल से सुकून आ जाएगा जिंदगी में। यू हैव चोजन दिस करियर पाथ, यू शुड नो कि इश्क का दरिया है, डूब के जाना है, राइट, तो आग में ना, तो ये ऐसी है नैस्डैक 140 में आ गई जी। अब जो बैठा है 150 पे वो सजदे में गिर जाए कि भाई यहां से उठा लो, यही कर सकता है और क्या कर सकता, क्योंकि कुछ बैठेंगे जहां पे 140 पे, देखें वहां पर भी एक पिवट है, तो लेट्स सी। एक 150 वाले तो आ रहे हैं ब्रेक इवन पे, गुड। मंसूर भाई कहते हैं इन माय करियर फर्स्ट डे आई डिड नॉट ट्रेड, अरे डेड डे, डेड। हाँ जी, कैपिटल प्रोटेक्ट करें। यहाँ से नैस्डैक का हाल ये है कि वो कुल्फी वाले रेडी वाले होते हैं ना, जहाँ ढलान आई गिर गई, राइट, तो वो तिलक गई। हम कहते हैं कि जिथे ढलान आई तिलक गई, यहाँ पर यही होता है, जहाँ उसको मौका मिला वो स्लिप हो गई। तो इवन दो कंप्यूटर ने प्रिडिक्ट किया है 150 से 120, इट्स अप टू यू। अब हम ES के S2 में बैठे हैं और नैस्डैक के S1 में बैठे हैं। मेरी पूछे तो मुझे 50 पसंद है, पता क्या एक्सपेक्ट S2 का बॉटम वहां 50 खड़ी है, चढ़ते हुए 50 ने मुझे 40 पॉइंट दिए थे एग्जैक्टली 4 डेज अगो, जब 50 था, 145 था, 180 था ना। आप कहोगे यार अब आप कहते हो 100 फिर कह देते हो 50, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि अब आ गया दूसरा रिस्क एलिमेंट, निंजा का पिवट। आप 140 पे आ गए हो, उसको भी वो तोड़ गई है अप्रोक्सीमेटली। जी जी, इक्वल हाई, हाँ जी, 1510 इक्वल हाई
इक्वल हाई 1510, नहीं नहीं, 2 का स्टॉप लॉस है नीचे, ये MNQ की मार्केट। या चार्ट टेक्स। अब निंजा वाले पिवट थोड़ा सा नीचे गए थे 120 तक, तो लेट्स सी, वो तो अभी तक ग्रीन में है। जो निंजा 140 वाले तो ग्रीन में है। अब 110 वाले बाहर बैठे हैं, कह रहे हैं हमने कुछ लिया ही नहीं। तो हर बंदा नैस्डैक में सोच रहा होता है कि कहां से रिस्क लें तो डूबेंगे नहीं। लेट्स सी, $314 की स्विंग, $214 वापस आ चुकी है, 70% ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। सो लेट्स डू समवेयर अराउंड 110 पे 120 पे देखते हैं कि क्या होता है। भाई 125, 120, 118, S1 का बॉटम है जी, 115। अब यहां पता क्या, एक फोमो क्रिएट हो रहा है, यहां से रिवर्स ना हो जाए। मैं 110 पे बैठा हूं, वो 115 से रिवर्स हो रही है। फिब के अंदर तो आई लेकिन पूरा कवर नहीं किया अभी। 71%, 72% कवर कर गई है प्राइस। अभी देखें, लेट्स सी, अभी टाइम है 1। यार 110 से 105 से जितना वो देखें, ऑब्जर्व करूंगा ना, लंबा दे सकती है, दे तो जाती है, लेकिन अभी 115 से खींच गए हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। 72% उसने 71% पकड़ा है। हमारा फिब होता है 78%। थोड़ी सी और आ जाती तो क्या मौत पड़ जाती इससे, अब क्या करें। अब दूर बैठो तो वो करीब से भाग जाती है, करीब बैठो तो वो आपको ले जाती है, यही तो हम देखें, जो ट्रेंड वाले होते हैं ना, उसमें फिर आपके पास फिक्स नंबर आ जाता है कि मैं मिड पे क्या नंबर है, फिब का क्या नंबर है, इक्वल हाई क्या है। यहाँ पर ना जो एरिया फिब है ना, उसके अंदर चलो 115 वो कहता ले सर 110 ਤੇ बैठा सी मैं जेड़े मैं 55 ਤੇ जाऊं। अगर ये फिब तोड़ गया ना तो थल्ले बैठा है S2 ਤੇ निंजा ਦਾ पिवट बैठा है S3, ਤੁਹਾਨੂੰ या 50 थे 30 है। देखो क्योंकि देखो वॉल्यूम आना है, वो सानू यार 50 देना चाहिए यार, 300 पॉइंट बल्कि ओवर एक्सटेंड हो जाएगा ऑलमोस्ट, 50 तो कुछ देना चाहिए यार, कमान। वैलिड ही है जी, अभी बॉटम भरा नहीं है जी उसने, अभी 115 से भाग गई है, तो 5 पॉइंट नैस्डैक में ना। मैं आपको अभी भी बताऊं, मैं पता कहाँ जा रहा हूं, मैं उठा के ना मिड बैंड 1 मिनट पे खड़ा कर रहा हूं। अगर यहां से भाग गई ना तो वहां तक तो जाके रुकेगी, तो 1 मिनट के मिड बैंड पे वहां से सेल मार दूंगा, क्योंकि अगर 115 से ये वापस चली गई 180 पे तो वो ज्यादा सेफ है ना। देखिए मैं हमेशा इधर से नहीं आ रही ना,
तो ऊपर जाऊंगा और स्विंग का दूसरा हिस्सा ले लूंगा। 110 है सर, फिर पूरा भरना चाहिए। अच्छा, लेट्स से आपको 110 पे रुकती नहीं है, मैं आपको आपने निकलना पता कहाँ है, $200 माइनस पे निकल जाइएगा। पता क्यों? 110 से वो गिरती है और 20 तोड़ गई ना वो आपकी, 20 यू आर गोइंग डाउन नाउ, बिकॉज वो इक्वल लो है पिछली स्विंग का। ये लाइन एक जो 20 वाली है ना, मीनिंग आप 110 पे एंटर तो कर गए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस 20 से नीचे लगाइएगा कि भाई 20 उससे नीचे में मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नैस्डैक को 112 तक तो आएगी थी। लव, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। 110 100 कम ऑन, फिर भर जा। एक 110 उठा रहा हूं मैं अभी बता रहा हूं आपको। 112 से चली गई है। एक है मैंने क्यों भाईजान, मैं डेढ़ दी जाएगी, मैंने पता भी नहीं लग रहा मेरा अकाउंट किधर गया। 1600 पॉइंट मूव हो जाता है। तो गल पता क्या, देखो हूँ 112 ते आ गई सी। अब रिस्क जो है ना वो 50-50 नहीं रहा, मेरी 80% नहीं रहा, वो फिब के देखते हैं, देखें लेट्स सी, यानी 112 तुम टच कर गई है ना, एनालाइज करो तो 110 वाला रिस्क थोड़ा सा रिस्की है। कैपिटल लूज नहीं करना, उठा के 58 पे ले आए। 40 पॉइंट और है ना, बहुत कोई इस तरह देखें, कैपिटल अगर यहां से नैस्डैक स्लाइड हुई तो S3 पे तो जाके रुकेगी ना निंजा के 50। फिब्स को तोड़ लेने दें और उसके बाद एंटर करेंगे S2 के टॉप पे, निंजा के पिवट पे 58 से। ये जो देखें ना 110 लिखा था, 112 से 130 पॉइंट दिए, तो अब ये ना हो कि वो ये इसको फाड़ते। मैं क्विकली उठा लूं, आप इसको जी 50 से 80 के 050, क्योंकि मेरे पॉइंट से बहुत जल्दी चली गई। 050 से 108 4 यहीं से मैं कर रहा हूँ 30,000 80 फिब के। अच्छा 110 वाला अभी ग्रीन है, मैं अभी चले देखते हैं। लेट्स असूम आई डिड एंटर 110 असम्पशन पे है ना, फिब पूरा भरा है उसने। नहीं, मैं सिर्फ देखने के लिए कि अगर आपने 105 और 110 वाला ट्रेड लिया था तो क्या हुआ। 110 वाला अभी ब्रेक इवन पे है और 105 वाला 2 पॉइंट पे। ठीक है, नियाग्रा फॉल के नीचे आके खड़ा होना ना तो मारेगी आपको, वेट कर। मैं कह रहा हूँ फिब से भी तोड़ ताड़ के आ जाए। नहीं, वैसे ये स्पीड कम है, ये बहुत कम है कंपेयर टू, तो मैं अपना रिस्क नीचे ले आया जी 98। हाँ जी, हाँ जी, S2 का टॉप है, वहां पर निंजा का पिवट पड़ा है S3 का, 5 से ज्यादा मिलने। जी जी, आप 30 मिनट पे कितों पे किता जी, ਤੁਸੀਂ 102 ਲਿਆ ਜੀ, 100 ਤੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਕਿ नहीं जी असीम भाई, अब वैलिड नहीं है 110, अब सिर्फ है अगर आपने निकल जाना है 120 पे। ओके, 120 तक ही जाएगा। आपके 5 मिल गए, 7 मिल गए, आप निकल गए, टीपी हिट हो गया। अच्छा थोड़ा सा नो प्रॉब्लम, आपने 100 पे एंटर किया, 105 पे बाहर आ गए, $10 ले लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और सर वो आके गुजर के कि एरिया में आपको थोड़ा सा ना असेस करनी पड़ती है सिचुएशन लाइव।
फिप के बिल्कुल बॉटम से। नो जी नो, नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं। 110 वाले ग्रीन बैठे हैं, 105 वाले प्रॉफिट में हैं, 100 वाले प्रॉफिट में हैं। आपका फिब का पूरा बॉक्स उसने भरा और लिया जी, पूरा 100% पूरा फिब भरा। 10 पॉइंट मिले तकरीबन 100 से, तो बट इट्स ओके, आई डोंट वांट टू जस्ट टेक सम पॉइंट्स। आजा भाई। और ये अगली कैंडल खुलने में रह गए हैं 1:30, 4 मिनट रह गए। मैनुअल ऑर्डर जाके ऑर्डर लाओ, ऑब्जर्व करो। 110 वाले 5 पॉइंट ले गए अभी तक। 110 वाले 5 पॉइंट ले गए अभी तक। इक्वल लो 95। क्योंकि 30 मिनट वाली कैंडल और 15 वाली और वाली 3 मिनट के बाद ना अगली कैंडल ओपन शुरू हो जाएगी। वो बताएगी कि व्हाट डू आई वांट टू डू आई वांट टू गो एंड रीटेस्ट द लोअर वर्जन, और डू मेरा कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है। तो 100 वालों ने 10 से 15 पॉइंट मिले, हिट एंड रन। हमेशा कहता हूँ हमारा हाल मजदूरों के, आज कोई पेंट करवाने नहीं आया कि बैठे मजदूरी हंसते, कोई मछली नहीं पकड़ी। आप लोगों का तो नो प्रॉब्लम जी, पेशेंस नहीं है, फार्मर्स का ज्यादा होता है। एक क्रॉप जो है ना 3 से 6 मंथ लग जाते हैं, और उसके अंदर आपका ड्राउट आ जाए या रेन हो जाए, यू आर गॉन। सो इट्स ओके। सो हमारा बस कैपिटल, क्योंकि इन फास्टेस्ट रिजल्ट सारे होते हैं ना, कि वोटिंग की तरह कि आज ही इलेक्शन का रिजल्ट हो जाना है। सो वी जस्ट हैव टू, हम लोग पिछले टर्म्स में यही कहते थे यहाँ बैठ के कि 2 स्टाइल हैं, या फूड को चेस कर लो या फूड को अपने पास आने दो। तो लेट्स सी, 98 को 95, 130 के ऊपर अगला तोड़ गया जी उसने। 99, 95 सॉरी। Two minutes to the candle open for 30 minutes, and let's see. हैप्पी के लोगों ने 31,100 लिया और बाहर निकले और पैसे कमाए। इट्स ओके, सॉरी मैंने आप लोगों को डरा दिया। 100 पे आई थी, आके 15 पॉइंट देके गई है, 15 पॉइंट देके गई है। जिन्होंने 1 2 3 जिन्होंने रिस्क लिया वो ऑलरेडी डन हो चुके हैं। फिर लग गया। 1 minute to go. All right, 130-minute candle is it green or is it red?
लेट्स सी। अभी तो रेडी है, एक एक्सटेंड चल रहा है आपका 91 118 तक गई थी। अब जरा रेडी हो, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो रहना है, वरना भूखे मर जाएंगे। आज आज कुछ नहीं मिलेगा। 89 आपने 58 पे, ठीक है, मीनिंग के एनीवेयर फ्रॉम 80 से लेकर लाइक सॉरी 60 कर दूं, 30,000 50 और 60 के दरमियान में इसको बाउंस करना चाहिए। वो सेल बनेगी अगर वापस उत्ते गई इथों तो उत्थे सेल बनती है। अगर 60 पे बाय है और 160 पे सेल है, 1 मिनट के मिड बैंड पे सेल और आपका S2 के पर, हाँ 60 पे 1 MNQ से स्टार्ट करूंगा और इसको हमारा इक्वल लो क्या बन गया, ऑलमोस्ट 80% प्राइस वापस आ चुकी है और 20 से नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये गई 60 पे तो ज़्यादा ज़्यादा ये 20 तक जा सकती है, क्योंकि 20 पे मेरी स्विंग शुरू हुई थी इस ऊपर जाने के लिए, राइट, 25 टू बी एग्जैक्ट। तो इट शुडंट ड्रॉप मोर देन दैट। सो हमें अगर बफर जो है ना हमारा रिस्क, वो मेरा ऑर्डर लगा हुआ है इस वक्त 60 पे। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर 20 से 60 से गिरी और 29,000 की तरफ गई, फिर अभी अभी नहीं। विजुअली देख रहा होता हूँ कि भाई अब मेरी बस हो गई है, मैं बंद कर रहा हूँ, राइट। अभी तो 30 मिनट वाली कैंडल ग्रीन जा रही है जी। पीस पॉइंट तो टीपी चल लेना चाहिए ना, अभी भी हम लोग अभी वहां तक। स्टॉप लॉस विजुअली मैं डॉलर पे जाता हूँ, $200 हो गया, एक माइक्रो कर लिया, इस तरह एक एवरेज कर ली। कुछ लिया कुछ? मैं नहीं लिया सर। मैं 50, मैं ट्रूली वेट कर रहे हैं 60 दिन। ठीक है, एक नुकसान ये हो रहा है आप लोगों की वजह से, मैं भी घबरा गया, अपने ट्रेड भी नहीं ले पा रहा के। नहीं, मैं कुछ नहीं नहीं, देखो गल है कि दो है ना, हूँ मेरे पिछे मेरी बस 35 बंदे बैठे ने, उन्होंने दा लगेज भी बने है, मैं ड्राइवर भी है, रोड भी लाइक नॉर्दर्न वाली है। हाँ, मैं करता। तो एक चीज नहीं है, इट्स ए मच मोर। अब क्योंकि मैंने कोई शार्प टर्न ले लिया, सो ठीक है, तो आई विल हैव ए प्रॉब्लम। सो देखो, मैं इस वास्ते ਜਿਹੜਾ आया है ना प्राइस, उत्थे सेफेस्ट एंट्री सी 100, 110 तो 100 तक 10 साल ने 5 पॉइंट लए, ਫਿਬ ਦਾ ਬਾਟਮ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 15-10 ਦਾ ਫਿਬ ਲਈਏ, 30-20 ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਿਬ ਦਾ ਬਾਟਮ ਸੇਫ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ मैंने हैप्पी ने सारे 100 तो लॉन्ग कराया, 110-15 से बाहर करा लिया। इट्स गुड, ओके, लेकिन क्योंकि मैनू सिर्फ जी पिछली स्विंग जितों स्टार्ट हो रही है ना,
There you go, my audio is back. $55 का account of 50K plus 3 days which pass आपके fund में अब गिलास में नहीं किसका फोन आता है बोल रहा है ऑडियो फिक्स हो गई होगी 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 50 month 68 पे आ रहा है सौ वाला 125 पे आ गया. माय गॉड राफे ट्रेड मिस किया. इट्स ओके नो प्रॉब्लम. वेट 180 179. हाँ जी सर डन ही डन है. 4 बजे 5 बजे 6 हैप्पी आ रहे ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ प्लान किया तो वाडा वालों देख लो मेरा भी कोई ट्रेड नहीं है. इट्स ओके. ये नहीं है कि मैंने 500 कमा लिए हैं. सो somebody asked me to explain वाडा again. नो प्रॉब्लम. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिल्कुल. तो आपको वी डैश आ रही है. देखिए इक्वल लो पता क्या है 30,086. 1 मिनट पे जाके देखें वो इक्वल लो है. या वो इक्वल लो है. अगेन वहाँ पर जाएगी डिप होगी. एक टिक ऊपर लगा दो और वहाँ से 5 पॉइंट पकड़ 5 पॉइंट मिल जाते हैं पहली अटेम्प्ट में. दूसरी में वो डिप करेगी बॉल की तरह है ना. डिप किया वापस आई फिर डिप किया वापस आई और तीसरे में वो तोड़ जाएगी. थर्ड में स्टॉप बाय कर लें. सेल स्टॉप कर लें कि भाई अब जा रही है तो आई विल कुछ ना कुछ मिल ही जाता है.
एटलीस्ट आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो ना। लेकिन पहले में वो करना है, पहले में अगेंस्ट द ट्रेंड, दूसरा भी अगेंस्ट, और तीसरे में सेल स्टॉप कर लें। मिड में भी पहला ही सर, हर मिड रिट्रेसमेंट डाइवर्जन हो, मिड हो, फिब हो, पहली अटेम्प्ट। अब जिसने, अब मैंने नहीं ली, हैप्पी ने ले ली, उसने 100 करवाया, सारों को 10-10 पॉइंट करवा के बाहर आ गया, राइट। बॉटम ऑफ द फिब 100 करवाया उसने, ले लिया उसने, अंदर हैप्पी खुश। मुझे कह रहा घर चले, मैं कहा यार मैं तो अभी, मेरी तो, मुझे किसी ने हायर नहीं किया आज मजदूर के तौर, मैं तो बैठा हूँ। वाडा एक्सप्लेन कर दें सर। हुआ ये, आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, हिस्ट्री से शायद आपको अंडरस्टैंड होगा कि हमने कंपनी को कहाँ लेके जाना है, शायद इट मेक सेंस। अब 1 मिनट की कैंडल पे भी नहीं आई, वो मिड से ही थोड़ा सा ट्रेंड, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया उसका, लेकिन फिप पड़ा है उसमें, 1 मिनट का फिप पड़ा है। बिल्कुल सर, होड़ की चाहिए, सही कर रहे हैं। एटीएम ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਯੈਸ। ट्रेडिंग फ्यूचर्स आपने ये कैरियर पे किया है, आपने पे किया, आपने पैसे दिए, रेडियो पे ऐड सुना, किसी से बात सुनी, आपने कहा यार मैं ट्रेडिंग फ्यूचर्स के कैरियर में जाना चाहता हूँ। आप इधर आए, आपने डैनियल भाई का लेक्चर सुना, पहले तो आपको कहीं से आवाज़ आई ना, या किसी दोस्त ने बता दिया, या मार्केट ने, या रेडियो ने, या प्रिंट ने, कहीं से कहीं आपके कानों में ट्रेडिंग की आवाज़ आ गई। आपने कहा ट्रेडिंग फ्यूचर्स। सो पहला आपका स्टेप क्या था, आपने किया सेमिनार, कहीं से पता लग गया। इधर आके आपकी लाइव एग्जांपल लूँगा, आप सारे जो बैठे हो, डैनियल का सेमिनार सुना, आपको एक प्राइस ऑफर हुई कि जी आपका जो प्रोग्राम है $7,000 का है, हम आपको $5,000 में, और मैं इसकी एनालॉजी करूँगा गाड़ी की एग्जांपल के साथ, कि आपको गाड़ी चलानी आई तो आप ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेडिंग, दो ही चीज़ें। हमने कहा यार हम आपको ट्रेडिंग सिखा देते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, आपको सॉफ्टवेयर दे देते हैं, आपको कुछ क्लासेस दे देते हैं, और फिर आप सेल्फ ड्राइविंग मोड में चले जाओगे। बाय सेल, सेल बाय, ES NASDAQ करते 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 आप एक कैरियर आपने बना लिया। अब हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। आपने 5 खर्चे, हमारे पास लीज भी ऑप्शन है, तो हमारी कंपनी के पास एक मॉडल है, आप बाय कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर, एक मॉडल है ये लीज कर सकते हो। फिर हम आपको बाय और लीज के अंदर एक्स्ट्रा एजुकेशन दे सकते हैं थ्रू पेड मेंबरशिप। हैप्पी सिखाता है, कुछ मेंटर सिखाते हैं। अगर आप रेगुलर से एक्स्ट्रा जाना चाहते हो, मैं कुछ सेशंस बन जाते हैं एक्स्ट्रा, लाइक आई डोंट नो, ट्यूशन आप कह दो, जो मर्जी है, बहुत अच्छा है। हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि जिस ब्रेकिंग पॉइंट में आप कहते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट इस कैरियर में इतनी हुई, मेरे से इसमें कामयाबी नहीं हो रही या कुछ गेन नहीं हो रहा, एट व्हाट पॉइंट डू आई क्विट। एक फ़ैसला करना है ना अपने। आपने कहा मैंने 5,000 खर्चे हैं, फिर मैंने 4 मंथ्स का लर्निंग की, फिर लेट्स से कुछ कर लिया, और मैंने $2,000 की अकाउंट भी EAPA ख़राब कर लिए। You're up to $6,000-7,000 and you are like, I don't think this is for me. I need to get it going. आपका ब्रेकिंग पॉइंट शायद 5,000 हो, शायद 8,000 हो, शायद 10,000 हो, या 50,000 है। एक यहाँ है
बहुत अमीर हैं, 10-12 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। कोई है हाँ बिल्कुल स्ट्रगलिंग है, $100 की वैल्यू है, तो इट्स डिफरेंट प्लीज़। तो आपको ये ऑप्शंस में हमने लीज भी दिया हुआ है। अब हमने अपने सर्वे किया है 5 साल का। लास्ट 5 साल में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2600 लोगों को ये सॉफ्टवेयर दिखाया कर करके, 2600 पीपल, और उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 पीपल ने ज्वाइन किया, आगे आए, सब कुछ हुआ। वो देखिए जी, हैप्पी जी, ओह थैंक यू जी, इट्स ऑल हैपनिंग एट द सेम टाइम। सो हमने सर्वे ये किया है कि डिफरेंट लोगों का ब्रेकिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। हम आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचाना चाहते। सो आपने, अब हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, मूविंग इन द टेक्नोलॉजी। मिल गया, अच्छा नो, अच्छा जी, लगा हुआ ट्रेड, ओके, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यू कैन बाय सॉफ्टवेयर, यू कैन लीज सॉफ्टवेयर, यू कैन ब्लो एन अकाउंट। हम आपको सिखाएंगे। आपसे गाड़ी बार बार क्रैश हो रही है, आके पूछो क्यों हो रही है। कुछ लोगों ने, अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट हैं, उन्होंने एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपर किया है जो मेरा सिग्नल आप लोगों तक पहुंचा देगा फॉर ए कॉस्ट। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद सुपर एरियाज, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद विन लाइफ टाइम। एक थर्ड पार्टी है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। वो क्या कह रही है कि राफे का ट्रेड आता है किसी भी मार्केट का, वो हमें दे दो। तो वो अपने, उस कंपनी का नाम है WADA। आप उनके ऑप्शनल मेंबर बन सकते हो। आप कहते हो यार मुझसे ट्रेडिंग नहीं हो रही, मेरे अकाउंट जा रहे हैं, मुझ पर डिसिप्लिन नहीं हो रहा, व्हाटएवर द केस मे बी, यू कैन गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट देम। वो आपके अकाउंट्स को मेरे साथ मिरर कर देंगे। जो ट्रेड मैं लूँगा वो आपका भी लिया जाएगा। मैं बाय करूं आप बाय हो जाओगे, मैं सेल करूं आप सेल हो जाओगे, मैं स्टॉप लॉस लूं आपका स्टॉप लॉस होगा, मैं टीपी लगाऊं आपका टीपी लग जाएगा। हेंस द वर्ड को पायलट। को पायलट है, एक को पायलट का क्या होता है, तो ये आइडिया है, राइट। सो दे चार्ज देयर ओन मनी, आई हैव नथिंग टू, दे पे मी फॉर माई सिग्नल्स। मेरा वो अच्छा, उन्होंने गुड है कि ट्रस्ट किया। मे बी माई सिग्नल्स आर हॉरेबल, योर रिजल्ट्स वुड बी हॉरेबल। अगर मेरे सिग्नल ठीक हैं, तो अभी तक मेरे जो सिग्नल हैं विजुअल हैं, ऑडियो वीडियो के साथ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जी ये नंबर आ रहा है, आप ले लें ये ट्रेड, ठीक है जी। आप अभी क्यू में लगते हो ना, मेरा क्यू भेजते हैं 30,000, हैप्पी ने भेजा 30,100, मैंने नहीं लिया, मैं डर रहा हूँ, मैं वेट करूँगा 60 पे, 60 में नहीं आई, वापस चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक मेरा जो भी राफे करेगा आपको, आप वो मैं अपने सिग्नल जो राफे वाले हैं वो इधर भेज दूंगा, और इसमें एक सब्सक्राइबर हो या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, वो उनके अकाउंट्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन है। उसमें एक फ़ायदा है, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आपका कंप्यूटर ऑन है, आपका कंप्यूटर बंद है, आपका निंजा खुला है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जिधर मर्जी हो, आपका अकाउंट ट्रेड हो जाएगा। दैट्स इट। यू डोंट, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए ट्रेडोवेट का। ये एक सर्विस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आज डे 1 है। पिछले 3 साल से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट मीडियम से, कभी चलती है कभी रुकती है। जी सर, पेड सर्विस है। मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूँ, आप उनको कॉल कर सकते हैं। हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बनाया, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आके बना दिया, उन्होंने इसको एक बनाया है। आप फ़ोन कर सकते हैं जी 416-910-2000, मिस्टर रणबीर। आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं देते, वो कहते हैं, वही कहेंगे कि भाई राफे का ट्रेड ठीक हुआ, ठीक हो जाएगा, राफे ख़राब हुआ तो आप कहना मुझ पर ट्रस्ट करके उनकी सर्विस ले रहे हो, राइट।
एक नंबर और है, अगर इफ़ दे डोंट पिक अप दिस वन, सो WADA 647-458-9232। अब हम ऑप्शंस तीनों लेके जाएंगे मार्केट के अंदर। पहला ऑप्शन, हमसे सॉफ्टवेयर ख़रीद लो, खुद ट्रेड कर लो। दूसरा ऑप्शन, हमसे लीज कर लो, ट्रेड कर लो। तीसरा ऑप्शन, सॉफ्टवेयर को छोड़ो, खाली सिग्नल सुनते रहो, ट्रेडो वेड, वो एक ऑप्शन है। हम इसके क्या बाय चाह रहे हैं? हम इसके ले रहे हैं $7,000 आपसे। इसके कितने लेते हैं? ऑलमोस्ट $700 पर मंथ। एक सर्विस और नीचे है, वो $300 की है। अब आपको एक और सर्विस थ्रू थर्ड पार्टी मिल जाएगी कि भाई कुछ भी नहीं करना। सर दो वाडा आलंद है 416-910-2000। हाँ मिस्टर रणबीर ए भी उन्होंने दोनों 647-458-9232 नंबर है। हियर्स माय डिस्क्लेमर दो, वाडा वाले आपके लिए लाइव अकाउंट लगा दें, आई डोंट नो। वाडा वाले आपके लिए लूसिड लगा दें, आई डोंट नो। वाडा वाले आपके लिए टेक प्रॉफिट लगा दें, आई डोंट गेट टू सी योर अकाउंट, आई हैव नो एक्सेस टू योर अकाउंट, आई डोंट। मेरा काम है सिग्नल भेजना, उनका काम है सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करना। आप उनसे कहो यार मैंने लाइव लगाना है, वो आपका और उनका मामला है। आपको मैं कितने अकाउंट लगा सकता हूँ, वो आपको बताएंगे कि आप 40 अकाउंट लगा दो हमारी तरफ से। उनकी एक फ़ीस है, वो आपसे कमीशन नहीं लेते। आप लेट्स से मेरा एक पे आउट आता है 1000 का, मेरा तो आएगा ना, आपका भी आ जाएगा, ठीक है। आप कहते हो यार कि क्या मैंने वाडा वालों को 1000 में से कुछ देना? नहीं, वो अपनी एक सिग्नल करेक्ट हो या आपने रेप्लिकेंटो का नाम सुना है? वो क्या करता है, एक लीडर है, एक फॉलोअर है। लीडर गलत हुआ, फॉलोअर गलत हो जाएंगे, लीडर ठीक हुआ, फॉलोअर ठीक हो जाएंगे। इन लोगों ने रेप्लिकेंटो का कॉन्सेप्ट क्लाउड पे डाल दिया। लीडर खराब हो, अब लीडर है कोई, राफे लीडर है, हैप्पी लीडर है, जतन लीडर है, आप लीडर हो, लीडर डिफाइन कर दिया और सिग्नल मैप कर दिए सब्सक्राइबर के साथ। अब अगर लीडर ख़राब है तो सब्सक्राइबर ख़राब है। तो मेरी ये कोशिश नहीं है आपके अकाउंट जाएं, इसलिए अब मैंने थोड़े और ध्यान से ट्रेड लेने हैं कि wherever I am comfortable, right? So that's the idea। आपके कितने अकाउंट हैं, आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपका लाइव का है, प्रॉप फर्म है, I get to see nothing। I only see जब मैं क्लिक करूँगा पूरी दुनिया के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनका ट्रेड खुद हो जाएगा। क्योंकि जब हमने मार्केट के अंदर रिसर्च की, बहुत बड़ी ऐसी कौम है या आवाम है जो कहती है भाई किसी तरह पैसे बनवा दो। यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं यार मैं अकाउंट लेता हूँ, ब्लो हो जाता है, फिर अकाउंट लेता हूँ। तो दिस सर्विस इज़ टू हेल्प गैम्बलर्स जो सीधे नहीं हो रहे। दिस सर्विस इज़ टू हेल्प दोज हु आर स्केयर्ड टू ट्रेड और दे कैन नॉट पास एन अकाउंट। तीसरा है उनके लिए जो कहते हैं यार कोई हेडेक नहीं चाहिए, ना मैंने सॉफ्टवेयर ख़रीदना है, ना मैंने सीखना है, मेरे किसी तरह पैसे बन जाए। आओ ठीक है, साथ जुड़ जाओ, मैं अगर चलाऊंगा तो बस में बैठ जाओ। सो ये सर्विस हमने लॉन्च की है, आज इसका डे 1 है। ये सर्विस मैं 4 मंथ से टेस्ट कर रहा हूँ, 4 मंथ से। प्यारी इतनी ज़बरदस्त सर्विस है, मैंने बहुत दफ़ा इधर ट्राई किया है कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँ, आपको मिड बैंड बता दूँ। होता क्या है, आपका निंजा नहीं ऑन, मेरा निंजा नहीं ऑन, आपका ये नहीं ऑन, में तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो फाइनली वी सेड नाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ मिररिंग मी। हाँ है, मेरे पास फुल है। हाँ जी। सो द हाँ ऑफ कोर्स तो आप देखें, मैंने मार्केट कैप्चर करनी है ना। आप एक सर्कल लगाओ ट्रेडिंग की, मार्केट का बिजनेस मॉडल के हिसाब से 100% का ये सर्कल है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि 10 से 12 से 15% ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया आप लोगों की तरह। पूरी दुनिया ने तो नहीं ले लिया ना, हर 7 बिलियन है। उसके बाद चलो कुछ ऐसी मार्केट है 15% की जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, वो सॉफ्टवेयर लीज कर लेते हैं। लीज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, एक शेड ऐसा है जो चाहता है कि यार सिर्फ सिग्नल मिल जाए।
70, 80, 90% लोग मार्केट में ऐसे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं भाई हमारा कोई अकाउंट ट्रेड कर दें। सिंपल सी बात है, हमारे पास कैपिटल है फंडेड का, तो हमारा कोई अकाउंट ट्रेड कर दे। तो उनको ज़ीरो एफर्ट चाहिए, कुछ बाय नहीं करना, कुछ सेल नहीं करना, 7 अकाउंट जोड़ते जाएं, उनको पैसे दे दें। अगर आपको अच्छा लगता है गुड, नहीं अब देखिए मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है ऑनेस्टली, आप मेरे कैरियर का ये डमेस्ट मूव है। सिंपल, आप देखें बहुत आसान है सिखाना और कर्टन के पीछे अपना ट्रेड करना। मैं दिखाता कुछ हूँ, सुनाता कुछ हूँ। आज ये क्लियर है। देखिए मेरी एक रेपुटेशन है ना, डैनियल भाई की रेपुटेशन है, हैप्पी की है, माजिद भाई की है, कि हम लोग कह रहे हैं मिड बैंड रिट्रेस डाइवर्जन। अभी आपको सिखा रहे हैं, आप कहते हैं यार ये अच्छा इंस्ट्रक्टर है, इसके करने से मुझे समझ आ रही है। मैं शायद गाड़ी डिफरेंट तरीके से चला रहा हूँ, एग्रेसिव चला रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, पे आउट्स आ रहे हैं। हैप्पी डिफरेंट तरीके से चला रहा है, सब कुछ। आज मैंने ये फैसला किया है कि अब जो मैं कर रहा हूँ ना, वो आप तक पहुँच सकता है इस थ्रू वाडा कंपनी के थ्रू। उसमें यह है कि अगर मैंने ट्रेड लिया तो आपने लिया, मैंने नहीं लिया तो नहीं। अब मैं गलत ट्रेड लेके ये नहीं कह सकता यार मेरे तो पे आउट आ रहे हैं, आपके पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, ये कहोगे यार मेक सेंस नहीं करती। तो डमेस्ट मूव ये है कि मैं अपनी रेप्यूटेशन, फाइनेंशियल नहीं है, देखें आपके पैसे नहीं बने, आप वाडा को पैसे देना छोड़ दोगे, ख़त्म हो जाओगे, आपको कोई ये सर्विस मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ट्रेड कर लेता हूँ। कैरियर वाइज डमस्ट इसलिए है या बेस्ट, दोनों में कोई 0-1 वाला काम है। या आई विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज द डमस्ट पर्सन टू रिस्क देयर करियर, कि भाई ये अपना एक्सपोज करने जा रहा है। या बेस्ट, क्योंकि अगर इस 30-40-50 लोगों के पे आउट्स आ जाते हैं तो मुझे आसान है ना भाई, आओ जो ट्रेड मैं करता हूँ। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन टू बी इन। जो भी कर्टन के पीछे हो रहा था, अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरे भी यही पे आउट्स हैं। और एक फ़ायदा ये है, आपको कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, आपको निंजा भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अकाउंट लो, उनको भेज दो, आपके कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज हमने ऑफिशियली अब शुरू कर दी। सो दिस इज़ व्हाट ए वारा सिस्टम इज, स्टैंड्स फॉर वी ऑल डिजर्व अमेजिंग। आई डिडंट कम अप विद द नेम, I didn't come up with the software, I just basically did copy my trade. So I don't know, you can call them, I don't know what kind of promotion they're running at the beginning. ये कॉल दो रणबीर जी हैं, और एक्चुअली इनका ये नाम है मिस्टर एंड मिसेस संजय। You can call them, they will get you on board. There's no refunds, भाई अकाउंट ब्लो होते हैं, यानी ये कोई आपको गारंटी वारंटी नहीं दे रहा, वो सिर्फ ये कह रहे हैं यार जो भी राफे ट्रेड करेगा आपका ट्रेड हो जाएगा। आप उनको लाइव देते हो, प्रॉप देते हो, वो बेसिकली उन्होंने मेरे पास, देखिए मेरी भी तो मैं, हाँ लेकिन वो मुझे कहाँ से पैसे मिल जाते हैं, उन्होंने लम सम में कहा भाई आप ट्रेड अच्छे करो या बुरे करो, ये आपकी तनख्वाह है, हमने आपका माउस लेना है। देखिए वो मैं, आपने जहाँ क्लिक करना है, अब मुझे क्लिक भी ज़रा ध्यान से करना है कि गलत क्लिक हो गया तो इट विल बी अ डिज़ास्टर, राइट। सो दिस इज़ द सर्विस एंड इफ़ वी विन, मैं कह रहा हूँ बेस्ट मूव ये है, मैं पूरी दुनिया में जाके कह सकता हूँ भाईजान छोड़ें ट्रेडिंग, अकाउंट लें, मुझे दे दें या वाडा को दे दें। वो तो हमने इसको अपने पैकेज का हिस्सा बना लिया है। आप खुद ट्रेड कर लें, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको अब सब पता है, मूविंग एवरेज, डाइवर्जन, बाय सेल, आप लीज पे कर लो, आप इसको जूम पे सुन लो। अब फाइनली पीस ऑफ द पजल था कॉपी ट्रेडिंग, वो भी हम भी इंट्रोड्यूस कर दिए। हाँ जी, नहीं टेस्ट पास होगा, सारे फंडेड पे पहले आएंगे, पहले आपका ईए किया जाएगा, फिर आपका पीए किया जाएगा। 40 लगा दें मेरी तरह, नहीं, उन्होंने वन टाइम, आप एक अकाउंट दो 40 दो, उन्होंने एक फिक्स अमाउंट रखी हुई है, उन्होंने सिग्नल 40 पे भेज देना है, गलत सिग्नल हो सही सिग्नल हो, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अकाउंट्स लेके वाडा को यूज़र नेम पासवर्ड दे दें, वो आपको सेटअप कर देंगे, आपसे कहेंगे आप बेशक सो जाओ, आपका अकाउंट ट्रेड होगा, सब कुछ उनका है। देखें आपको उन्होंने अकाउंट लेना है ना, तो आपको अकाउंट लेके जो भी है आपने पैसे कमाए,
पास उस वक्त होगा ना जब एक थ्रेशोल्ड पहुंचेगा, पास आप खुद कर सकते। आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव का अकाउंट ये अच्छा, ये आपको वाडा वाले बताएंगे। अच्छा, उनको कॉल करनी है, हमें कहना है एक हमने अकाउंट, हाँ, तो वो आप राफे सर के साथ अटैच, बस वो कर देंगे। तो वो हमसे कहेंगे कि आप $100 यूएस दे दें। नहीं, मुझे ये नहीं पता हाउ मच दे, या हाँ ठीक है ठीक है। वो कहेंगे कि $100 आप यूएस दे दें, हम भी बाय करेंगे, हम भी उसको सारी सब कुछ वही करेंगे, और फिर हम अटैच कर देंगे राफे सर। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद बस प्रॉफिट एंड लॉस हमें वो अपना कमीशन रखेंगे, व्हाटएवर। कमीशन नहीं है, देखें एक फीस नहीं, फीस है कम। देखें कमीशन किस तरह चलता है, आपने 1000 का पे आउट लिया और आपने उसमें 200 उनको दे दिया, ऐसे नहीं चलता। आपका प्रॉफिट $1,00,000 हो या नेगेटिव $1,00,000 हो, उन्होंने अपना पैसे लेने। उन्होंने एक सर्विस बनाई है सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन की, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस बनाई है बस। तो उसके बाद आपने 82 तक तो आ गई है ये, गेटिंग देयर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है जी। इक्वल लो 25 पे पड़ा है, लेट्स सी। S2 का बॉटम है, आ रही है जी। मैं 60 पे, तो इस पे जो फंडेड में प्रॉफिट है वो भी हमारा आप ही का है। देखें मैं चले एक एग्जांपल देते हैं, मैं कंपनी उठाता हूँ ब्लू स्काई के नाम से, वो आपको एक रेकमेंड करेंगे ये कंपनी खरीदें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उनका लूसिड के साथ नहीं है, एपेक्स के साथ नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सो अब आपके पास आ गया एक अकाउंट, आपने एक अकाउंट लिया और आपने उनको लगा दिया ना। अब पहले EA है या PA है मुझे नहीं पता, मैंने 100 का ट्रेड लेना है, आपके 100 बन जाने हैं। मैंने 200 का ट्रेड लेना, आपके 200 बन जाने हैं। मैंने 200 का स्टॉप लॉस लेना, आपका 200 का स्टॉप लॉस हो जाना है। मैंने अपने स्टाइल से ट्रेडिंग करनी है, आपने उसको अपने स्टाइल से बस देखते जाना है। नहीं, देखें इसको, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसका स्टाइल कैसा है ना। तो जैसे आप टेस्ट कर रहे हो पिछले टाइम से, हाँ, व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग रफली? देखिए मैं चले एक ना मैथ करते हैं, मैं चले एक नंबर लिखते हैं, हाईएस्ट प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस, राइट। सो मैं ये देखता हूँ कि मैंने उनके साथ मैथ किया है ना कि एक इंसान कितने पैसे लगाएगा और कितने वापस आ सकते हैं, क्योंकि आप सारे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हो ना। यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट लगाते हो कि आपने लगाए पैसे $5,000, फिर आपने 1-2 हज़ार के अकाउंट लिया। अब आप चाहते हो कहीं ना कहीं तो इनकम शुरू हो ना। मैं अकाउंट ही बाय सेल बाय इनफ सीख लिया, लर्न कर लिया, अब अर्निंग की भी बात आए तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट आपकी पे बताएगा। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देने लगा हूँ कि लेट्स सपोज ये $500 चार्ज करते हैं पर मंथ, एक एग्जांपल है, ठीक है। मैंने उनकी वेबसाइट पढ़ी है, 500 से कम कोई आपको थप्पड़ भी नहीं मारता आजकल। मैं बता रहा हूँ, वो की कहते हैं भाई पैसे लगते हैं, एनर्जी कैलोरीज लगते हैं थप्पड़ मारने में, 500 से कम नहीं मारूंगा। आपसे उनकी कमिटमेंट होगी 3 मंथ्स की, $1,500 पे जा रही है बात। आपने इन्वेस्ट किए, उनको दे दी, फीस दे दी। अब आपने अकाउंट्स खरीदे, लेट्स से 5 अकाउंट, एक एग्जांपल है। एक अकाउंट आता है $60 का और आपने 5 अकाउंट लेके कॉपियर के साथ आपने उसको लगा दिया। $60 का अकाउंट है, $50,000 का, 2,000 का बफर है, अकाउंट लगा दिए। आज है जी अगस्त 17। अब आपके अब कोई पैसे नहीं लगने। सितंबर 17, अक्टूबर 17, नवंबर 17। अगर उन्होंने आपसे पैसे मांगने हैं तो नवंबर में जाके मांगेंगे ना कि यार, और आप कहोगे यार ये मैंने नहीं करना, या आप कहोगे यार मुझे नहीं पसंद आया, मैं खुद की ट्रेडिंग बेटर कर लेता हूँ या बैठ के। इस अकाउंट का टारगेट क्या है? आपने इसमें से $3,000 बनाने हैं आपको, ठीक है, ये बनाने हैं ना। और राउंड 2 में आपने बनाने हैं $2,000। ये एक स्टैंडर्ड रेट है ना। आपको $5,000 बनाने के बाद, एक अकाउंट हो या 5 हो, डजंट मैटर। मैं एक कह रहा हूँ, आप अब अपनी कॉस्ट इतनी लगी है तो 5 लगाए ना, एक का फ़ायदा नहीं बनेगा। आपने 5 लगाए, $5,000 के ऊपर आपको पे आउट मिलता है।
अब आपके पास 60 दिन है ट्रेडिंग के लिए, 20 दिन 20 दिन 20 दिन। अब हम लेजर बनाते हैं, आज के दिन अगस्त 17, $0, कोई पीटीपी नहीं। अब मैं लिख दिया, कोई ट्रेड नहीं हुआ जी, कोई टीपी नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बना। हमारा गोल ये है कि आपके $2000 बन जाएं बाय द टाइम यू हिट नवंबर 17। तो अगस्त से सितंबर 1 मंथ, सितंबर से अक्टूबर 2 मंथ, अक्टूबर से नवंबर 3 मंथ। It's the same for someone who's taking one account. वन अकाउंट है ना, एक अकाउंट होगा तो आपके $2000 बनेंगे, 5 अकाउंट होंगे तो आपके 10,000 बनेंगे। ठीक है, चले हम एक अकाउंट लेते हैं। हमारा गोल क्या है, हमने इसका मैथ बड़ा प्रॉपर किया है कि अब हमने बनाने हैं $7,000 की हमारा टारगेट है 60 डेज के अंदर। पहले ये पास करना है, फिर पीए पास करना है, और फिर पेमेंट आएगी। तो हम इसको 60 डेज में $7,000 बनाना चाह रहे हैं ना। एवरेज बनती है $116। अगर नवंबर 17 को किसी का सिर्फ एक पे आउट भी आ गया ना, तो आप ब्रेक इवन से ऊपर हो, मैं आपका कोई पैसा नुकसान नहीं होगा। एक पे आउट आ गया, आपका एक अकाउंट था, आपको कितने पैसे हाइपोथेटिकली मिल सकते हैं? $2000। हमने ये टारगेट रखा है ना। तो नवंबर 17 को आपके अकाउंट से अगर $2000 मिल गए, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1500 प्लस 300, 1800 आपने इन्वेस्ट किया और आपको 2000 मिल गए। आपने कहा यार ये वेरी गुड रिटर्न है, मैं कामयाब हूँ, मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, मेरा अकाउंट, मुझे और पैसे नहीं देने पड़े। हमने इसकी स्टडी की है ना। फिर अगर ये हो गए $10,000, तो आपने तो लगाए थे भाई सिर्फ 1695। यू आर विन विन सिचुएशन। हर एक अकाउंट पास, अगर आपके पास एक था और एक ही फेल हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 या 3 या 4 या 5 अकाउंट से रिस्क लें और उनको दें। 5 से ये फ़ायदा है कि अगर अकाउंट ब्लो भी होता है और मैं एग्रेसिव भी जाता हूँ, तो वी स्टिल नीड 1 अकाउंट to cover the cost of the system. So as I will go refine, I will not take aggressive risk. मैंने अपना क्या स्टॉप लॉस रखा हुआ है कि अगर आपके पास 2000 का अकाउंट है और अगर आपके पास तकरीबन $600 का लॉस हो जाता है एक दिन में, I will stop trading. एक स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है कि मेरे माइंड में है, क्योंकि एक माइक्रो से $600 करना बहुत मुश्किल है लॉस। You need to go into 2 or 3 or 4 or 5 micros before आप अकाउंट तबाह करें। हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो मैंने अपने माइंड को ये सेट किया है कि अगर एक दिन में 500-600 का लग गया है तो वो मेरा स्टॉपिंग डे है। 30% कैपिटल ख़राब हो गया और मेरा ऊपर का है कि आई विल एम फॉर couple of $100 a day। तो एम मेरा $200 का है और मेरा स्टॉप लॉस 600 का है। ये एक मेरे माइंड के अंदर बना है। अब मैं एंटर होऊंगा ये वाडा के सिस्टम में, और मेरे सिस्टम में एक ऑर्डर लगा हुआ है 58 पे, 60 पे एक्चुअली लगा हुआ है। ओके, एक MNQ डालते हैं और लॉन्ग किया, अब मेरे अगेंस्ट आ गई। ओके, कहीं तो जाके बंद करना है ना। अब मेरे पास अपना अकाउंट हो या आपका अकाउंट हो, उसको कहीं ना कहीं तो बंद करना है। तो एक मेरे ऑब्जर्वेशन है कि भाई कहाँ जाके एवरेज कर लूँगा, तो कहाँ जाके इसको, तो ये मेरा एक प्लान है। हमारा विजन क्या है? एक विजन होता है, आई वुड लाइक टू सिट इन अ रूम विद 4 एनालिस्ट। हमारे जो एनालिस्ट है ना, माई सेल्फ, हैप्पी, जतिन, डैनियल, ये सारे एनालिस्ट है ना, एंड वी जस्ट लुक एट द मार्केट एंड डिसाइड। राफे यहाँ से क्लिक कर सकते हो तुम। लेकिन मैं अभी जतन से पूछा, वो कहता है 100 करो, मैंने कहा यार मैं 50 पे जा रहा हूँ, कहता मैंने ले लिया। ये एनालिसिस हो रहा है। और अगर 1000 क्लाइंट हो, 10,000 क्लाइंट हो, 20,000 क्लाइंट हो, 1 लाख, जो एफर्ट मैंने एक पे करनी है ना, वो मेरी 10,000 पे भी सेम है। 10,000 इंसानों को सिखाना बहुत अजाब है। एक का मिड बैंड ये है, रिट्रेस ये है, लेकिन ट्रेड करना आसान है। हम एक्सपर्ट तो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 100% नहीं तो कहीं कर लेंगे। सो आप कह सकते हो यार बहुत अच्छा सिस्टम है, पैसे डालो, ट्रेडिंग भी नहीं करनी, सीखनी भी नहीं है। सो दिस इज़ आवर day 1।
ऑफ गेटिंग टू ए पॉइंट। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं सुबह आऊँगा, आपको सिखाऊंगा भी, लीज वालों को भी सिखाऊंगा। आप खुद करना चाहते हो जो मैं कर रहा हूँ, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सीख रहे हो ना। मैंने नंबर कहाँ से निकाला है, 30,000 50,000, आपको पता है कि S2 का बॉटम है, निंजा का पिवट है, तो आप खुद भी कर सकते हो। आप कहते हो ये सर्विस मैंने नहीं लेनी, नो प्रॉब्लम। तो एक पीस ऑफ द पजल था मिसिंग, वो आज कंप्लीट हो गया है। खुद से ट्रेड करें, बाय करके, लीज करके, सिग्नल लेके, एरिया ओनली लेके, जूम लेके, या अब आपको यार ट्रेड ही नहीं करना, मेरे लिए कोई कर दे, राइट। सो देयर इज नथिंग दैट, देयर इज ए कंपनी आउट देयर दैट डज एवरीथिंग। ट्रेडर्स बहुत हैं दुनिया में, टिकटॉक पे खोलें 100-200 ट्रेडर बैठा होता है एवरी डे। कोई अब मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, कोई अपना एनालिसिस कर रहा है, कोई $100 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है। कहना आसान है, सिग्नल डालना और सिग्नल डिलीवर करना मुश्किल है। तो मैं हमारा अब ये है कि भाई अब हम जो कहेंगे वो करेंगे भी। खाली ये नहीं है यार राफे ने अपना पे आउट ले लिया, आप बेचारे वहीं खड़े हो। आप कहते हैं यार मेरा तो आया नहीं, तुम्हारा ही आता जा रहा है। तो हम, मेरा कोई ट्रेड नहीं है ना, तो आपका कोई ट्रेड नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस है तो आपका है, मेरा। और मीनवाइल अगर आप जिस तरह सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं खुद भी करते रहें। तो ये उन लोगों के लिए जो गैम्बलर्स हैं, डिसिप्लिन नहीं है। जी जी, नहीं नहीं मैंने करना है सारा काम। सो उन वाडा ने बिल्ट इन कॉपियर दिया है। इट्स ए पैसिव इनकम, बट सम पीपल 3 माह बाद भी तो इतनों के अकाउंट ही साड़ रहे हो ना भाई। मेरी बात सुना, 3 माह भी गुजर गए हैं, 2,000 के अकाउंट भी सड़ गए हैं। तो आपने कहा यार इन्हीं को दे देता, अगर साड़ने ही थे तो ये थोड़ी सी कम स्पीड से साड़ेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि 3 महीने भी गुजर रहे हैं, आपके अकाउंट भी जल रहे हैं, अब आपको ये सर्विस भी महंगी लग रही है, लेकिन आप खुद भी कामयाब नहीं हो रहे। हाँ जी, आई थिंक सो, बिकॉज दे वांट टू सी द होल रिजल्ट। एंड हुआ ये कि एक बैच पहले आया था, इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया, इन्होंने AI पे चलाया। AI ने पहले दिन बहुत अच्छा चलाया, दूसरे दिन लगाया, 2 दिन स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े हिट हुए। मैंने फिर इनके डेवलपर से बात की, आगे पीछे एक स्ट्रैटेजी बनाई भाई कि मुझे ही पूरा कंट्रोल दे दो। AI अभी इतना स्मार्ट नहीं है कि भाई वो 100 हो जाएगा, मेरी हैबिट सीख लेंगे तो हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो ये एक सिस्टम है वो ट्रेड कॉपी के नाम से, लाइव अकाउंट। अच्छा, मेरा अगेन टू कंक्लूड इट, मैं आपके अकाउंट नहीं ट्रेड करता, मैं उनको सिग्नल भेजता हूँ, वो अकाउंट की मैनेजमेंट करते हैं। मुझे नहीं पता लाइव है, प्रॉप है, फंडेड है, बुलनॉक्स है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मैं अपना सिस्टम पे अपने अकाउंट पे ट्रेड करूँगा, सिग्नल आपको आ गया गुड, नहीं आया तो जो मेरा हाल होगा वही आपका हाल होगा। तो गाना है ना, जो मेरा हाल है वही तेरा हाल है। तो ताल से ताल मिला, राइट। लेट्स सी। हाँ, कंपनी है, फ्लोरिडा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कैनेडियन है, मिस्टर एंड मिसेस संजय की ये एफर्ट है। देयर बिग कंपनी। ये रणबीर हमारे सेल्स, यहाँ पर रणबीर चौहान साहब बैठते हैं ना, ये उनके हमारे इनके मार्केटिंग के बंदे हैं। आपको ज़रा, मैंने तो आपको टेक्निकली एक्सप्लेन किया है, वो आपको ज़रा थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लेक्स जी, आपको नहीं, आप इस अकाउंट्स को आपको टच ही नहीं करना, ये वाले अकाउंट आप लेके भूल जाएं। तो भाई ये पता क्या होगा, आप इधर भी कर रहे हो कि मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, आप शॉर्ट जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, आप देखें 50 कंपनियां हैं, एक कंपनी लेके इनके हवाले कर दें कि यार यहाँ से अगर पे आउट आए तो गुड है, नहीं आए तो नहीं आए। एक कंपनी देखें, लूसिड, एपेक्स, फंडेड नेक्स्ट, सारे आप करते रहो। लेट्स से ब्लू स्काई लेके इनको दे दी, $60 का अकाउंट है, पड़ा रहा। आप अपने निंजा पे इसको देखिए, लेकिन आप देख सकते हो मेरे ट्रेड्स जो इसने लिया, नज़र आता है। ट्रेडोवेट की ऐप डाउनलोड करके देखते रहो कि ब्लू स्काई के साथ क्या चिपक रहा है, राइट। तो लेकिन हाँ बिल्कुल दिखेगा सर, लाइव दिखेगा सब चीज़।
तो आप देख सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रेडोवेट आपके पास क्या एक्सेस है ट्रेडोवेट की? मेरे पास वो भी एक्सेस नहीं है। मेरे पास वाडा की सिस्टम की एक्सेस है, राफे का ट्रेड है, वाडा का सिस्टम है, लाओ जी ट्रेड फेंक दिया। उन्होंने वो कॉपी किया, उन्होंने 35 सब्सक्राइबर को भेज दिया। उन्होंने 35 हो, 135 हो, 3500 हो, एक सेलफोन टावर लगता है, एक सेलफोन ऑन होगा, उनका उतना ही खर्चा आता है। उसके ऊपर वहाँ 50,000 बंदे कनेक्ट हो जाएं, तो इट्स ए ग्रेट इनकम। सो दे आर जस्ट अ सिग्नल लाइक डिस्ट्रीब्यूटर। IPTV में ऐसा ही होता है, you take a signal and you give it to somebody else who re-encodes it and retransmits. So it's a great product, not for everybody. आपको ट्रेडिंग आती है नहीं चाहिए, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, अगर आप कंसिस्टेंसी से पैसे कमा रहे हैं ना, व्हाई डू यू नीड मी? आपको ओवरबॉट आ गया, 1 मिनट आ गया, कैंडल आ गई, फेब आ गया, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन आ गई, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कौन लोग खरीदेंगे? ज़ीरो, कुछ नहीं नॉलेज। वैंकूवर गए, 250 बंदा सेमिनार पे आया, 40 ने साइन अप किया, एटलीस्ट 200 ने कहा भाई इजी सिस्टम बताओ, इससे इजी क्या है? So this is what we said. Now we will sell you the software and teach you. We will lease you the software and teach you. You can just get our areas and finally you can take my trades too. तो नहीं आई जी, 58 पे अभी तक नहीं आई, तो बैठा हूँ। तो ये फ्यूचर है। नहीं, देखिए मेरा ट्रस्ट जो है ना, अभी मैं आपको अभी बताऊँ, जो ट्रस्ट है ना वो है थोड़ा सा स्टेज और कर्टन वाला। देखिए मैं आता हूँ, मैं अपना आर्ट पुट ऑन करता हूँ, बात करता हूँ, चला जाता हूँ। मेरे अकाउंट्स मैं आपको दिखाऊँ, आपको यार ये समझ नहीं आ रही कि मेरे क्यों नहीं बन रहे, इसके क्यों नहीं बन रहे। ये सिंपल सी बात है। इस डाउट को दूर करने के लिए हमने कहा भाई स्टेज से कपड़ा ही उठा दो, पूरा शो दिखा दो कि भाई यहाँ से बाय, यहाँ से सेल किया है, तो अब आपको ट्रांसपेरेंसी पूरी होगी। तो सिग्नल नॉट ओनली लेकर उसको आप तक डिलीवर भी करेंगे हम, सो प्रॉप फर्म्स के अंदर। सो और बेस्ट मूव ये है, एक दफ़ा मेरे ये 35-40 पीपल का पे आउट आ गया, तो मेरी डेडलाइन क्या है? 19 नवंबर, आज पहला दिन था। 19 नवंबर में इधर आई बी द फेमस गाय अवेलेबल ऑन द इंटरनेट के यार राफे के ट्रेड ठीक है, या मैं छुप रहूँगा यार 3 माह अच्छे नहीं गए। देखा, यही 2 चीज़ें होंगी ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो यार रिस्कियस मूव है, कैरियर दाव पे लगा दिया है और ख़ाली सिखाने पे वापस आएंगे। और मैं कहूँगा नहीं, मैं यार अच्छा बस ड्राइवर नहीं हूँ, आप अपनी अपनी गाड़ी चलाओ। तो 3 months later we'll have a really good. So those thinking of joining, you can join now. Those want to wait, you can wait. Maybe you want to wait a week. आपको यार 1 माह का रिजल्ट्स दिखा देते हैं, 1 माह के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। I get paid regardless, by the way. That's the best part. With success price point go up. Yes. No. I doubt it. वॉल्यूम से फिर बढ़ने का। 1000 क्लाइंट हो, मेरा उनसे डील है, मुझे फिर you know I don't need to sit here. मिस ट्यूलिप दोबारा सिखाएंगे। It's okay. ऑप्शंस लीज आपसे हम क्या करते हैं, कुछ लोग दूसरे ऑफिस में आते हैं या दूसरे प्रोविंस में है, वो अब 7,000 नहीं खर्चना चाहते, तो हमें वो $700 पर मंथ देते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ दैट पेमेंट अप्लाई करते हैं। अगर आप $700 पर मंथ दे रहे हो, हाफ आपकी पेमेंट जाती रहती है बाय पे। एवेंचुअली आप कैचअप कर जाओगे ना, तो लीज ऑप्शन। तो बेसिकली आपने मुझे 7,000 का ख़रीदना था, आपने मुझे दिए $700। साल के आपने कितने दिए? 12/7 5400, 2500 आपका इस साइड पे बढ़ता जाएगा, तो वो ऐड भी होता जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो लीज है। कुछ लोग हैं ना सॉफ्टवेयर बाई करते हैं ना सॉफ्टवेयर को लीज करते हैं, वो हमसे सिर्फ सिग्नल ले रहे होते हैं, मेरी जूम चाहते हैं और कहते हैं यार जो आप नंबर दे रहे हो हमें वही चाहिए, उसके हम 300 लेते हैं, तो वो भी एक सर्विस है। अब ये चौथी और फाइनल पीस ऑफ द पजल है, भाई कुछ नहीं करना, राफे के ट्रेड कॉपी कर रहे हैं तो ले लो। क्या पता राफे अच्छे ना चले, मैं अपनी सिस्टम हैप्पी को दे दूं, भाई तू अच्छा ट्रेडर है तू ले ले, जतन को दे दूं, तो एटलीस्ट वी हैव ए सिस्टम। आप अच्छे बन जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यार मैं जितने ट्रेड ले रहा हूँ ना बहुत अच्छे जा रहे हैं,
तो मैं जिस तरह कहता हूँ मैडम अरूज हैं, वो कहती हैं कि मैं सीख गई हूँ और मैं कंसिस्टेंसी से पैसे बना रही हूँ। शी कैन बिकम ए सिग्नल सेंडर। आप वाडा के पास जाएं, उनसे कहें मैंने अपना लॉन्च करना है सिस्टम। नो, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं राइट नाउ मैं उनका एक सिग्नल सेंडर हूँ ना, तो 3 मंथ्स आप कहें कि देखें मैंने ईयर लिया, पीयर लिया, और मेरे नीचे 50 ऐसे बंदे हैं जो मेरा सिग्नल लेना चाहते हैं कि अरूज जी कैसा कर रही हैं, आप इनसे कनेक्ट हो, वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देंगे, आपके सिग्नल पूरी दुनिया को चले जाएंगे। So they have a huge company to be part of it. It's ताकि आप क्या आप चाहते हो आपके मामा, डैड, ब्रदर, सिस्टर, अंकल सारे ट्रेड करना चाहते हैं, पैसे आपके आ रहे हैं ना, आप कहते हो यार इनके कैसे आए। 2 ऑप्शन है, लेकिन आपको राफे पे ट्रस्ट नहीं। मैं कैसे, आप कहते हैं यार लेकिन आपको अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ। आप वाडा के पास जाओ, वो आपको सिस्टम सेट करेंगे, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देंगे, आपके अपने सेट ऑफ सब्सक्राइबर होंगे, आपकी वो भी इनकम लगेगी, उनके अकाउंट भी ट्रेड हो जाएंगे। सो देयर इज़ ए ह्यूज थिंग वी आर बिल्डिंग टुगेदर टू मेक श्योर दैट हर कोना कवर हो ट्रेडिंग का। सो नो प्रॉब्लम जी, टेक केयर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वाडा वाला तो मेरी जिम्मेदारी है ना। नो प्रॉब्लम जी, मिड बैंड पे चल गया जी, कुछ पॉइंट दे गया था 1 मिनट का मिड बैंड, मैंने लिया ही नहीं। एंड ऑफ डे यार, कुछ ब्लू स्काई लीजिएगा यार, ब्लू स्काई लीजिएगा, लूसेड ना लीजिएगा उनसे, क्योंकि वो लूसेड तंग करेगा। वो बाडा वाले कह रहे हैं ब्लू स्काई लीजिएगा, वो भी $60 का ही है। एंड ऑफ डे लॉन्च $60 का, लॉन्च के नाम से है, $60 का। हेलो जी, बेसिकली सर एक तो हम ये बंडल से जो अकाउंट लेंगे उसकी जो पेमेंट है वो होगी हाँ जी, और उनकी सर्विस की और फ़ी, उनकी सर्विस बस दैट्स इट। वो हमने उनसे पूछ लिया उनसे नहीं ना, उन वो आपको जो भी हमारा ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट साइड पे लगाया आपने, 3 अकाउंट लगा के और अपने पैसे उनको दे के उनको लगा दिया। 17 नवंबर को जवाब आ जाएगा कि सॉरी राफे साहब, ब्लू एवरी अकाउंट। नहीं नहीं, अकाउंट लेके उनको देते हैं हाँ वो तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं, $300 की है ना, 6 5 30 और आपके जैसे $1500, तो आपकी $1700 की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा वो फी कह रहे हैं फी $500 मैंने पढ़ा है ऑनलाइन, $500 मांग रहे हैं पर मंथ, पर बार तो आपको 3 मंथ्स की फीस देनी है ना। सो लेट्स सी, चाहे वो आप एक अकाउंट लीजिए चाहे हाँ एक अकाउंट लें या 40 अकाउंट लें, दे ऑल, हेलो जी, फी से रहेगा फीस एक रहेगी, यस। So it's a trade copier over cloud. मैं आपको नंबर दे देता हूँ जी, आपको आप उनसे कॉल बात कर लें, इट्स अप टू यू। हाँ जी, $79 तक आई थी प्राइस, है 50K ही लगाएंगे, छोटा 150 नहीं, क्योंकि मेरे इनके ज़्यादा डैमेज हुए 50K वाले, तो एक आध माह मैं 50 पे चलाऊंगा। मैं अपने 5 MNQ करूंगा, आप लोगों के 2 या 1 MNQ करूंगा। एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो उसको मैं 150 वाला इस राउंड में, एक दफ़ा पैसे आ गए ना, या तो सारे 150 लेते ना तो मेक सेंस करती है। अब मैं सिग्नल को, अभी उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं तोड़ दूं। ये जो मुझे ये नहीं पता कि रमन भाई के पास 50 है या 150 है, ये पता ही नहीं है, तो मैं फिर सारों की अगर 50 हैं तो वो ले लेता हूँ। तो ये जो वाडा जी है जिनकी कंपनी है हाँ जी, वो लाइक आपके वो है ट्रस्टवर्दी नहीं हमारे ही स्टूडेंट्स हैं विन लाइफ टाइम के, और उन्होंने ही ये सॉफ्टवेयर बनाया, उन्होंने ये ऑफ़र मुझे किया, भाई आपने ट्रेड करना अपने सब्सक्राइबर के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं जो करता हूँ मैं तो जैसे आपने कहा था कि
थर्ड पार्टी इसलिए है कि देखें बात यह है कि वो आपको रिफंड दें ना दें, आपको 500 में दें 5000 में दें, मुझे उन्होंने एक फ़ीस देनी है सिग्नल भेजने की। मेरी सिग्नल अच्छे होंगे वो मेरी फ़ीस बढ़ा देंगे, मेरे सिग्नल घटिया होंगे वो मुझे निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। सिग्नल यस वैलिड है, रजिस्टर्ड है, HST से है, सब कुछ है, कैनेडियन है। हैं? नहीं सुपर उनका ब्लू स्काई का नहीं है। मैं वो आप उनसे पूछ लें, बता देंगे आपको। नहीं स्टैटिक नहीं लेना, स्टैटिक महंगा पड़ेगा, एंड ऑफ डे लें। स्टैटिक का मतलब होता है साथ साथ प्राइस बढ़ती रहती है। हाँ हाँ, नहीं हमने लेना है लॉन्च एंड ऑफ डे बस है। लेकिन स्टैटिक $60 का है ना। वो स्टैटिक है, वो फिर राउंड 3 की बात है। अगर आप अच्छा फील करते हो कि आपने अपना ग्रुप बनाना है, नो प्रॉब्लम, दे विल गिव यू द फुल सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम एंड यू कैन गेट योर ओन ग्रुप। टेक केयर बॉस। All right, almost 3 o'clock, no trade. Let's see. आ जाता हूँ, इधर ही आ जाता हूँ, बैठो। हाँ एग्जैक्टली। नहीं 3 और 3 6 और फिर 6 से ऊपर आपको मिल जाएगा, जो बनेगा आपको मिल जाएगा, बिल्कुल वो आपको दे देंगे। दिखाएं, मैंने एक चीज़ चेक करनी है, क्लियर। यही है, ये देखिए। हाँ सस्ता $40 का अकाउंट है। आई एम स्टिल हियर ट्राइंग टू सी। आप जा रही हो? नहीं मैं तो बैठा हूँ जी अभी, लाइव बैठा हूँ, 4 बजे तक बैठा हूँ। या 50,000 वाला। जा रहे? नो प्रॉब्लम। यहाँ तो आप जो मर्जी ले लें। ब्लू स्काई बिल्कुल एक कंपनी है, लिस्टेड है, वही EA PA एक्सेट्रा। बहुत ही स्लो मार्केट आज गई, सो एब्सोल्युटली स्लो। Oh yeah, okay. Rahul House. No, it's there, it's there. No. लाइट ऑन कर दीजिए।
का जीरो ट्रेड लास्ट में तो ओवरबॉट ओवरशॉट कर लेते हैं. I don't do that trades. ताकि हम कर लेते हैं. 1 minute और ओवरबॉट. कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई पकड़ लेंगे. क्या? नहीं, ऐसे नहीं लेंगे. हैप्पी वापस तो आ रहे हैं. सर अभी मैं तो अपनी नया रील स्टार्ट किया है. सो मैं ऑनलाइन आपको देखता हूँ क्लास ज्वाइन. आई एम सर भाई वाइफ चाहता है मैं जॉब करें, तो आफ्टर सितंबर स्कूल स्टार्ट होगा तो मैं ज्वाइन करूँगा मॉर्निंग को. सो क्या Ev- करना चाहिए? आज आपका डे 1 था. नहीं, एक्चुअली मेरा ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है, पर मैं ऑनलाइन ठीक है. मैं ज्वाइन करूँगा. देखें, कोई भी ट्रेड पर कल सुबह भी आए, ऑनलाइन आए, या ईएस पकड़ें या नैस्डैक. बिगिनर्स को लो ईएस, और आपने करना है ट्रेंड ट्रेड. ग्रीन हो बाय करें, रेड हो सेल करें. मिड बैंड. मिड बैंड पे इसको पक्का कर लें, स्लो एंड स्लो. दैट्स इनफ फॉर फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स. जैसे जैसे आप एडवांस होंगे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड करा दूँगा. पहले इसको पक्का करें. और इसकी कोई पर्टिकुलर चार्ट पे है ना, ये 320 पे 15-10 पे करें. 1510 पे. अभी सिर्फ दोनों चार्ट का कलर सेम हो. ग्रीन है 15-10 पे, ग्रीन है 30-20 पे, बाय करते जाएं. मजेंटा है 30-20 पे, मजेंटा है 15-10 पे, मिड बैंड से सेल करते रहे. जी सर. हाँ जी. कहाँ से? देख लें, कोई भी कबाब रोल लें, कबाब रोल लें, बस दैट्स इट. बारबेक्यू बस. नहीं नहीं, कबाब रोल ही है ना, अगर होगा तो. नो.
sir. None. They need to know about live account and funding. जी जी बिल्कुल. I just asked him, right? Let me see how you trade. Then मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. जी sir. आपके आपकी ट्रेडिंग कैसी? She can't speak Hindi. Okay. See, for the bad luck, we didn't see you before. We didn't check your seminar or your training session, any that we miss always. No problem. We came here couple times. How but it was long you Monday been? and Tuesday. How long you been here? No, not possible. Not even a month, maybe. Because okay, you have to understand. At this stage, I will do some assessment for you. If you pass the assessment, then I'll tell you which way to go. Do you know what a trend is? If I ask you on the chart, can you tell me if it's bullish or bearish? Can you tell me? Okay, good. Number one. Number two, do you know what a mid band is? Yes. Okay. Number three, do you know what a divergence is? Okay. That's okay, no problem. Number four, do you know what RSI is? Yes. Overbought, oversold. Yes. Do you know what a gap trade is? Okay. 50-50. 50-50. Okay. You're not ready for funded. You're not ready for live. That's my assessment. As a doctor, I could just say you need more practice. Give yourself, when I joined as a student, sat over there, Daniel Bhai, you talk about live, he will say 3 months and don't talk to me ever again. Until it takes, I know it's excitement, you're learning, but please give yourself minimum 3 months for a live account. Before live, we'll put you into a funded program, and I would like you to test that first. It's very exciting. You have any trading experience prior to this? Yes. Options or stocks? Stop. Stocks is easier. Stocks is, here's stocks. I would like to buy Apple or Nvidia or Microsoft. Is trading at $250. Your banker says, bring me, what, 10 stocks if you want to buy? Or let's say 100. $25,000. Let me make it easier. You buy stocks. Let's say this is the maximum, meaning that you buy 25, 200, 100 stocks, shares. All you have to do is just wait 1 month, 2 months, 3 months, stock price goes up, you sell it, you're profitable. Simple. Futures market doesn't work like that. Futures market, you don't need that much money, but I'm going to write a number here, 7750. If it goes up, if it goes down, you make money both ways. And if it moves up $1, you make $50. If it moves down $1, you lose $50. That's the cost of the contract change of in price. So your goal is to make sure that you don't lose money. So you want to predict the right direction. So how would you lose money if, let's suppose, you have $1,000 in live or funded, doesn't matter. You buy a 75, 7750, 49, 47, 40, 40, 35, and now you're at 30. You didn't close the trade. You entered at 50. It's down at 30. That's 20 points. So 20 points times 50. You are saying, oh my God, I will never touch futures in my life ever again because it's too crazy. Okay, 1,000 goes like this. This 25,000 doesn't go like this. It's more money, but slower. Maybe, how do you lose money? 250
maybe goes down to 205, you lost some money, devalued. But if you hold the long term, you're still okay. $40 का From 400 to नहीं नहीं ये EA evaluation हाँ instant नहीं. So the idea is you just have to get into this game at lowest cost possible. You want to make sure that you don't lose money. If you start losing too much money, you're gonna be ये मैं हिंदी में कहूँगा अब 4 गाला दोगे एक बंदे हो डैनियल नो सॉफ्टवेयर नो इंडस्ट्री में के यार पैसे ज़ाया कराते right? So we don't want that. So what we want for you is, once you are comfortable, here's my goal for you. The day I will tell you, no, forget how much money, your data is delayed. I don't want to see these results. I want you to have 20 days of trading under your belt, experience, before I turn you under your belt, meaning that the idea is experience in your hand of 20 days minimum. I want you to make $100 to $150 trading MES, maximum 3 MES lots. Let's see how well do you do. Meaning that I want you to trade, you are now considering yourself that you know what you're doing, but I want you to give me experience. I want to test you first. Your account size will be $1,000. So we will give you $1,000. Can you are not allowed to trade ES. I want you to trade MES, micros. And you only so this is your rule. If you are done $150, or even 100 is okay. If you're done $100, you stop your computer. If you're down negative $300, you stop your computer. Meaning you're not trading anymore. You're not trading until profitable. So whatever mistakes you make, if you're down $300, leave. If you're up $100, leave. I want you to do this for 20 days. The day you have finished this exercise, you're ready for live and funded both. Not earlier than that. These results mean nothing. Why? Your account size is $50,000. It's okay. You can take an ES trade. It can go against you, and then it can come back. After 4,000, 5,000, 6,000, it can come back up in your position. You add 2 minis, 3 minis. That's not trading. That's just playing with the software to feel good. Your budget is $1,000. That's your budget. That's the maximum money you will have. I want you to double this with micros in 10 days, 20 days, 15 days. That's called trading. This shows nothing to me. What shows is, we'll start with a trade. I want you to trade for 10 days, 12 days, 15 days, and then make a consistent income. Because the day you do this, you're ready for the real money. Until then, you're not. Because what will happen is, you enter with $5,000, you lose money, you will stop trading. You will turn off the laptop, you will say, this is not for me. You have no idea what MES is. Let me do another assessment. Do you know what CPI stands for? That means you don't know how to read news yet. Very simple. Consumer Price Index. Do you know how to read earnings yet? There's a lot of things that is built on a foundation that you have to kind of go step grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. You're saying, can I just write an exam of grade 10? You're not ready. You can, nobody's stopping you. You will lose money. Then my reputation goes down, the institute reputation goes down, and then yaar paise le liye, kuch padhaya hi nahi. So first, I have to make sure your building blocks or foundation is so strong. So here is a statement. If you can, the day you decide, every the morning Daniel says some lines at 9:25 to 9:40. Today you cannot understand half of it.
but maybe in a month, maybe a month and a half. So please, it's not just buy, sell, buy, sell. You need to understand what is FOMC, CPI, PPI, non-farm, ES, MES, NQ, MNQ, earnings, divergence, retracement divergence, Fibonacci sequence. So these are 10, 12 concepts. They're not rocket science, but they just take practice. You can sit with me online, offline. I teach 6 days a week. So how can we miss you? No. Why did you miss me? I've been here 5 years. I have other things that I do. Like, I worked 4 months day and night to work with the Vara guys to make a software easy to work with, right? So what had happened was this organization has 30 people. Daniel is the CEO. My job is CTO, Chief Technology Guy. I understand the software. So I was assigned different tasks, which I completed, and now I'm back. So I was trading from home. We were looking at sub levels, etc. So finally, I'm back to teaching basics. Because the reason I need to be here is if your basics are not strong, you're not gonna go anywhere. Well, you will go, you will fall, then you will quit. You will make some accounts, you will burn some accounts. You guys have paid $5,000 to be here. You want to make sure you extract every single piece of knowledge out of me. I'm here for you. I'm not charging you. I'm here Monday to Friday, 9 to 12, 9 to 4, whenever I'm here. Then every Wednesday I take a Q&A. Every Saturday I do this. So it's not like you have paid it, just like take as much knowledge out of me, extract it, no problem. So if you have to rebuild your classes, just come here, sit here tomorrow. Today, it's her 6th day. It's his first day. Tomorrow could be your first day. So I keep refreshing every day, and then eventually, then you can sit with Vikram, Majid, Myroon, anybody. They all know what they're talking. Hey, it's a 30-20 chart, retracement diversion, top of the bar, stop loss 5 points. They know what to do. Then you can go wild. So I think you're missing the building blocks in this. Your choice. So ask questions. Otherwise, you will not learn, man. I'm telling you. I have notes and notes and notes of Mr. Daniel. And don't think that's okay. Please, that a question will make you sound dumber. No, that there's no such thing. You just ask me a question. If I don't have an answer, I'll go and find from Daniel. Hey, Daniel, I don't know what the answer of this is. Can you help me? If he can't find it, he'll find it from somewhere else, right? But if you don't ask questions, I don't know if you know the subject. So. Yeah, one thing more. When for the beginning, one thing stuck in our head. That is a black candle. Okay, that's right? fine. Right. So, when black candle go up, you see that trend, And you buy from mid-band. So you buy from mid-band and then. See, that black candle is just one of one of 30 things that are happening. It's not just the one thing I watch. Yeah. I look at a price, I'm looking at moving average, I look at RSI, but I've been watching it for 5 years. Yeah. So I know, hey, where is the best risk to reward ratio, or what is I'm not 100% by the way. I don't move the market, I don't control the market. I don't know what will happen. So I'm waiting for a number. For example, I'm waiting for 30,060. I'm waiting for it for NASDAQ. I'm waiting for a number. If I enter, it's not like it's going to go in my favor, but at least I want to enter it with the best risk management. So that's what I'm trying to do. So you need to come back, start day one. Don't worry, it's not like you got left behind. Even some people just do rush and they can come back and restart it. No problem. कोई बात नहीं. No problem. So, I hope those. Okay, you have to attend to those matters first, because that's family. You have to make sure this is secondary. So once you are relaxed and once you're here, Daniel teaches Saturday, Sunday. I'm here Monday to Friday. Then I leave December 17th. I do go away for a couple of weeks, because that's the slowest time of the year.
I don't want to leave now. Hey, there's FOMC news is about to come, and interest rate, Iran war is happening. So it's fun, it's exciting. I get to enjoy dopamine and adrenaline rush daily. Today was slow. It's okay, but the 23 hours a day this market is open. You can trade anytime. Just follow what the computer tells you. So whatever the ninja account we were been doing it. Yes, it has expired. I see data delay. Delay means your 14-day trial finished. You can buy a funded account $60, but they're only $1,000 limit. My recommendation is tomorrow get a new free account, demo account. You can keep getting as many demo accounts as possible. Okay, okay. So once you are comfortable, and then we'll give you a test. Test is to make money. That's I'm not giving you, hey, tell me what a retracement divergence is. I'm not right. It's not a written test. So we can also check in online. yes, Telegram, Zoom, super areas. Streams are going for this camera, this mic. I'm everywhere. No problem. Do they have it tonight? They normally have a session at 8 on Monday. It's Wednesdays. Wednesdays at 8 p.m. Sometimes I check if there's nothing. No, Wednesdays. Be part of our Telegram group, so you get alerts when I'm going online, when Vikram is going online, Tulip is going online. No problem. How you get into the Telegram? Go check with Daniel or Majid Bhai. They'll put you. Even WhatsApp. WhatsApp is different. We operate slightly different. Maybe come back tomorrow. I'll get you going. No problem. Because it's kind of end of day right now. Everybody's gone. Come tomorrow. We'll get you going. No need to stress. So that count is expired, right? This count is expired. I see data delayed. Yeah. Because you are you are playing in history, meaning something that has already happened. Done. Already happened 10 minutes ago. Yeah. So आपने झलकियों पे शर्त लगा दी है कि मैच हो चुका है और Highlights. highlights पे चलता. तो Can anybody fix this now? sure, I will ask Majid Bhai to give you a new demo account. Just give me a second. Just come, bring it. एक second. जी माजिद भाई, इनका डेमो एक्सपायर हो चुका है, डिलेड आ रहा है, तो अभी इनको फंडेड ना ही दें, तो इनको अभी सिर्फ एक नया डेमो दे दें, क्योंकि मेरा तो अब टेस्ट का रूल है, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन का मतलब नहीं पता ना आप आ गया, तो रिट्रेसमेंट डाइवर्जन नहीं पता तो आप लोग नहीं ट्रेड कर रहे और आज 4 आई हैं ES पे, इतनी प्यारी ठाक पूरी बार दी है उसने, मैं एक 60 पे बैठा हुआ हूँ, आ ही नहीं रही, क्या कर 3 बज गए हैं। और जी सोनिया जी ठीक ठाक जी, ठीक जा रहा है, गुड, दैट्स गुड। जी आपका क्वेश्चन। देखिए होता ही है कि 3 मंथ्स या 4 जो हमारा ऑनलाइन का विन लाइफ टाइम का सिस्टम है ना, वो ये है कि अबाउट अ मंथ के बाद ना नया बैच आ जाता है, तो वो होता ही है कि वरना तो 12,000 स्टूडेंट को हम ग्रेजुएट ही ना करवाएं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये होती है कि बाय द टाइम यूर इन योर 3rd मंथ यू प्रीटी मच हैव नेल्ड इट। क्या रह जाएगा? देखिए आज नहीं देखिए रह कुछ नहीं जाता मेरे पास टीच करने के लिए, नहीं वो फिर आप जनरली बात करते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ए केस बाय केस इश्यूज। ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो 6 महीने बाद भी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं जो 12 दिन के बाद कहते हैं भाई यहाँ आओ, ट्रैफिक भी लगाओ, गैस भी खर्चो, और ऑनलाइन बैठ गए हैं। सो आपको जिस वक्त अगेन रिट्रेसमेंट डाइवर्जन, मिड बैंड, गैप ट्रेड, इक्वल हाई एरिया आ गए, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एरिया यही है ना, देखिए एरिया क्या है कि मैं वेट कर रहा हूँ 58 पे, अब मेरे पास ना एक सेंसरी सिस्टम है,
वो मेरा कंप्यूटर दिमाग क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है, बैटल चल रही है। दिमाग कह रहा है भाई 50-60 से पहले ना लॉन्ग जाना। एक फियर बैठा हुआ है कि टाइम ख़त्म हो रहा है, 3 बज गए हैं, अगर मैं 60 पे ट्रेड लिया और ट्रेड फंस गया तो ये ना हो कि मुझे स्टॉप लॉस से उठना पड़ जाए, क्योंकि अभी ये ना अच्छा टाइम नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर तो ये आता 11 बजे तो मैं अगर ट्रेड में फंसा भी हूँ या स्टॉप लॉस लेना है, एक और ट्रेड लेके निकल आऊँगा। टाइम नहीं है मेरे पास, 3 बज चुके हैं और अभी 5 बजे मार्केट ने बंद हो जाना है। 3-4 पे तो वैसे ही बंद हो जाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हॉल्ट हो जाएगी। और आपने 3.50 पे लिया, वो 5 ऊपर गई पॉइंट, आप मैं रेदर ट्रेड ही ना करूं। सो हमेशा मेरे माइंड में ये होता है कि शाम को 6 बजे ना मेरे पास विंडो बहुत बड़ी हो जाती है। तो कुछ लोग इवनिंग ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एरिया ट्रेड में फंस गए हो ना, आपके पास रूम बहुत है, आपके पास सुबह से शाम तक कम टाइम है। लेकिन कल अगर आप एरिया ट्रेड में 6 बजे मैं बैठूं एंड इफ आई गट स्टक, अभी 6 के बाद मैं अगर बैठ जाता हूं तो मैं अपना फोकस 3 बजे के बाद ना 6 पे ले जाता हूं। देखिए आज कोई प्राइस नहीं आई, कोई ट्रेड नहीं लिया, ना मैंने पर्सनल लिया, ना वाडा लिया, कुछ नहीं है। इट्स ओके, मेरा कैपिटल सेफ है, मेरे पैसे बढ़े हुए हैं, मेरा नुकसान नहीं हुआ। पहले अब मैंने कोई नुकसान को रिकवर नहीं करना। देखिए पहले अगर लेट्स से मैं अभी ट्रेड ले लेता हूँ और नुकसान हो जाता है, पहले मुझे वो करना पड़ेगा, फिर मैं जाऊँगा, मैं ट्रेड ना लूँ, ज़ीरो पे हूँ। तो अब मैं, मेरा माइंड जैसे जैसे 4 बजे के करीब आ रहा है, मेरा डिसीजन चेंज हो रहा है कि अगर 3.50 पे आ गई 50 पे और तोड़ गई, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर इट टू यू नो, मैं उसको लेना चाह ही नहीं रहा। यस, सो आपको जो एरिया ट्रेड, हाँ जी हाँ जी, रेडी रेडी। तो जो एरिया ट्रेड्स होते हैं ना, उसमें आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस दिखानी होती है। स्टॉप लॉस, टीपी, वॉलेटिलिटी, टाइम। जो मिड बैंड ट्रेड है ना, वो तो किस वक्त मर्जी ले लो, अगले शाम 5 बजे तक। तो आपको 23 घंटे शुरू हो रहे हैं ना, सुबह आप ट्रेड लोगे तो आप एरिया ट्रेड में फंस गए, तो 6 PM to 5 PM ये है। हमारे साथ रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर जुड़ चुके हैं राफी जी, नए हफ्ते की नई एनर्जी के साथ। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Good, very well. Good afternoon to you and your listeners. बहुत बहुत शुक्रिया राफी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कैसा रहा वीकेंड का सेमिनार? कितने लोगों ने सही फैसला लिया अपनी जिंदगियों को लेकर? जी, दोनों ऑफिसेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स आए थे, some got to learn and we taught a lot of new concepts, तो बेहतरीन रहा जी। क्या बात है, अमेजिंग। तो राफी जी, जो नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, उन्हें मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं विन लाइफ टाइम के बारे में, किस तरह से शुरुआत हुई और कैसे विन लाइफ टाइम हमारी जिंदगी में हमारी मदद कर सकता है टू गेट अ बेटर लाइफस्टाइल एंड बेटर लाइवलीहुड। जी एब्सोल्युटली, 18 साल से हम आपको एक ऑनलाइन बिजनेस सिखाते आए हैं कि हाउ घर बैठ के इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से बगैर कहीं जॉब पे गए सिर्फ कपल ऑफ आवर्स में कपल ऑफ $100 बनाना बहुत आसान है। इफ़ यू आर सिंगल मदर, इफ़ यू आर न्यू इमिग्रेंट, इफ़ यू आर ओल्ड एज, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन इनकम, इससे अच्छा कोई बिज़नेस है नहीं है मार्केट में।
जी, क्या बात है। तो राफी जी, इस बिजनेस में कितना वक्त और कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरुआत में? इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं है, वक्त की है, क्योंकि आजकल ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो आपके लिए रिस्क लेती हैं, वो सारा कैपिटल आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको उनके साथ पेयर कर देते हैं। आपके 2 वीकेंड के कोर्सेज हैं, आप आएँ, सीख लें। मंडे टू फ्राइडे हमारा स्टाफ आपको सिखाता रहता है, सो यू आर नॉट ट्रेडिंग अलोन। दैट्स अमेजिंग। तो क्या रहेगा पहला स्टेप राफी जी, कैसे की जाए शुरुआत? सबसे पहले सैटरडे 1 PM सेमिनार में आएँ। 5 मिनट के इंटरव्यू में तो मैं आपके रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता, लेकिन 5 आवर्स में आपको सारा, अगर नहीं आ सकते तो मंडे टू फ्राइडे हमारे ऑफिस में आ जाएं, लाइव हमारे पुराने सेशन सुन लें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है जी। क्या बात है, वंडरफुल। सो वेल दोस्तों, 9052061008, दैट्स 9052061008 या विजिट करें winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी, हमसे जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू जी, टेक केयर। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। Another retracement diversion, beautiful right here, 7770, came down to 2, let's say 1 full. So how many retracement diversions on 3020? We got some early times, right? So if I was to look at retracement divergence, where did this happen? Let's see, from the morning. Somewhere around here, one is right here, 1, and major one on MES right here, 2. हेलो जी, क्या चल रहे हैं? ये किधर किस चले? और कल किथे गए थे? नहीं गए, घर आ जाते फिर। हाँ हाँ सर, हुण मैं 50 ते भी उठा रहे हैं, टाइम नहीं है पिछे। मैं पता कितना शॉर्ट करूँगा, 1 सेकंड। ये हैं जी हैप्पी जी, ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने हमें MNQ सिखाई है, एरिया सिखाया है, सब कुछ। सर आज कोई बात नहीं, मेरे में कोई खारिश नहीं हो रही, क्योंकि पीछे $1 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ है भाई। 35 लोग, 1,05,000 का फंडेड पड़ा है। आई कैंट टेक एनी रिस्क। सुपर एरियाज के अंदर लिखा हुआ है। वो कल आप जाके डैनियल से करवा लेंगे। यार कोई इतनी घटिया रेंज, $200 बनी सिर्फ रेंज ही। नहीं नंबर्स नहीं, वो नंबर्स शाम को 8-9 बजे चेंज होंगे। लेकिन अगर मैंने अब ट्रेड लेना है ना, तो मैं 220 से सेल करूंगा। वापस जा लेने दें, पिवट पे जाए तो मैं 220 से सेल कर दूंगा। 4 से पहले जो भी काम है मैंने 3:45 से पहले करना है, वरना ये फंसा है। नहीं सेल तो है, लेकिन 220 तो रिट्रेस कर जाए ना, सेल करूंगा। क्योंकि ये जो 50 वाला है ना, ये ना हो कि मैं 50 पे अभी एंटर हूँ और वो तबाह कर जाए मुझे। तो नंबर अभी वही है, 50 से पहले के कोई रिस्क ना ले, 60 से पहले। तो लेट्स सी, आ रही है प्राइस 3.13 हो गई है। $90.89, क्योंकि लोएस्ट गई है 79। तो अब वापस दोबारा रीटेस्ट करेगी इक्वल लो को, और अगर तोड़ गई तो मैं अपना ऑर्डर अब उठा के पता कहाँ ले गया हूँ,
26 पे और 30 पॉइंट नीचे ले आया हूँ, क्योंकि जहाँ से ये स्विंग शुरू हुई थी ना, वहाँ पर ये काम शुरू होगा। अब ये ट्रूली इक्वल लो 60 मिनट का हो गया, ये 30,000 और 25 इक्वल लो है, 60 मिनट की लाइन जा रही है वहाँ। तो वहाँ जाके देखते हैं कि इक्वल लो पे हमें ये कुछ देती है कि नहीं। तो मैं वाडा वालों को और अपने पर्सनल अकाउंट को 30,025 बॉटम ऑफ S2 से थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, एंड फिर देखते हैं कुछ बन ही जाए। बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे। आपने फिब का रिस्क ले लिया, मैं नहीं लिया पाया। 100 वाला 100 से 136 तक गई है ये, तो 36 पॉइंट गई है, इट्स ओके। आज भी हालांकि बेस ऊपर थी, मुझे कहा ले जाएंगे। नहीं नहीं चल रहा है, 4 बजे करते हैं अब हम पूरा। कोई इतना लंबा बैठ जाए, मैं उससे भी लंबा बैठ कल पता है अगले महीने तो मंचन स्टार्ट है। हाँ जी, 7 से फिर एग्जैक्टली 2 o'clock बंद हो जाएगी। मेरी से ज़्यादा तो उनकी हिम्मत है जिन्होंने मुझे ट्रांसमिशन ऑन की होती है। देखिए आप भी तो मेरे साथ ही बैठी हैं ना, कोई घर से बैठा है, कोई अमेरिका से बैठा है, कोई तो एक तो काम। मैं तो चलो हूँ ही वेला ना, मैं तो इसमें से मेरे साथ इक्वल इस तरह बैठना उसके लिए ब्रावो है कि भाई वो साथ में। लेकिन इनके राइट्स हैं टेलीग्राम के, वो अच्छा वो राइट्स हैं। ले यार इक्वल लो यार ताड़े को आएगा के वाह। तो हमारे पास वाडा वालों के लिए ओपन ऑफर है कि अगर आप अपना सिग्नल अपने सब्सक्राइबर को भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे थ्रू वाडा के। पूरा 15 मिनट का इक्वल लो लगा के गया है वो। 15 मिनट भी सही चलता है। तो यही वॉल्यूम नहीं है ना, कुछ नहीं बनता है। मैं वैसे देखूं आज ट्रेडो वेट पे कितना वॉल्यूम आया था। कितना सर, सिर्फ ओ माय गॉड 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बिके, बस सिर्फ 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बिका है। नॉट इनफ। एवरी मंडे लो ब्रो ਇਹ देखो 2-2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट बिके आज, बाय एंड सेल होया, कुछ भी नहीं। ये बारिश होगी तो हमारे पास कुछ बन जाएगा।
other friend gave me a challenge. He told me, when you put $1,000, when you become 1,000 to 2,000, I will come join with you. आपने उसको आगे इस चैलेंज को भी आगे बेच दिया। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਈਮੇਲ ਤੇ हाँ, मैं 5 मिनट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। नो प्रॉब्लम आगे। ये 1000 माइक्रो में बनाना 10,000 है मिनी का, एक एक महीना हाँ जी हो जाएगा सही, फिक्र ना करें। Don't- आप तो उनको लाओगे, मैं 3 माह में जिनके पे आउट निकाल गया वो 1000 बंदा ले आएंगे। आप पे डिफरेंट प्रेशर है, मेरे पे डिफरेंट। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मैं जनरली नहीं करता, मैं इवनिंग पे नहीं। 6 के बाद नहीं, क्योंकि देन आई डोंट हैव द सेटअप एट होम एनी मोर। सो वो अगर वही करो, पर अपने स्टिक करो कि मैंने सुबह ही करना है। हाँ। शाम को नहीं है, कल हमने नहीं किया तो उन्होंने ट्रेड, मैं कोई- नहीं किया, कोई नाम है, ट्रेड आया ही मैं नहीं। आपको फोमो डाल देता हूँ। हाँ जी, I'm done जी। सिम पे करें, सिम पे। सिम पे ट्राई करिए, सुबह करो जी 2 घंटे, ठीक है, अपना डिसिप्लिन रहो, 12 बजे तक कुछ बंद है, 12 बजे के बाद कुछ बोलिए नहीं। लेकिन कई दिन 500 लग जाएगा, किसी दिन 0, किसी दिन एज लॉन्ग एज। हाँ, स्टॉप लॉस भी लगने हैं। नहीं वो अच्छे लगते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। काम तो बच गए ना। मैं तो सिम में लगा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पर पैसे नहीं करेंगे ऐसे। सिम में ये होता है कि अगर तो अच्छा लग जाए तो फील बैड होता है यार, रियल ही हो जाता। अगर बुरा लगे तो बंदा हो जाता है, हो जाता है। कितना लिया था स्टॉप लॉस? 100 बहुत अच्छा है, ज्यादा लिया है, आपकी शक्ल बताना। डोंट वरी, कोई बात और बच गया ना, बस ये 2 दिन में यार कवर कर लिया। 400 का भी होगा, 500 का भी हो गया, 4 दिन में हो जाएगा, कोई बात। नहीं आपको ये दिन में पता लग गया ना, लो वॉल्यूम में क्या होता है, पास में बंदा निकल कर जाता है। स्लो मार्केट में यही दिक्कत है, यूज हम करते हैं स्लो में नहीं, फास्ट बिल्कुल फास्ट नहीं है, आज देखो आप डूबे ना, स्लो में और चलो गलती यही है, स्लो भी कर देते हैं, फास्ट होती है आप निकल जाओ, दूर जाके एवरेज भी कर देते। नो प्रॉब्लम। $82 तक आई है जी। Let's see. All right. So 322. I'll close the stream at 4 o'clock, guys. 4:05. That's it. After that, you guys are on your own. जब तक मैं आपके दरमियान में रहा तो अच्छा रहा।
इक्वल लो से आपने 10 पॉइंट उठाए। आएगी मूव, अभी आएगी। 4:05 पे ना। हैं? मैं बस अभी उनका चार्ट्स चेक कर रहा हूँ। वो स्पाइक देखिए। इनको 250 तक मिनिमम लेके जाना चाहिए, लेकिन वो इजीली जाने नहीं देंगे। मार्केट आएगी ऊपर 220 तक, 150 कह रहे हैं। 140 150 तक उधर तक आएगी, फिर गिर जाएगी। मैं 200 से सेल करूँगा। आ गई तो 200 पे मैं सेल बैठा हूँ कि यार इनफ गिर चुकी है 200 पे। लगा जी अजी ऑर्डर 199 पे, ठीक है। 190 भी पे फंसाई हुई थी, याद है उस दिन मंडे को फंसा ली 190 पे। यूम 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 वन, यस। तो 199 पे फिर जाएंगे। नंबर एक दफ़ा याद हो जाए एक मार्केट में ना, जाना तो 280 पे जाइए, लेकिन दो मिनट रह गए कैंडल अगली खोलने में।
मेरे को है करना कॉन्ट्रैक्ट बिका ही नहीं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आल्गो मोटर क्यों नहीं चला रहे? ऑर्डर तो चला रही है इंस्टेंट किया चला रही है चला रही है ना 110 दिन 2 दिन बस अगस्त सब तो प्राइस वर्स पे यार इधरों जाए 198 ਤੇ 1 ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀਅਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੈਪਲੀਕਾਂਟੋ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡੋ ਵੇਟ ਹੈ। नहीं मैं ट्रेडो टेक प्रॉफिट ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ट्रेडो वेट ਤੇ ਉਧਰ नहीं मैं रिस्क ਲੈਂਦਾ जी एज वाला दूसरे को देखना है नहीं कर सकते 190 ਤੇ ਕਰता हूँ और की चाहिए क्या करें 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट बिका है। निकल जाना होता है मतलब 7,000 निकल SMP अपना भी रहती है तो एक्सपेक्टेड क्या होगी लेकिन पहली अटैम्प्ट में 100 ने सिर्फ 15 पॉइंट ही दिए थे। हाँ 15 वो आया ही नहीं कोई नहीं मैं 17 ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੂੰ हैं? मैं ਉੱਥੇ 3 ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਕੇ नहीं तुसी जल्दी कुछ कैसे नहीं मैं ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ तो ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਂਗਲ ਵੱਜ ਗਈ ਬੰਦ ਉਂਗਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ
मज़े का है यार ये। बेटा दिस इज गुड, नेक्स्ट टाइम आप भी खाइएगा। नहीं मैं अभी कल से खाऊंगा। हाँ, आपका क्या रोज़े चल रहे हैं ना? मेरा सावन का महीना चल रहा है। सावन का तो बारिशों का महीना होता है, तो बारिशों में नहीं खाना। बाहर से नहीं आ रहा था, शिव जी विवाह नहीं कर अच्छा, मैं समझा वो खेतों में सावन है। रहे। 110 दिन आ गए। आई पुठे आई की पुठे नहीं 110 लाख चल शाबाश 110 ਤੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ भाईजान ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ खुद मार्केट मूव करेंगे, थोड़ा ਜਿਹਾ रुक जाओ बस। पता क्यों? 1000 लाइफ माइक्रो लाता उत्थों 1000 कॉन्ट्रैक्ट जाता है, सिर्फ थोड़ा जिहा रुक जाओ, जिथों कवांगे उत्थों मार्केट मूव करा देवांगे, थोड़ा जिहा। Don't need a lot. Don't need a lot. ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗੱਡੀ ਦੇ नहीं नहीं, हुण मैं चढ़ा रहे कि मैंने पता ना चढ़ना कितना है। डोंट वरी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों। हाँ वो चलते क्योंकि मैं अंदर आज क्लास लेके आया हूँ बाकायदा। थर्टी 20 की क्लास 30-20 की। फिर 60-40 तुझे बुढ़ा हो जाना, ट्रेड ही नहीं आना। 30-20 करो। NASDAQ भी नहीं साल थोड़ी हिम्मत है यार, 15-30 देख लेंदे हो। नहीं भेजते 15 नहीं भेजते 15-10 15-10 देखते 15 देखो सर, हूँ ट्रेड लईए, माइनस करिए, पहले आके उन्हें रिकवर करिए, फिर उत्ते जाइए। इतने जीरो ते बैठ के दो लाइव मेरे नहीं छोड़े अच्छा और मैं 7,000 बनाया था ਉਹਦੇ ਚ हाँ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਸ 7,000 ਇੱਕ 6,000 ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਫਰ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ मैं लैके देख चुके हैं ना पिछले हफ्ते। ਇਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ 3,000 ਆਇਆ और मजे भाई। So guys, I'll finish live by 4 or 5. लगे हुए लाइव मेरे को होंदा मैं 23 घंटे चला देनी इसका। ਨਾ वो नहीं मैं ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰ। rest। मैं सोच रहा थी मेटा रेबान ला के ना ਹਾਂ मैं बत्ते वो भी कनेक्ट हो जाती है जूम वगैरह के साथ। हाँ, कैमरे का सोर्स ही है ना बस। हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ क्या नाले खा लिए यार मेरे को ना आजकल भूख नहीं लग रही जिस दिन से मैं वेज कब से खाई
मैं फुल वॉश 110 पे निकल जाऊंगा प्लस सारा टोटल कैश हो जाएगा तो लॉन्ग करके बैठा है ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਯਾਰ ਐਸ ਚੌਪੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਯਾਰ फ्री अकाउंट कर लेंगे और फ्यूचर फैमिली के लिए all right guys 10 more minutes no इसको आप ਉਹ ਚਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ वन टेन पे निकाल दो मुझे निकालो, निकाल देगा तेरी ही है कट बस निकल गया जी बाहर अल्लाह प्रॉफिट चुके हैं मैं उस्ताद जी 80 तो मैंने मैंने लेके 110 तक आया एक फुल लो वैसे वॉल्यूम हो तो ये 1 मिनट का काम है यार ये डन हो गया It was spicy, man. No, वो जो आप सॉस लगे डेस्क आपके लिए पोजीशन ठीक है ना ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਪਾਈਸੀ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਫਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਨਾ देख भाई 110 से कटिया ड्रॉप होगी देख फिर इक्वल हाई तक कटे it was a good decision with this is what लेकिन अल्लाह सारा कैश किया हुन शाम 6 बजे बाद कैश कराना लॉन्ग शॉट लॉन्ग कितों नंबर जिथे बंद है उतने खोल लॉन्ग यार गैप ना खुली फिर गैप नहीं खुल सकती ये आज ਜਿਹੜੀ ਮਾਰनिंग है बड़ी मुश्किल से गैप कवर हुआ है एक 10 पॉइंट उसने फंसा लिया था मैं तो आपको पता ही है इस प्राइस पे लॉन्ग जाने से मैं वैसे ही घबराता हूँ यार 850 एक सेकंड एक चार्ट खोली है जी ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ नहीं सर पता कितों चली है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੈ 864 70 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 29900 मैं लिख देना जी आज दी सपोर्ट 29 9 हाँ रात ਨੂੰ भी आया फिर भी ठीक है 29 क्लस्टर बन रहे हैं 29880 तो 29900 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ MES ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਕੀਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਸੁਪਰ एरियाज भी क्या क्या तू सारी मैंने क्या नहीं मैं क्या यार तू सारी कहती है नहीं बोलिया कितों लिया ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ हाँ 7749 ठीक है ये मार्केट गिरेगी इस टाइम लो सारा थल्ले दा आया ना ये खुलन तो बाद ही बाय होवे शायद एज ऑफ नाउ सेल मिलना है ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਪਲੀਕੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹਾਂ ਟੀਪੀ ਨਾ ਲਾਓ ਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ नहीं हाँ लेकिन प्रॉब्लम है मैं कई बारी देखा ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਟ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੈਂਟ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਉਧਰ ਮੀਨ ट्रेड ओवर से लाओ अभी भाई कुछ करें ना इसके लिए क्या कर रहे हैं आप कुछ भेजें इसको ऊपर भेजें नीचे भेजें आज मैं बैठा हूँ 190 पे जाके 2 दिन पहले जहाँ फंसाई थी ना इसने मुझे ਕੀ ਕਰਨਾ
190 थे। गाना सुन रहे सी, मैं क्या, मैं हैप्पी, जतन, ट्यूलिप, माजिद भाई, डैनियल, सारी ड्रीम टीम जड़ी है ना, एक कमरे में बंद हो और बाहर से कोई ताला लगा उससे कहे नंबर कटो। फ्लो चाहिए जी, वॉल्यूम चाहिए जी, वॉल्यूम चाहिए। मैं छुट्टी ते जा रही यार एक दिन वॉल्यूम नहीं आंदा तू छुट्टी चले जाते हो, की गल होई यार। मैं मंडे ट्रेड नहीं करना जी, एक तो मंडे उठो दिल नहीं करता सवेरे, बड़ी मुश्किल उठ के आया। नो प्रॉब्लम, नहीं मजाक करना नहीं नो प्रॉब्लम। हर मंडे इतना जलील नहीं करता। उधरों ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 20 ਤੋਂ 4 4 8 ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 20 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ। 12 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਪੀਆਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੀਪੀਆਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਪੀਆਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ 50 ਦਾ ਫਲੋ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਕੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵॉल्यूम ਚ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਚੱਲੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡ। देखो 100 वाला बंदा ये मरिया नहीं है, 100 वाला बंदा सिर्फ 20 पॉइंट ही थल्ले गया है 80 तक, तो 100 वाला भी नहीं मरिया ये तक, वो भी ग्रीन नहीं है। सर मैं तो वॉल्यूम देख के हैरान हूँ, सिर्फ 3 लाख ट्रेड हुआ है, 3 लाख बाय सेल हुआ है MNQ। चलो जी थोड़े कम करिए यार। नहीं सर अभी भी टाइम है, जाए जी। मेरी वजह से आज था कि आज भी ऊपर खुली है, आज ऊपर जाएगी, चलेगी ना, ये 120 तक जाएगी, 120 से गिरेगी फिर। मैं 190 पे बैठा हूँ। लो लेजेंड ने भी सेल लगा ली। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਡਦੇ, ਸੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। अब बुल नॉक्स ला रहा है इंस्टेंट, 24 ले हर बंदा ही तो लड़ रहा है। सबसे पीछे पता कौन रह गए, पर्डिया वाले, पढ़िए 50% आप दे। ये इंस्टेंट नहीं दे रहा, अच्छा इंस्टेंट नहीं दे रहा। पढ़िए गुल्ला दोनों पीछे रह गए। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਲੂਸਿਡ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ओए लाइक
लो जी आ गया क्या जी सभी तो गई फिर आगे चले ये है NASDAQ another 15 minutes I'm with you guys and then another retracement diversion on MES worked, gave you guys some points. अभी सभी तो सीधी चले बड़े वापस आ रही थे तो फिर वापस निकल गया नहीं उम्मीद है अपन तो क्या बात है अपन डन हो गया हुआ शॉर्ट ये तो तेरी का मालूम आप उधर ही थे बैठे आला जी की बेसमेंट में जब वो बात मैं इसकी कर रहा था आहो तो हमारे घर पर लेना था लेना मत क्यों फिर गई जल्दी से मतलब कि मैंने देख रहा था क्या दे हाँ बताओ यार मुझे ना बताओ प्लीज
Good, good, good. 70. ये खेल अच्छा है, बैठे रहो, पैसे आए उठाई जाओ, जबरदस्त है यार ये खेल भी मजेदार है, चस वाला खेल है, चस। हो गए सर थोड़े। मैं 4 बड़ी वोलेटिलिटी है यार, कमाल। कभी की कर दे, कभी पगला नेगेटिव देख 102 पे 62। फिर वापस। उफ,
बस 1 मिनट बंद कर रहे हैं. कर दो 4 बजे तो बस बंद करनी है. 4:05 पे we're done. All right, G. I'm going to start shutting it down. See you guys tomorrow. Keep an eye at 29,880 and 30,000. Stay here. 1 second. I'm going to take care. Happy, sir? नहीं नहीं मैं बिग नहीं हूँ बिग वो है हैप्पी सर ज़रा अप्रूव करें ऐप को ऐप में जाके Good, I'm doing that. I need him to do this. Okay, he's the boss? He's the boss. So next time I talk to him or? 100% talk to him. I don't want to talk to you next time. Okay? Never. I catch them, okay? Next time. Episode 650 plus 8. यार इतना महंगा मांग रहे हैं क्या नहीं करो? I will speak with you. Okay, thank you. मैं पुराना वाला ही दे रहा हूँ अभी इसको Now give him the I will speak with you. Yes. Thank you, sir. No trouble, okay? I know you could do an amazing job. You do. Any complaint? No. No complaint. So far, no complaint. I don't know. Work finished, you have to go home like, no? No phone. Yesterday? Huh? Yeah. 650 plus HST. Plus and please and thank you, sir. What's your company name? I don't know. What's your company? ME cable. Oh, that's one. Okay. अच्छा नहीं पिछली दफा यही दिए थे ना ये जो मांग रहा है हाँ तो मैं दे देता Oh, like you paid cash? No. No, I'll give you something. I'll send whatever I sent last time, no problem. Don't worry. You're an amazing guy, man. You don't do homes, man? No, really. No? When I come to work, home, you too much blah blah. Do it everything, complain too much. Because I'm old, I cannot do it. No, what you make more money doing commercial, in my opinion. Really, I know. House clean more money, I know. Because bathrooms, this, bedroom. Yeah, everything. When I went to one day cleaning your boss house in Brampton with Majid Bhai.
678 भेजे मैंने, ठीक है, 600 प्लस HST, ठीक है, भेज दिए. Like, wait. No, it's on. It's done, finished, gone to your account. Your wife spent it already. Yeah, thank you, sir. Hold on my phone. Thank you so much. No problem, Ji. All right, guys, 4:07 p.m. Eastern. Time to wrap it up. Keep an eye on these numbers. Enjoy. So, take care. See you tomorrow. So I come back later. No, it's okay. You can start, man. Yeah. Can I start or later? I'm just doing live streaming, shutting it down. नहीं वो डन हो गया अब यार देखो टाइम नहीं है 1 minute, Ji. Let me shut this down. 6. आपको इधर हो रहे अब भी रो रहे हम रो नहीं रहे, हम गुड क्राई कर रहे हैं, रोते नहीं हैं हम.